पिच रिपोर्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान अपने तमाम नाज़रीन को स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची से खुश आमदेद कहता है कि जहां पर इस 4 रोज़ा मैच के आज दूसरे दिन खेल का आगाज़ सबसे थोड़ी देर के बाद हुआ चाहता है और कल का जो दिन था वो मुकम्मल तौर पर सेंट्रल पंजाब के नाम रहा, जहाँ सिंध और सेंट्रल पंजाब की टीमों के दरमियान इस वक्त ये ज़बरदस्त मैच जारी है। यहाँ पर पहले बैटिंग की सिंध की टीम ने और पहले बैटिंग करते हुए महज 155 रन सिंध की टीम बनाने में कामयाब हुई और उसके लिए सिंध को शुक्रगुजार होना चाहिए सोहेल खान का कि जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त आखिरी नंबरों पे मज़ाहमत पेश की और 65 रन की इनिंग खेलकर 155 तक स्कोर पहुंचाने में काफ़ी मदद दी। लेकिन दूसरी जानिब सेंट्रल पंजाब के जो बॉलर हैं मोहम्मद अली और जो पार्ट टाइमर हैं साथ, उन्होंने 3-3 विकेटें हासिल की और यहाँ पे बैकफुट पे रखा सिंध की टीम को। लेकिन जवाब में अब तक 78 रन स्कोर कर लिए हैं सेंट्रल पंजाब ने आबिद अली की शानदार और जुर्रतमंदाना 45 रन की इनिंग की बदौलत, और अब महज 77 रन की बढ़तरी है सिंध की, जो उम्मीद है कि जल्दी सेंट्रल पंजाब उतार देगी और ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इस मैच के हवाले से हम गुफ्तगू ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है सोहेल खान ने और सोहेल खान के इंटरव्यू के लिए इस वक्त मौजूद हैं मेरे फेलो एंकर अली यूनुस। सो ओवर टू अली यूनुस। सोहेल खान, द बैटर की बात करेंगे, आप आपके करियर का 5वां 50, खुश है इस परफॉर्मेंस से? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल खुश हूँ, क्यों नहीं हूँ। कोशिश कर रहा था कि टीम के लिए बॉलिंग के साथ मैं बैटिंग में भी परफॉर्म करूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा फॉर्म सेट हो गया और इंशाल्लाह भी आगे मैचों में भी परफॉर्म करूँगा। आपकी बैटिंग का स्ट्रेंथ काफ़ी थी सिंध की बैटिंग, जिस तरह के उन्होंने शॉट्स मारे, आप क्या डिफरेंट कर रहे थे इस पिच पे बैटिंग करने के लिए? जी बिल्कुल, बैट्समैन थोड़े से, उसका रीज़न ये है कि बॉलरों ने कोई उसमें से आउट नहीं किए, खुद ही आउट हो चुके हैं, क्योंकि कुछ बॉलें बाहर की थी जिसने खेल ली और उससे आउट हो गई। विकेट अच्छा है, बैटिंग के लिए भी ठीक है, बॉल भी हो रहा है, हिल रहा है इसमें। तो मेरे ख्याल से कि जो स्टेट बैंक की विकटें है तकरीबन पाकिस्तान में, मुझे जो लग रहा है कि सबसे बेस्ट विकटें यही है बॉलिंग बैटिंग के लिए, जिसमें रन भी बन रहे हैं और मतलब सेंचुरियाँ भी हो रही है और 5 आउट भी हो रहा है। तो क्वालिटी क्रिकेट हो रही है माशाल्लाह से ज़बरदस्त। बैटिंग में तो आपने खूब रोल निभाया, बॉलिंग में भी काफ़ी अहम रोल होने वाला आज आपका। सर ज़िंदगी हो गई बॉलिंग में रूल दिखा के, और इंशाल्लाह आगे भी दिखाऊँगा। कोशिश है इंशाल्लाह कि इन लोगों को अच्छी तरीके से अब हम ये टारगेट जो दिया हुआ है, कल हमने अटैकिंग बॉलिंग की, नहीं हो सका, 2-3 विकेटें गिर गई थी, मगर हम चाह रहे थे कि आज ही 4-5-6 आउट हो जाए, नहीं हो सका। इंशाल्लाह आज कंटेंट बॉल करेंगे और मैच की इंशाल्लाह सुनहरी थोड़ी चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह अपनी तरफ, बॉलिंग की तरफ इंशाल्लाह आज बेहतर आपको नज़र आएगा बॉलिंग। और आज के पिच को आप कैसा देख रहे हैं?
पिच बहुत अच्छे है, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि पूरी पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक की विकेटें जो बन रही है, ये हकीकत है। मैं कोई वो मेरे यार दोस्त नहीं है वो लोग। मेरे ख्याल से ये मेरा चौथा या पांचवा मैच होगा इधर मेरे कैरियर में जब से स्टेट बैंक में आया हूँ। तो बहुत अच्छी विकेट है इस साल स्टेट बैंक की, दोनों तरफ। मतलब क्वालिटी क्रिकेट हो रही है, आप देख रहे हैं टीवी पे, सब देख रहे हैं कि क्वालिटी क्रिकेट हो रही है। और इसमें बहुत कुछ सीखने का मिल जाता है बॉलरों को भी, बैट्समैनों को भी, क्योंकि अक्सर हम जाते हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है बाउंसी विकेटों पे और थोड़ी सी बॉल जब हिलता है। तो मेरे ख्याल से कि वो काम तो माशाल्लाह इस साल शुरू हो गया स्टेट बैंक में। जैसे यूबीएल भी बेहतर विकेटें बना रहे हैं, मतलब कि पिछले साल से कई बेहतर है वो। चलिए, ऑल द बेस्ट सोहेल खान फॉर द डे। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने सुना सोहेल खान को अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के हवाले से बता रहे थे कि मुश्किल वक्त पे उन्होंने ये इनिंग खेली और कल के मैच को डिस्कस करने के लिए और बाकी जो 2 मैचेस खेले जा रहे हैं 2 मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे, उन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एनालिस्ट, फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान अंडर-19 अहमर सईद। अहमर, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुश आमदेद। कैसा लगा आपको कल का दिन पूरा दिन जो है डोमिनेट किया सेंट्रल पंजाब ने सिंध पर? जी हाँ, थोड़ा सा मायूस कुन था मेरे लिए, क्योंकि बड़े तजुर्बेकार खिलाड़ी मौजूद हैं सिंध में। बैटिंग का जो है वो पहले दिन यहाँ पे हमेशा जो है वो, अब काफ़ी मैचेस सिंध यहाँ पे खेल चुकी है और इनका होम ग्राउंड भी एक तरह से, काफ़ी मैचेस पहले भी खेलते रहे। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगा कि उनकी बैटिंग में वो एप्लीकेशन नहीं थी। कोई ऐसा विकेट मेरे ख्याल से माँ सिवा हसन विकेट कीपर के, जो कि एक अच्छा बॉल उनको पड़ गया, वो आउट हुए। उसके अलावा सब ने या तो गलत शॉट्स मारे या फिर जो है वो कुछ टेक्निकल फ्लॉ की वजह से वो आउट हुए। फवाद आलम ने अच्छा खेल रहे थे, वो एक अचानक उनका कंसंट्रेशन लैप्स हुआ जिसकी वजह से वो। सोहेल खान, आपने उसका जिक्र किया, उन्होंने जो है वो लोअर ऑर्डर में जाकर ये टॉप ऑर्डर को बावर करवाया कि इस विकेट पे किस तरह से बैटिंग करनी है। ये ड्राइव्स और फुल फ्लो ड्राइव्स जो है वो यहाँ पे नहीं खेली जा सकती। पिछले मैचेस में भी हमने देखा है और सिंध की टीम को अब ये अगली इनिंग के लिए अपनी सीखना पड़ेगा जल्द। और जिस तरह बैटिंग की है सिंध ने, आपको लगता है कि जो बैटिंग उन्होंने ख़राब की है, बॉलिंग अच्छी हुई है सेंट्रल पंजाब की जानिब से, या जो पहले जो बैटिंग करनी पड़ती है सिंध को होम टीम होने के नाते, तो वो थोड़ा सा उनको डिसएडवांटेज हुआ है? देखिए, एडवांटेज ज़रूर होता है, पहली टीम जो बॉलिंग करती है यहाँ पे उनको ज़रूर एडवांटेज होता है, लेकिन वो ये एक्सक्यूज़ नहीं है। गलत शॉट मार के आउट होने का एक्सक्यूज़ कभी भी ये नहीं हो सकता कि यार विकेट जो है वो हेल्प बॉलर्स को ज़्यादा कर रही थी या नहीं। आपने जो है वो अपना तजुर्बा इस्तेमाल करना है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा जो है वो मुझे जो प्रॉब्लम अगर आप कह लें तो वो तजुर्बेकार खिलाड़ियों से ज़्यादा है, क्योंकि वो यहाँ खेल चुके, अच्छी इनिंग्स भी खेल चुके हैं। खुर्रम मंजूर क्या अच्छी इनिंग खेली, उनकी थोड़ी सी किस्मत ख़राब रही, कल डाउन द लेग साइड आउट हो गए वो। वरना जो है वो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है उनको, यंगस्टर्स को और नए लड़कों को समझा के और उस तरह से खिलाना पड़ेगा। वरना जो है वो ज़ाहिर है जब नया बैट्समैन आता है तो वो ज़ाहिर है वो उनकी अपनी टेक्निक होती है, वहाँ शॉट्स होते हैं जो ये उनको समझाना पड़ेगा कि यहाँ पे सब जो है वो रोक के शॉट्स छोड़ के खेलना पड़ेगा। आज दोनों टीमों की स्ट्रेटजी क्या होगी? आज आबिद अली, बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले दिन भी मैंने बात की थी उनकी, आप बैटिंग देख लें, निखार उनकी बैटिंग में आता जा रहा है। ज़ाहिर है वो एक्सपोजर जो उनको टेस्ट क्रिकेट में मिल रहा है, ज़्यादातर ऐसी विकेटें मिलती हैं टेस्ट क्रिकेट में। अब बांग्लादेश को अगर आप हटा भी दें तो ज़्यादातर विकेट जो है वो इस तरह की मिलती हैं। उन्होंने अपना गेम को उस तरह से अडेप्ट किया। आप देखें, कोई गलत शॉट अभी तक आबिद अली ने नहीं मारा है। वाहिद वो वक्त जिस वक्त वो थोड़ा सा परेशान हुए थे, वो स्पिनर जब आया था बॉलिंग करने के लिए सिंध के, तो उसमें वो परेशान हुए थे। और फिर मैं ये कहता हूँ कि उनका बड़ा अहम रोल होगा स्पिनर का यहाँ पे मैच के हवाले से। ऑलराइट, स्पिनर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन आज इस 4 रोज़ा मैच के दूसरे दिन पिच कैसा बिहेव करेगी ये बताने के लिए मौजूद है हमारे पिच एक्सपर्ट शाह फैसल। खेल का दूसरा दिन और यहाँ दूसरे दिन की पिच का जो नेचर रहा है, पिछले 4 राउंड्स में हमने देखा है कि जो मॉइस्चर पहले दिन का होता है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है और बॉल बल्ले पर ज़्यादा बेहतर आना शुरू हो जाता है, बाउंस और ज़्यादा ट्रू हो जाता है। इस विकेट की भी यही नेचर है। कल यहाँ पर जो है वो अच्छा खासा बॉल बल्ले पर आ रहा था, पिछले राउंड्स में इस तरह हमने नहीं देखा, लेकिन आज दूसरे दिन वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं विकेट की, इस पे घास तो अभी भी मौजूद है, लेकिन जो मॉइस्चर था कल वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं, बॉलर्स के जो फुट मार्क्स हैं ज़्यादा विजिबल नहीं हैं, लेकिन ये एरियाज़ आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ड्राई हो चुका है। और कल हमने देखा कि जो अबरार की बॉलिंग थी वो उनको अच्छा खासा बाउंस भी मिल रहा था और टर्न भी मिल रहा था। आगे जाकर ये चीज़ और भी देखने में आएगी, लेकिन आज का दिन बॉलर्स के पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है,
मदद मौजूद है, लेकिन अपने डिसिप्लिन से नहीं हटना होगा। जी व्यूअर्स, आपने सुना शाह फैसल को पिच रिपोर्ट के साथ, और जिस तरह अमर भी बात करते हैं, शाह फैसल ने भी ये बात की। अब जिससे स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे थे, पिच अब डे बाय डे बेहतर होता है, तो पहली तो कोशिश ये होगी सेंट्रल पंजाब की कि 77 रन की जो लीड है वो उसको उतारें। कितनी लीड है जो इसको डिफेंसिव मूड में डाल सकती है सिंध की टीम को? देखिए जी, सिंध जो है बैकफुट पे, क्योंकि अब से लेके और बाकी दिनों में जो है वो बैटिंग के लिए पिच बेहतर होती जाएगी, और उनको बहुत अब मेहनत करनी पड़ेगी इस मैच में वापस आने के लिए। कर चुके सिंध, पहले मैच में भी यहाँ जो उन्होंने खेला था उसमें पहले इनिंग में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन कमबैक किया था। लेकिन अब क्योंकि ये विकेट बैटिंग के लिए बेहतर होती जा रही है, तो कमबैक थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सेंट्रल पंजाब ने जो है वो एक ऐसी जगह पे इनको ऐसा टोटल लगा के छोड़ना है जहाँ पहले तो इनको इनिंग डिफीट से बचना होगा, वो प्रेशर, और फिर जो है वो आगे कोई प्लान अगर बनाना है तो वो बनाना होगा। तो वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर सिंध जो है वो है इस वक्त। सिंध अंडर प्रेशर है, लेकिन जो दो बाकी मैचेस खेले जा रहे हैं यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की टीमों के दरमियान जो मैच खेला जा रहा है, बड़ा लो स्कोरिंग मैच रहा। 116 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए खैबर पख्तूनख्वा ने। ताज वली ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की, गौर फैज ने 4-4 विकेटें हासिल की, और जवाब में मैच 100 रन पर आउट हो गई खैबर पख्तूनख्वा के सामने बलूचिस्तान की टीम। लेकिन दूसरी इनिंग में भी खैबर पख्तूनख्वा स्ट्रगल कर रही है, और 54 रन पे वो उनकी 2 विकेटें गिर चुकी हैं। इसके साथ साथ जो मैच नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला जा रहा है, वहाँ पर सदरन पंजाब ने 238 रन की इनिंग खेली। एक और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, सलमान आगा ने 142 रन स्कोर किए, और जवाब में नॉर्दर्न जो है वो अब थोड़ी सी स्ट्रगल करती नज़र आ रही है। यहाँ से इतना ही, अब से थोड़ी देर के बाद मैच का आगाज़ होगा, जिसमें सिंध वर्सेस सेंट्रल पंजाब की टीमें लाइव एक्शन में एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगी, और इस मैच को दिखाने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको कमेंट्री बॉक्स की जानिब। Hello and welcome to State Bank Sports Complex for round 9 game between Sindh and Central Punjab. And the news is that Central Punjab will start their inning from 78 for 3. They trail by 77 runs, and their most prolific batter, Abid Ali, is still there, not out on 45. He's faced 74 deliveries. Alongside him is Mohammad Saad, another very talented young batter for Central. He's on 11 at the moment. It's going to be a day. It's going to be a very exciting one. I've got Shah Faisal alongside me. A lot to look for in the day, Shah Faisal. Absolutely right, Ali. This has been the intriguing contest between bat and ball here at State Bank Sports Complex in this year's Quaid Azam Trophy. And day 2 normally brings the batters into 4. It can be a good batting day. The margin for the bowlers will be decreasing as the game progresses. The pace and bounce will increase. Stroke play will become much easier than the day 1. But that also means that the bowlers will have to be really spot on with their areas. Otherwise, they can be chasing the game. And with such a modest total on the scoreboard, they have to be on the button straight away. Mir Hamza into his 7th over. He bowled 1 delivery last evening when the day was called off. He bowled beautifully. He just gave away 12 runs and took 1 wicket. This day will be very important for him, because we've seen him bowl some exceptional spells over here at State Bank ground, and Sindh would like him to start off well. If they can get this wicket, and if they can break this partnership, Abid Ali and Mohammad Saad, Sindh will feel they're in with a chance, because the trail still is 77 runs. They'll have to do a lot of hard work, this partnership, to get to that close, to that total of Sindh. And one feels this is the key partnership as well. Informed men, Mohammad Saad, very solid. Abid Ali looked rock solid. Mir Hamza to start off. Right on the money. This is where the captain would want him to bowl more deliveries, Mir Hamza. That teasing length you've been talking about in your pitch report, this probably is closer to that. Absolutely. That is just about perfect, as good as it can get. The natural angle, tempting him on the front foot. You can just bring that ball in at some stage after setting him up with a few angular deliveries. That's the length he would like to hit more often than not. And how well Abid Ali has played. Probably the best I've seen from an opener in this ground. Middled literally every delivery that he faced yesterday. Showed confidence. Right there again. That confident push off the back foot by Abid Ali. This shows the form of the man.
Scored heavily against Bangladesh. In Bangladesh, was never easy there. But these are different conditions than Bangladesh, so he's adjusted them well. In fact, very well. Absolutely. Good form does help. But the thing we were talking about yesterday, even with Amr, is adaptation, how you quickly adapt to certain situations or certain conditions. And he's just done that to perfection, Abid Ali. More to come. Captaincy has to be spot on. We already see some changes. Deep cover in position now. There are two gullies, two slips for Mir Hamza against Abid Ali. That can be a good ploy against Abid Ali, because we know that he likes to punch it off the back foot. And we can see these two fielders come in play at gully. Nicely driven. Run straight away for Abid Ali. Wonderful drive. Wilhelm a boundary to start of the day. Wonderful start to the day for Abid Ali. Picture perfect straight drive. That weight coming into the shot was perfect, and the balance at the time of contact was immaculate. Look at that. Look at the head position. High front elbow. That bent front knee as well. The front toe pointing exactly to where he wanted to hit that ball. Magnificent stroke. It doesn't get any better than that. That off drive, straight drive, looks so superb whenever he plays that. Just one away from his 50. What a comeback this has been for Abid Ali. Again, wonderful shot. This is the shot of an highest quality for Abid Ali as he brings up his 50 for Central Punjab. Wonderful way to get to that milestone. Wow. That was some cover drive. Even better than the previous one. Brings up his 50 in grand style. It cannot get any better than that. This cover drive of the highest order, as Ali called. Wonderful. This is exceptional by Abid Ali. Have a look at that again. Overpitched, yes, but how he dealt with it. Wonderful placement. Pressure back on Sindh. Quality. This is top quality start by Abid Ali. End of first over of the day. 86 for 3 Central Punjab. That's how the batting card looks like at the moment. Imran Dogar was bowled by Sohail Khan. He scored 4 runs. Rizwan Hussain also scored 4 runs. Ali Zaria played a poor shot for his 12 runs. And it's this partnership since then. Wonderful inning by Abid Ali, still not out on 53. And alongside him is Mohammad Saad on 11. This partnership is 40 now, just 62 deliveries. A very important partnership in the course of not just the game, but the championship too. Sohail Khan, the man. He done it with the ball, with the bat. And look at that cover drive. Look at that front toe, how closely he gets in line and point of contact. Sohail Khan will start off the proceedings. 2 wonderful drives we saw early on by Abid Ali. Is that the same pitch that Sindh batted on? That's the question. Because Abid Ali makes it look so easy. Shah Faisal? It's the same pitch that Sohail Khan batted on. Absolutely. He's into his 8th over, 1 wicket for 25 runs. Sohail Khan will have to do a lot of work today if Sindh has to have any chance to make a comeback in this game. He's up against the most 2 formidable batters for Central Punjab, Abid Ali and Mohammad Saad. Abid Ali in supreme touch at the beginning of the day's play. Look at that. That is the cover drive. Look at that high front elbow. And superb. Right out of the coaching manual. Wonderful. That is why we love watching Abid Ali play. Sohail Khan is such a big trier.
never gives up. In the interview also, he was so sure that he will get Central Punjab batters out. It's not going to be easy, but still I believe that Sindh are just one wicket away from making a comeback maybe. Because after this, it's Saif Badr, Fahim Ashraf, Waqas Maqsood, and the tail starts then. The partnership at the moment is 40 for Sindh. They'd like to break this as soon as possible. Still 69 runs to play for. Edged. Oh, it falls short of Khurram Manzoor. Luck will be needed. That's what we want to see from Sindh. I like the intention. They're all backing each other up. And that's what Sindh should do. Also Saad, we've seen he's very comfortable off the back foot. If you watch it closely, weight transfer, he just pushed at it slightly, but never carried a genuine edge. But like you said about Sohail Khan, he's a great trier. He will keep coming at the batters. Oh, wonderful leave. This is an excellent over by Sohail Khan and a wonderful leave by Mohammad Saad, showing that he's got the experience. Look at that, close of the stumps, and look at that movement in the air and then off the wicket as well. Saad was tempted to play for a minute, but realized soon enough, and excellent leave. This is a great contest. This is the one to watch out for. Abid Ali and Sohail Khan. Sohail Khan and Mohammad Saad. You cannot take your eyes off this. It looks like, Shah Faisal, that it's going to be a match between Central Punjab and Sohail Khan. Because we've seen Sohail Khan bowling at the right areas, the right channel we've been talking about. You've been actually talking about, you've been mentioning about it in your pitch reports day in, day out, that the area that you mentioned. And probably Sohail Khan has been the best to utilize those areas. Just like there, wonderful delivery again. Came in, this time to Mohammad Saad. 1 run added to the total. Right on the money once again. Away swinger followed by the in swinger. 25 gone, 87 for 3. Five bowlers used for Sindh. So far 8 overs for Sohail Khan. He's got 1 wicket. Mir Hamza bowled 7 overs for 1 wicket. Khurram Manzoor was a surprise package, 1 over for 4 runs. Ibrahim Ahmed bowled, I believe, was under bowled. 4 overs for him. 5 overs for Tabish Khan. 1 wicket he got for 17 runs. 87 for 3 in the end, Sindh. Mir Hamza to start. Mohammad Saad will have to stay there with Abid Ali. It just looks different to Abid Ali. Since yesterday we've seen Fawad Alam play, we've seen Asad Shafiq play, big names of Pakistan cricket. Mohammad Saad also, big huge name in first class cricket for Pakistan. But how Abid Ali has played is looked different. He's looked a class apart. He has, there's no doubt about it. And his intent also, you have to appreciate that, and we have been doing it during the course of this match. On the first available opportunity, he joined his domestic team and came and played. He loves batting. Oh, how did that miss? This is top class bowling of highest quality. Wonderful spell by Mir Hamza. Look at the carry on that one. Angling away, straightened it. How did it miss the outside edge? And I think we pretty much went over the top of the off stump, but way over. But another testament of very good bounce on this pitch. Talking about Sohail Khan in the previous over, Hamza is also a very good exponent. And on these conditions, he can be a handful. Let me put you on the spot. I know he got driven for 2 boundaries in the last over, but I think he would rather get scored off in front of wicket than square. Oh, it's edged. Gone through. Runs for Mohammad Saad.
couple of them. Ebrar doing his best, whatever he could do. 2 runs for Mohammad Saad. He wouldn't mind, you're coming to your question, but then probably Mohammad Saad is the better man to be bowling those deliveries, because Abid Ali is in such a supreme form that he's not going to let go of these deliveries. Anything pitched up to him, he's going to go after that. But to my liking, Mohammad Saad is the batter that he should be looking to attack more. Absolutely right. And like when we talk about areas, that good area. I'll continue after this ball as Hamza is ready. The areas, the good areas for the bowlers, they start decreasing in terms of their line and length day 2 onwards on this pitch. So as much as the skipper would like him to bowl fuller, as we watch this one again, just about perfect length here, but you still have to be behind that 4 meter mark, not on driving length, but slightly short of that driving length, and the batsman still will get lured into that drive. But yeah, that's what I meant when I say the bowlers have to be very precise. Driven. There is sweeper. Ebrar Ahmed was sent back. This is where the captaincy have to be spot on by Fawad Alam. He has to get wickets. He has to save runs. A lot of work to be done by Fawad Alam here. He has to make sure that his bowlers are fresh. Maybe use them for small spells, 4 overs, 5 over spells. We saw in the last game, Mir Hamza was bowled for so many overs in one spell. That's not what you want to see. Oh, nice. Nicely driven, and equally well fielded by Mir Hamza. Have a look at the quality of Abid Ali. Wonderful. 26 gone, 90 for 3, Central Punjab. Central Punjab trailing by 65 runs. They would want this partnership to carry on for a long time, because we've seen Sindh made a comeback after conceding a lead of 120 against KP in the same ground. So they would know that Sindh in the second inning can be very lethal, and this pitch gets better and better for batting. So they would want that lead to be at least 200. Yes, Central Punjab would have to be careful. Once they get ahead, they would need to bat Sindh out of the game, because in terms of the balance of the side, for this wicket, Sindh has got a better balance. We've seen Ebrar turning the ball, getting good bounce even on day 1. So if this gets to day 4 and Central Punjab is chasing, they can be in trouble, because Sindh are the best exponents of using that last day pitch. We've seen that previously. They did it without a spinner, and now they have Ebrar. So Central Punjab will have to really bat big in the first innings. Spot on. This is good bowling. Right in the areas. This is the 9th round game, Shah Faisal. Do you believe that the bodies will be tiring up, because there is just 2 days break in between the games? It's been a long tournament, probably 1.5 months, still 2 games to go. That might affect the game plan, the game of the cricketers. It surely will. It is taxing. First class cricket takes a lot out of you. 2 days sometimes is not adequate for recovery, especially for some senior pros. Edged again. Again falling short of the gully fielder. Mar bin Yusuf this time diving towards his left. This is good bowling. That's where the luck comes in. Sindh needs a bit of luck. These edges to be carrying to the fielders. Not happening at the moment. But bowling is good. Once again close to the stumps. Slightly back of a length. Edges have tend not to carry it from that kind of length, although he squared him up. A yard fuller, front foot pushing out in front. That's what Sohail Khan would want Saad to do. Against again, but this time it's gone through.
will earn Saad and Central Punjab a boundary. So luck favouring Mohammad Saad and Central Punjab at the moment. They now trail by just 61 runs. And that would beg the question to Fawad Alam. I know he doesn't have a lot of runs, but that cover fielder, does he really need that? As we watch this one, Saad groping at this one, playing out in front. It went all along the ground, but just 2 slips in a gully. Does he want a ring of 3 fielders on the offside? Sohail Khan is an experienced campaigner. Probably at this stage they agree on this field. But if you want to get wickets, you got to get more people in the slip cordon. Towards leg side this time. 1 run more to Mohammad Saad. This is what happens, Shah Faisal, when you don't score runs in the first inning. It's always a catching up game. Because since you just scored 160 odd, 50 odd runs, the pressure is on you. You cannot attack. You need wickets, but you need to save the runs too alongside that. So you cannot give those bowlers enough cushion to get wickets because you have not scored runs in the first inning. You cannot blame anyone but yourself. Sindh is a huge batting lineup, but everyone just played a poor shot. Thanks to Sohail Khan, they have some runs on the board. Ideally, Sohail Khan would have liked at least 200 on the board for him to come out all guns blazing and get more people in that slip cordon. You're absolutely right, Ali. Uh-oh, what happened there? Just from the middle of the bat, he just broke it. Whoa, that was a heavy delivery by Sohail Khan. Uh-oh, you don't want to see that as a sponsor. Right from the middle into 2 pieces. But he'll have enough bats in his bag. Yeah, that shouldn't be a problem, but you've seen this before, these modern day bats. Look at that. Smacked him near the splice, and this is where exactly it came into 2 pieces. Wow, Sohail Khan is telling Abid Ali, I can bowl fast. Sometimes it's not about that though. It's just a spot sometimes. Sometimes it hits. Not enough wood at that, not enough pressing at that point sometimes. It hits that point and breaks it into 2 pieces. Not a good sign if you're the sponsor of this bat. I don't know, it's not a good sign for the sponsor or not a good sign for Abid Ali, because you know as a batter, you get in love with certain bats, the match bats that you score a lot of runs with. And sometimes the batters don't give away that bat very often. They may carry as many as they want, but there is always that one favorite that you like to play in a match. And that one is gone. Abid Ali must be sad. But like he said, I'm sure he'll have many more. And also, these batters, these opening batters, they are so particular with their bats. Which pitch to bat on, which balance to use, which weight to use on certain pitches, which grip to use. Because they are so particular with their batting at international level. So they should be. Because you don't want to give away any opportunity because of these little things. Everything, your balance, your weight has to be spot on. What are you particular about your bats? What weight did you use? The balance is the key. Sometimes the pick, as soon as you pick up a certain bat, you know that's the one. You might have to go through a dozen or so before it happens sometimes, or it can be just the first one that you pick up and you know that's the one. It's very, very specific to certain individuals, you know. 2-8. Mir Hamza again. Oh, that's nicely driven. But as we've been talking about, the sweeper is placed there at boundary line. This is where it is so tough for Fawad Alam, where you have to take wickets and save runs too. It has to be a good combination of attack and defense. They'd like to see the back of Abid Ali. That's the best that could happen to Sindh. Maybe a new bat brings a new luck for Sindh. It can happen. New ball sometimes brings wickets. New bat probably. It's very funny. I have to say this. The batters
when they're in good rhythm, they want everything exactly the same. Abid Ali has been in good rhythm since the start of the first class season onto the Bangladesh tour and in this knock. Only small little things can break this rhythm. It's hard to explain why, but it does happen. Well, these batters, you know, they got everything going on in their minds. I can clearly feel for it. Me being the opener myself, I've always been very particular about the bats, what balance to use. And especially when one of your favorite bats breaks in the middle, it definitely puts something in your mind. Yeah, I'm not quite sure, but the look of that bat, it felt like it was the same bat he was using in Bangladesh as well. Oh, wonderful! This is excellent bowling by Mir Hamza without any luck. This is where the luck comes in. He's beaten the outside edge several times since morning without any luck. Wonderful spell. Look at the angle, and then it keeps seaming away from Abid Ali. And that would suggest the Sindh is still in the game. There's enough happening for them to be persistent and patient, because with 3 wickets down, only 1 or 2 wickets can lead them into the lower half, and then you know anything can happen from there. Wow, that's excellent bowling. This is bowling of the highest quality by Mir Hamza. We've seen him bowl well, but this is better than that. He bowled brilliantly in the last game and over here again. Would you agree that this is the tougher examination for Abid than what he had on national duty? No disrespect to the Bangladesh bowlers. Agree? Well, yes, partially we can agree on that, but the conditions were different, the pitches were different, the bowling attack was a little different. This is better, the bowling attack, 100%, especially when it comes to fast bowling. 1 run. Because this fast bowling attack, Mir Hamza, Sohail Khan, Tabish Khan, they're quality bowlers, fast bowlers. They've got so much experience behind them. They know how to bowl, and on a pitch like this, it's never easy. You cannot play a false shot. You have to search for runs. You have to wait for the bad delivery to score runs. And Abid Ali has done it superbly till now, and Central would want him to carry on for a longer period of time. That's still got plenty of bats. He will be carrying a few. Oh, excellent bowling. This is top class by Mir Hamza. How is he not getting a wicket? That's the question. 28 overs gone, 97 for 3, Central Punjab. Hamza must be thinking, what else does he need to do to get a wicket? Look at the area and the movement and the bounce. Excellent, superb start. But the key from here is to don't lose your patience. Don't go chasing that wicket. Just stay on these areas and the results will come. Or else you will still make life very uncomfortable for the batters. There is no chasing in this game. Not as a bowler, not as a batter. You cannot give, as a batter, you cannot go around chasing those deliveries that are pitched up. Not every time, unless you're Abid Ali. Unless you're in the form like Abid Ali is in. He can afford to do that. Just like that. Not quite timing it, but nicely done. He's not happy. See, he's again looking at the bat. He's not happy with that bat. That is what I was saying. As an opener batter especially, when your favorite bat gets broken, it definitely puts something in your head. And that is exactly what's happening right now. And all the calm and the composure that he had, there's an extra thing to worry about. And it can happen, like I was saying, you can easily break the rhythm of a batter. And it's inexplicable, but it's happening right here, right now. Absolutely, you can just see he's not happy. He's not comfortable. He's not 100%. This is not a good news for Abid Ali. It seems like that he'll have to start his inning all over again. Take his strike again.
keep the focus, keep the patience. Absolutely. Start again is the key word here. Central Punjab cannot afford him to lose his wicket. Or you can take a single and go back to the other end. That helps. Definitely it helps. It will calm his mind, thinking about the bat at the moment, more so than what he's facing from the other end. But like you said, that's the best thing happened to him. Just go on that non-striker end and switch off for a minute. Unless he gets a couple of boundaries with his bat, he won't be comfortable. Yes, if he gets those, it will help for sure. So that brings to your point. He's starting all over again, just like a new batter. When you hit your first boundary, it gives you a lot of confidence. Absolutely. Sohail Khan, what a wonderful character of the game this man is. I've always loved his passion about the game, his aggression about the game. He just loves the game, and he's never shy of the words too. He's always expressive. He always says what he wants to say. It was so disheartening to see him not being picked in PSL, the draft that happened yesterday. I think teams have missed out on him. Not for just his bowling, just the passion he brings in the team. That's a lot of value. That's add value. What do you think about that? I'll certainly have him around the group because of his experience. We've seen that in previous rounds where he was helping Hasnan and Dhani right in the middle of the game. And it had an impact. They got breakthroughs, they got wickets. Talking about wickets, this is the chart about the runs. The most runs this year. Most surprisingly, Shah Faisal, none of them got picked. Just Ahsan Ali for Quaid Gladiators. Your most run getter in Quaid Azam Trophy. This is pulled. There is a fielder, but this will cut them through. This is wonderful batting by Mohammad Saad. Boundary for him. He's moved to 25 now. It's a good surprise delivery from Sohail Khan, but Mohammad Saad, like we said, is very, very comfortable on that back foot. And two fielders back there, but he split the gap perfectly. Well, he got into position very nicely. Just the roll of the wrist as well and split the gap. Good boundary. Off the back foot this time. Wonderfully done by Mohammad Saad. He looks in a supreme form. Will earn him 3 runs. Good batting by Mohammad Saad. We've seen a lot of this season. He's very good off the back foot. You don't want to bowl him there. He gets back very quickly and uses the straight bat more often than not. He doesn't like to play horizontal bat strokes. And that's your list again. Very surprised to see Shah Faisal. Sahibzada Farhan, wonderful player, 879 runs, doesn't get picked. Tayyib Tahir, 699 runs, wonderful attacking player, doesn't get picked. Abid Ali, 666 runs, doesn't get picked. Mohammad Saad, 638 runs, doesn't get picked. Surprising. The top two, you add to those figures, they had a fantastic national T20 as well. In fact, Sahibzada Farhan topped that list as well. And Tayyib Tahir was exceptional in that tournament as well. This is how franchise cricket goes. What message are we giving? Oh, this is excellent. This is excellent cricket. Wonderful bowling by Mir Hamza. Without any luck. Still persisting with the same line and length. This exactly what he finished off the last over with. Once again starts off. The line and length is perfect. The angle squares him up. No luck, like Ali said, for Hamza. Another player doesn't get picked. Wow. Wow to these gurus. Wow. You don't get picked after performing so much in your first class cricket. Have a look at the spell of Mir Hamza. This is so disheartening and surprising in my opinion. These top class quality cricketers
who perform year in year in first class cricket doesn't get picked in your Premier tournament. Very sad. Like I said, nature of franchise cricket. But you add to the list, we saw Rizwan Hussain earlier in the season. He actually made his name in white ball cricket, and now he's showing his prowess in red ball. One hope that we would see him, not to be. Down the track, straight to the man though, Fawad Alam. So here's a question, not just to you, but to everybody who's watching this game. How do you pick a player? What is the mechanism to pick a player for a franchise cricket? For PSL, for example, there was a draft yesterday. What performance do you look at to get picked for the PSL franchise? Because this first class cricket is your mechanism to get picked, right? But if you ignore the performers of first class cricket to be picked at franchise cricket, what else? Where else do you go? Again down the track. Misfield will earn him a couple of more runs, most likely 3. This is where Sindh has to be spot on with their fielding efforts because they don't have many runs to play for. The trail is just 47 runs now. Yeah, the Sindh fielding has to be spot on, you're right. And you're talking about the selection for the PSL as well. You raise a question, and I'm afraid I'm not in a position to answer any of those. But a lot of cricket fans and experts were asking the similar questions. If you look over the social media last night, there was a lot of questions. Absolutely. I mean, you just look at the list. You've got the top run getters of Quaid Azam Trophy. Just one gets picked. On the other hand, we'll look at somebody like Mir Hamza, somebody like Sohail Khan. Top performers of first class cricket, wonderful bowlers, knows how to bowl, experienced bowlers, doesn't get picked. Wow. That's wow. The question begs is that some of the, well, I'll come back to it after this ball. Bidali. Solid as always. 30 done, 108 for 3. डिफरेंट फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट डिफरेंट है, इस फॉर्मेट का मैकेनिज्म क्या है? वाइड बॉल में तो ना, वाइड बॉल में करे तो पहले आप प्रहार नहीं किया, हाँ ऐसा और बताओ अभी का केबी कैसे शोज करता रहा है और आवाज क्या है? ताबिश खान कंटिन्यू करेंगे। 5 ओवर्स की अब तक इस मैच में, 1 मेडन किया, 70 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। आबिद अली और साद के दरमियान बड़ी ज़बरदस्त ये पार्टनरशिप, 46 के स्कोर पे ये दोनों यकजा हुए और अब तक 62 रन की पार्टनरशिप है इन दोनों प्लेयर्स के दरमियान। अहमद सईद ने हमें कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन किया। वेलकम अहमद। बहुत शुक्रिया अली सलमान। आबिद अली और साद दोनों बात का मुजाहरा करते हुए कि इस विकेट पे किस तरह खेलना चाहिए। मुश्किल वक्त से दो चार हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग सोहेल खान और मीर हमजा ने की है। अब तक दोनों को मुश्किलात में डाला है, लेकिन अपनी विकेट फेंकने के लिए तैयार नहीं है। मेहनत करवा रहे हैं बॉलर से कि उनको आउट किया जाए किसी तरह, लेकिन खराब शॉट अभी तक किसी ने नहीं मारा। और इस मरतबा उसमें से बाहर एक गेंद, बड़ी उम्दा स्लाइस किया इसको और गेंद
4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं था पॉइंट पोजीशन पर। साद और आबिद अली आहिस्ता आहिस्ता स्कोर को आगे बढ़ाते हुए, पार्टनरशिप को मुस्तहकम करते हुए। खराब बॉल थी ये, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, हाफ वॉली। सिर्फ बैट का कोई हिस्सा लगाने की जरूरत थी साथ को, ऐसा ही उन्होंने किया। बहुत बड़ा गैप गली और कवर में पीछे फील्डर खड़े उनके दरमियान। 4 रन। ताबिश खान कि जिन्होंने कल विकेट दिलाई थी, उनसे मजीद विकेटों की उम्मीद। सिंध के तीनों बॉलर्स बड़े एक्सपीरियंस है और उनका मुकाबला एक और एक्सपीरियंस प्लेयर आबिद अली के साथ। सुहेल खान के कल जिन्होंने 65 रन की इनिंग खेली, ताबिश खान के साथ मुसलसल गुफ्तगू करते हुए, सीनियर पार्टनर का रोल प्ले करते हुए ताबिश और सुहेल दोनों ही काफ़ी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं सिंध और कराची के लिए, और दोनों ही सुई सदरन गैस कंपनी से एक साथ काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं। बैकफुट पे गए इस मरतबा, बेहतर गेंद थी। उमैर बिन यूसुफ थे वहां पर मौजूद, ऐसा शफीक है इनफैक्ट। रन बनाने का मौका नहीं। सादा ने 3 विकेटें बॉलिंग करते हुए हासिल की और बैटिंग में भी काफ़ी मुतासर किया है अमर। जी हाँ, अब तक लड़ रहे हैं। विकेट जैसा मैंने कहा आराम से गंवाने को तैयार नहीं। हालांकि अगर टेक्निकली आप देखें, दोनों बैट्समैन जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज के खिलाड़ी हैं। साथ जो है वो थोड़ा सा स्क्वायर ऑन हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा शॉट, बार ऑन पे गिरी हुई बॉल और फ्लिक किया उसको, रिस्क का इस्तेमाल किया। अच्छी फील्डिंग बाउंड्री लाइन पे। ये देखिए ऑन पे गिरा हुआ बॉल था, इसको कलाई का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग की तरफ खेला, 2 रन हासिल किए। बाउंड्री भी हो सकती थी यहाँ पे, बड़े आसानी के साथ अपने बूट से गेंद को रोक सकते थे हमजा, और बहरहाल उन्होंने हाथ से रोकने की कोशिश की और लकी रह गए, 4 रन नहीं हुए। वरना गेंद को रोकने की कोशिश में उनका पाँव बाउंड्री से बाहर हो सकता था। ताबिश यहाँ पे सामना करने के लिए तैयार। 41 रन की बर्तरी रह गई है सिंध की सेंट्रल पंजाब के खिलाफ। बैकफुट पे गए इस मरतबा, डीप कवर्स में इस मरतबा कवरिंग मौजूद है एहसान अली की सूरत में। कल एहसान अली का नाम कोयटा ग्लैडिएटर्स की सप्लीमेंट्री कैटेगरी में आया पाकिस्तान सुपर लीग के अगले एडिशन के लिए। ओवर मुकम्मल 115, 3 विकेटों के नुकसान पर। खूबसूरत मंजर स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मेन पवेलियन बिल्डिंग का ये मंजर, ऐसा लगता है किसी इंग्लैंड के किसी ग्राउंड में हम स्मैश कवर कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये बिल्डिंग बनाई गई है, स्टेट ऑफ द आर्ट ये ग्राउंड है और हर फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। इंडोर जिम्नाजियम भी मौजूद है, इंडोर गेम्स की भी सहूलियात मौजूद हैं, नेट्स बड़े ज़बरदस्त मौजूद हैं। क्रिकेट ग्राउंड के पीछे फुटबॉल ग्राउंड मौजूद है, और अगर आप टेप बॉल क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो टेप बॉल के लिए भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी मीर हमजा की और जिसको जाने दिया, रन बनाने का मौका नहीं। मीर हमजा ने बहुत अच्छी लाइन पे इस वक्त बॉलिंग की है, करीब कर रहे हैं बैट्समैन के, और जो एंगल इनका हो रहा है बाहर की तरफ, 7 को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान किया उन्होंने, क्योंकि जैसा मैंने कहा दोनों बैट्समैन जो है वो स्टाइल उनका बिल्कुल मुख्तलिफ है। डिफेंसिवली आबिद अली ज़्यादा बेहतर साथ के मुकाबले में, इसलिए परेशान भी साथ ज़्यादा हैं। बिल्कुल अमर, टेक्निकली आप बेहतर बता सकते हैं। अगर हम साथ का स्टांस देखेंगे, पहले हम ग्राउंड के मनाजिर देखेंगे, उसके बाद ये देख सकते हैं फुटबॉल पोस्ट मौजूद है, फुटबॉल की सहूलियात भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा नेट एरियाज़ भी, एक नेट एरिया ये है और एक नेट एरिया
स्टेडियम में एंटर होते ही है। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे जो आने वाली दोनों टीमों को प्रैक्टिस की सहूलियात फराहम करती हैं। और ये वो पोस्ट है कि जहाँ पे अक्सर हमारे कैमरामैन मौजूद होते हैं, कैमरे के लिए ये पोस्ट है। और ये दूसरा नेट एरिया है। बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं इस ग्राउंड पे। बड़ा खूबसूरत मंजर है नेशनल स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। बड़ा अच्छा कैमरा वर्क प्रोडक्शन टीम का। और साथ साथ अगर हम साथ का स्टांस देखें, अहमर तो अपना पूरा बॉडी वेट वो अगले पाँव पे ट्रांसफ़र रखते हैं। अगर हम साइड कैमरे से देखेंगे तो आपको अंदाज़ हो जाएगा कि पूरा बॉडी वेट अपना वो अगले कदम पे रखते हैं। या साद अगले कदम पे खेलने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर बॉलों को, लेकिन अगर आप देखें उनका पीछे वाला पाँव आमतौर पे जब बॉल विकेट्स में गिरा हुआ होता है तो पूरा जो है वो उसकी सिम जो है वो बॉलर की तरफ हो जाती है, जो कि खासा ख़तरनाक हो सकता है जब बॉल स्विंग हो रहा हो। तो ये देखें आप पूरा वेट जो इनका, ये देखिए अगले कदम पे। और हमारे इसकी वजह आप क्या समझते हैं कि सीम और स्विंग को किल करने के लिए? जी सीम स्विंग, क्योंकि जहाँ पे थोड़ा सा घास विकेट पे होता है वहाँ पे बॉलर्स की लाइन अमूमन और लेंथ जो है वो बैट्समैन को पता होती है कि वो थोड़ा आगे करने की बॉल कोशिश करेंगे। तो कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगले पाँव पे खेलने की कोशिश करें। कुछ मूवमेंट थी साइड स्क्रीन के पास जिसकी वजह से रुक गए बैट्समैन साल। ये देख सकते हैं आप पूरा बॉडी वेट इन्होंने ट्रांसफ़र किया हुआ है अपने अगले कदम पे और पिछले पाँव से सपोर्ट दी हुई है। लेकिन काफ़ी झुकाव भी है इनका अगले जानिब। ये देखिए इस तरह हमारे तफसील के साथ बता रहे थे ये साद खान स्क्रीन पे। और मंजर आम पे भी साद नज़र आए गुज़िश्ता फ्रेम में आपको, और पस मंज़र में भी साद नज़र आए। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये मंजर आम पे भी साद हैं थोड़ा सा ये पिच पे, और ये पस मंज़र में भी साद हैं। मैं हूँ अक्से आना और पसे आना कोई और है। तीन सिले पे गली के साथ बॉलिंग करते हुए मीर हमजा, साद खान है बैट्समैन। एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप है दोनों के दरमियान। 46 के स्कोर पे यकजा हुए 69 रन की पार्टनरशिप। और अब तीसरे स्लिप के फील्डर को निकाल के डीप, एहसान अली है फील्डर जिनको डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे प्लेस किया, तो यकीनी तौर पे कोई बाउंसर या शॉर्ट पिच क्या एक्सपेक्ट की जा सकती है। राउंड द विकेट इस बार एंगल चेंज करने के लिए आए हैं मीर हमजा। 32 ओवर का इख्तिताम 116 तीन खिलाड़ियों के नुकसान पर। खेल की रफ्तार काफ़ी सुस्त इस वक्त। 155 रन स्कोर किए सिंध ने 9 विकेटों के नुकसान पे। 65 रन की इनिंग खेली सुहेल खान ने और 3 विकेटें मोहम्मद अली साद के हिस्से में आई। और जवाब में आबिद अली की शानदार बैटिंग। अब तक 55 रन की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली और 39 रन बनाए मोहम्मद साद ने 116 3 विकेटों के नुकसान पर। बरतरी अब तक के खेल के बाद सिंध की महज 39 रन की। अमूमन हम ये जिक्र करते हैं कि जब कोई टेस्ट प्लेयर दोबारा फर्स्ट क्लास में खेलने के लिए आता है तो एक फ़र्क नज़र आता है या नज़र आना चाहिए उसकी अप्रोच में, उसके अंदाज में, उसकी टेक्निक में, और वो किस तरह देख रहा है पूरे गेम को उसमें। और आबिद अली को मैं देख रहा हूँ कि उनमें ये फ़र्क नज़र आ रहा है वाज़े तौर पर। फील्ड में भी वो बड़े प्रोएक्टिव थे जब फील्डिंग कर रहे थे, तमाम अपने फील्डर्स को, बॉलर्स को, कप्तान को मशवरा देते हुए। और अब बैटिंग में तो बहुत ही वाज़े फ़र्क है, जिस तरह बॉल चूज़ कर रहे हैं वो, जिस बॉल को जैसे बॉलें छोड़ रहे हैं, एक वाज़े फ़र्क बाकी तमाम बैट्समैनों से उनमें लग रहा है। ताबिश खान कंटिन्यू करेंगे सामने वाले एंड से, हमारे बाएं जानिब से।
ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी। एक ज़माने में डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने एक वर्ल्ड 11 कराची में मधु की, और जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, और उस वर्ल्ड 11 के ख़िलाफ़ ताबिश खान ने हैट्रिक स्कोर की थी। और बड़े दिलचस्प अंदाज में इनकी उस मैच में शिरकत हुई थी, क्योंकि उस वक्त ईद उल अज़हा का ज़माना था। एक गाय लेने मंडी पहुँचे हुए थे, और वहाँ से जब इनको कॉल है कि आज का मैच आप खेल रहे हैं, तो फिर ये वहाँ से भागे भागे आए, इन्होंने उस मैच में शिरकत की और फिर 3 विकेटें हासिल की और हैट्रिक की। ऐसे कई वाक़यात हमारे क्रिकेट की तारीख़ में सुने हैं, देखे हैं। अचानक का जो एलिमेंट है वो हमारी क्रिकेट में बहुत है। और अली, आप ज़ाहिर है क्योंकि बड़ी गहरी नज़र आपकी और याददाश्त जो है वो आपकी बहुत ही कमाल है, तो आपको ज़रूर ऐसे कुछ वाक़यात याद होंगे ज़रूर। जी हाँ, तौसीफ़ अहमद का इंक्लूजन जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट में एक बहुत ही बड़ा अचानक है, कि जहाँ पे इलियास खान टेस्ट मैच खेलते खेलते रह गए, ऑन पे खेले, इस मौके पर 1 रन हासिल किया। साद है वहाँ पे फील्डर, इनफैक्ट उमर बिन यूसुफ है वहाँ पर। तो सबसे बड़ा अचानक तो तौसीफ़ अहमद का इंक्लूजन है, कि जिन्होंने बाद में 94 टेस्ट विकेट्स हासिल की। इलियास खान की जगह ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेल गए। नेट बॉलर के तौर पे तौसीफ़ अहमद गए थे पाकिस्तान की टीम को प्रैक्टिस कराने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने मियां दाद, मुश्ताक मोहम्मद और दीगर ज़हीर अब्बास जैसे बैट्समैनों को तंग किया। और फिर अचानक से जो नेक्स्ट डे तौसीफ़ अहमद टेस्ट मैच खेल गए, और इलियास खान जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आ रहे थे, उसके बाद ना सिर्फ उस मैच से ड्रॉप हुए बल्कि कभी भी क्रिकेट नहीं खेल सके। इसी तरह वसीम अकरम, कि जिस तरह खान मोहम्मद के कैंप में वसीम अकरम को देखा गया, वसीम अकरम 1 साल पहले अपने कॉलेज की टीम में भी नहीं थे, और अगले साल वो पाकिस्तान की टीम में थे। वक़ार यूनुस, के जिनको इमरान खान साहब ने देखा, सुपर विल्स कप का मैच टीवी पर आ रहा था, और उसके बाद वो अपनी गाड़ी निकाल के गद्दाफ़ी गए और वहाँ वक़ार यूनुस से मिले, और फिर वक़ार यूनुस पाकिस्तान के लिए खेल गए। तो काफ़ी ऐसी मिसालें। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, जाने दिया इसको विकेट कीपर के पास। काफ़ी ऐसी मिसाल है क्रिकेट में कि जो अचानक से प्लेयर आए और फिर उन्होंने परफॉर्म भी काफ़ी किया। जी हाँ, बहुत सी बार ऐसा होता है कि अच्छे खिलाड़ी अपनी जगह परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं, कुछ नज़र में नहीं आते, कुछ जो रिक्वायरमेंट्स कप्तान मौजूदा जो उन्हें चाहिए होती हैं उस पर पूरे नहीं उतर रहे होते। बहुत से फैक्टर्स हैं अली इसमें, प्लेयर्स के खेलने और बहुत से अच्छे प्लेयर्स के ना खेलने में। हाँ, वही सही है। 37 रन की बढ़तरी है यहाँ इस मौके पर सिंध की टीम की इस मैच में, और काफ़ी सुस्त रफ्तार हुआ इस वक्त ये मैच। और कोशिश यही होगी कि पहला सेशन सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ सेंट्रल पंजाब निकाले, और ये जो सुस्त रवि है ये फेवर कर रही है अकॉर्डिंग टू द प्लान है सेंट्रल पंजाब के। बिल्कुल वजह फरमाया आपने। ये जो पहला घंटा होता है वो हमेशा हमने देखा है स्टेट बैंक के ग्राउंड पर मुश्किलात पैदा करता है बैट्समैन के लिए, और जैसा कि पिच रिपोर्ट हमने देखी थी उसमें आज के दिन का खेल और आइंदा आने वाले दिनों का खेल जो है वो बैट्समैनों के लिए ज़्यादा साजगार होता जाएगा, लेकिन ये पहला घंटा जो है वो हमेशा जो है वो परेशान करता है बैट्समैनों को। तो अगर ये इन्होंने निकाल दिया तो बहुत मुझे लगता है कि रन्स बनाने आसान हो जाएंगे इनके लिए। डेफिनेटली, और अब तक अपनी हिकमत अमली में काफ़ी कामयाब हैं। और सर शफीक बॉलिंग के निशान पे तैयार हैं। इससे पहले हमने इनको ऑफ स्पिन बॉलिंग करते देखा है, और मुझे याद है एक मैच में इन्होंने अज़हर अली को आउट कर दिया था आज़म ट्रॉफी के फाइनल में, जब ये HBL के लिए खेल रहे थे और अज़हर अली SNGPL के लिए खेल रहे थे। लेकिन आज इनको मीडियम पेस बॉलिंग करते देखेंगे, और सामना करेंगे आबिद अली। काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ें फवाद आलम को हमने देखा है ट्राई करते हुए।
जाहिर है वो जब रेगुलर बॉलर्स को विकेट नहीं मिल रही होती तो विकेट हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कप्तान करता है, और अगर ये विकेट लेने में कामयाब हो जाएं ये बॉलर्स, कल खुर्रम मंजूर को हमने देखा था, उन्होंने ट्राई किया एक ओवर में, आज असद शफीक को ऑफ स्पिन की जगह मीडियम पेस करवा रहे हैं। अगर ये बॉलर्स विकेट लेने में कामयाब हो जाए तो ये कप्तान के खाते में जाती है विकेट। बिल्कुल कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश है यहाँ पर। असद शफीक के का इंक्लूजन एज ए बॉलर, इस तरह साद ने कल 3 विकेटें हासिल की, यही कुछ होगा इस मौके पर फवाद आलम के जहन में। साद इस मरतबा बैकफुट पे गए, कवर्स में खेले, 1 रन का मजीद स्कोर में इजाफा। अबरार हैं फील्डर, 35 रन की अब बरतरी रह गई है सिंध की सेंट्रल पंजाब के खिलाफ, और अब तक जो डोमिनेट किया है वो सेंट्रल पंजाब ने किया है। यहाँ इस विकेट पे से कुछ ना कुछ निकालने के लिए कम से कम रफ्तार 7 जितनी तो होनी चाहिए, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत वक्त मिल जाता है बैट्समैन को बॉल खेलने से पहले। कंसंट्रेशन ख़राब करने के लिए ज़रूर हो सकता है ये कि आसान बॉलर समझ के जो है वो बैट्समैन कोई गलती कर बैठे। ऑन पे खेले इस मौके पे, लॉन्ग चेस होगा ये एहसान अली के लिए, 1 रन पे इक्तफा किया आबिद अली ने आहिस्ता आहिस्ता अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए। और वो यंगस्टर जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आबिद अली की बैटिंग देख रहे हैं, उनके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए, किस तरह आबिद अली ने सिचुएशन को अपने हक में किया। कोई जल्दी नहीं की, कोई अननेसेसरी स्ट्रोक नहीं खेला, सुकून से इत्मीनान के साथ अपनी इनिंग को आगे बढ़ाते रहे। इस मरतबा हसन को खुद जाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी पीछे खड़े थे एहसान अली। 1 रन का स्कोर में मजीद इजाफा हुआ। ओवर मुकम्मल, 122 3 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी इब्तिदा की थी सिंध के बॉलर्स ने भी, बड़ी नपी तुली अच्छी जगहों पे बॉल की, लेकिन कामयाबी अब तक हासिल नहीं हुई है। इसकी वजह जो है वो आबिद अली की मौजूदगी विकेट के ऊपर, मेरे ख्याल से जो साथ को भी बड़ी अच्छी तरह गाइड करते हुए, समझाते हुए कि किस तरह से इस विकेट पर वक्त गुजारे बगैर रन बनाना मुमकिन नहीं। एक सीनियर पार्टनर का रोल प्ले करते हुए अंदर आती हुई गेंद, इसको बड़े उम्दा तरीके से खेले हैं सीधे बल्ले के साथ। 2 फील्डर गेंद के पीछे हैं। फवाद आलम गेंद तक पहले पहुंचने में कामयाब हुए, खुश नहीं है फवाद आलम, मायूसी के आलम में गेंद को अपने हाथ में उठाए हुए हैं। फवाद आलम थोड़ी सी नाराज़गी का भी इजहार कर रहे हैं, बैट्समैन के साथ कर रहे हैं या बॉलर के साथ, मेरे ख्याल में आबिद अली के साथ चिट चैट कर रहे हैं फवाद आलम। और यहाँ इस मौके पर फवाद आलम जो मिड ऑन के फील्डर हैं उनसे भी नाराज़गी का इजहार किया उन्होंने। अबरार थे कि जिनसे नाराज़गी का इजहार किया फवाद ने, उनके ख्याल में अबरार को पहले गेंद तक पहुंचना चाहिए था। सबसे बाहर लेफ्ट किया, जाने दिया, सुकून के साथ इत्मीनान के साथ साथ खेलते हुए पूरा साथ फराहम कर रहे हैं साद आबिद अली को। 124 3 विकेटों के नुकसान पर। ताबिश खान बहुत तजुर्बेकार खिलाड़ी, 600 से ज़्यादा विकेटें हासिल कर चुके हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और इस तरह की विकेटों पे खासे मौसर बॉलर माने जाते हैं। काफ़ी उम्मीदें होंगी सिंध को इनसे। कोई गलती, कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं, कोई गलती करने के लिए तैयार नहीं है। साथ सर को झुकाए हुए इत्मीनान के साथ खेलते हुए सिंध के बॉलर्स के सब्र का इम्तिहान लेते हुए। और अब से थोड़ी देर पहले आपने फ्रस्ट्रेशन देखी फवाद आलम के चेहरे पे, किस तरह उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में अबरार की थोड़ी ताख़ीर को उन्होंने
माफ़ नहीं किया। और अहमद आप भी कप्तान है, अमूमन होता है कप्तानों पे फेज आता है। मौसम से बाहर लेफ्ट किया, अच्छा लेफ्ट किया यहाँ पे गेंद पे निगाह रखते हुए। जी हाँ बिल्कुल, आता तो है लेकिन आना चाहिए नहीं। कप्तान जो है वो इन कंट्रोल हमेशा नज़र आना चाहिए। फील्ड में तमाम प्लेयर्स जो है उसकी तरफ देख रहे होते हैं, मुश्किल वक्त में ख़ास तौर पे, और हमेशा जो है वो कप्तान प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के साथ ग्राउंड में घुसता है। तो वो अगर एक प्लान उसका जो है वो कामयाब नहीं भी हो पाता तो उसको दूसरे या फिर तीसरे प्लान पे जाना होता है। और अहमद आप ये बात कह सकते हैं क्योंकि अगर जिसके अंडर में शायद आफरीदी खेल रहा हो, जिसके अंडर में अब्दुल रज़ाक खेल रहे हो, शोएब मलिक खेल रहे हो, तो फिर उस कप्तान को खुद ही अपने आप को काम और कूल रखना पड़ता है। जी हाँ, लेकिन अहमद सईद मजाक से कतई नजर, अहमद सईद भी किसी से कम नहीं थे। बदकिस्मत रहे पाकिस्तान नहीं खेले, ऑफ स्टंप से ये बाहर गेंद थी, वरना अहमद सईद एक ज़माने में बिल्कुल उस लाइन में आ चुके थे जो पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे पे दस्तक दे रहे थे 124 3 विकेटों के नुकसान पर। देख सकते हैं ये सुस्त रवि जो है हर एक के चेहरे पे छाई हुई, आप देख सकते हैं कोई बेजारी सी बेजारी है। जी हाँ, रवैया पे अगर हम बात कर लें, अप्रोच जिसको हम कहते हैं, वो सिंध की थोड़ी मायूस कुन है। सुबह के वक्त पहले सेशन में आम तौर पे टीमें जो हैं वो अपना भरपूर जो है वो मेहनत करने की कोशिश करती हैं कि किसी तरह अगर विकेट नहीं भी मिल रही तो बैट्समैन पे किसी ना किसी तरह का दबाव बरकरार रखा जाए, लेकिन सिंध इस मामले में ज़रा आज कुछ कमज़ोर लग रही है। जी हाँ, जब अमूमन हम दो डगआउट्स पे निगाह डालते हैं तो कहीं खुशी कहीं गम के मनाजिर नजर आते हैं, लेकिन अभी आप देखें यहाँ भी कुछ उदासी डेरे डाले हुए, और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो सिंध के डगआउट में भी यकीनी तौर पे जिस सिचुएशन से इस वक्त सिंध गुजर रही है तो वहाँ भी जो है वो थोड़ी सी उदासी होगी। लेकिन सेंट्रल पंजाब के कैंप में क्यों उदासी है ये एक समझने वाली बात है। हालांकि या तो मैच का जो मूड है वो इस पूरे डगआउट ने मुतासिर किया हुआ है काफ़ी, क्योंकि एक सुस्त रवि से मैच इस वक्त जारी है। अली आपने इसका जिक्र किया तो मैं एक वाक़या इंग्लैंड में मेरे साथ मैंने देखा कि बड़ा अच्छी सिचुएशन में टीम थी हमारी, तो मैं एक कुर्सी पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे भी ये सुपरस्टिशंस और ये वो बड़ा उस पर लोग यकीन रखते। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ भी काफ़ी खामोशी सकूत है। तो जब मैं हिलने लगा उस मैच में अपनी जगह से तो मुझे आके एक साहब ने रोक दिया, कहते हैं कि ये आप हिले नहीं, इसलिए क्योंकि सब बेहतरीन चल रहा है तो कोई चीज़ तब्दील नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे हसन अली को कीनू छीलने की जिम्मेदारी दी हुई है, इतने कीनू उनके सामने छिले रखें। ये भी एक जॉब है वैसे। दिफाई अंदाज से खेले इस मरतबा, बिल्कुल बल्ले के बॉटम पे लगी। आबिद अली निस्बतन नीचे रहने वाली इस गेंद को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करने में कामयाब हुए। एक बैट वैसे ही वो उनका ब्रेक हो चुका है। अगर ये वो जगह है जहाँ पे गेंद अगर ज़ोरदार अंदाज से लगे तो अमूमन बल्ले का बॉटम निकल जाता है, लेकिन मैनेज किया यहाँ पे आबिद अली ने। यहाँ पे लेग स्टंप से बाहरी गेंद थी, डिफ्लेक्शन किया, ताबिश खान गेंद तक पहुँचे हैं। अच्छी थ्रो, अच्छा पिकअप, लेकिन क्रीज में बल्ले को ड्रैग करने में कामयाब हो गए। ये बल्ले टूटने पे मुझे वाक़या याद आया अहमर कि ज़हीर अब्बास एक क्लब का मैच खेल रहे थे, बहुत ही छोटे थे ज़हीर अब्बास, सेंचुरी करीब पहुंचे, उनका बैट टूट गया और उसके बाद वो सामने वाली टीम में एक टेस्ट क्रिकेटर थे, उनसे बैट मांगा, उन्होंने बैट नहीं दिया। उसके बाद फिर ज़हीर अब्बास ने टूटे बल्ले से सेंचुरी स्कोर की और फिर दुनिया ने देखा कि सेंचुरियों की सेंचुरी स्कोर करने वाले बैट्समैन बने ज़हीर अब्बास। लेकिन उस सामने जो टीम में टेस्ट क्रिकेटर थे उन्होंने नौजवान ज़हीर अब्बास को बैट अपना नहीं दिया था। बहुत बड़ा नाम ज़हीर अब्बास, एशियन ब्रैडमैन कहलाते थे और क्या खूबसूरत अंदाज था उनका खेलने का और ज़बरदस्त प्रोडक्शन टीम का वर्क। ये देखें आप, जिस बैट की हम टूटने की बात कर रहे थे फौरन ही आपको मंजर दिखाया। अच्छी एफर्ट थी यहाँ पे डीप मिड विकेट पोजीशन पे, डीप स्क्वायर लेग से भागे थे एहसान,
एक रन पे इक्तिफा करना पड़ा। ये देखिएगा वो मंजर जो बैट इनका ब्रेक हुआ था, बिल्कुल बैट पे गेंद लगी और बल्ला झूल गया इनके हाथों में। उसके साथ ही जब स्कोर 127 3 विकेटों के नुकसान पे, पानी का वक्फा और आहिस्ता आहिस्ता बरतरी सिंध की कम होते हुए। First hour of play finish हो गया। मैंने 5 ब्यूटी शॉट दूसरे वाला दिखाया, अच्छा शॉट। कैसी रही आपकी ओपनिंग? बहुत पुराना अब रिवर्स होगा। शुरू हो गया आपने सही कहा। Intense battle in the first hour of play. No wickets. That's the most important news for Central Punjab. The bowling for most parts was very good. And the contest, like I said, between bat and ball was very intense. Hung in there, this partnership now worth 81 between Mohammad Saad, who's made 44, and Abid Ali, who's batting on 61. They had a stiff examination from Mir Hamza and Sohail Khan initially. But as the first hour wore on, they looked more and more comfortable. We've seen Asad Shafiq, but we haven't seen the mystery of Abrar this morning, and probably not long before we can see him at the bowling crease as well. Skipper Fawad Alam has rung the changes. He's used 3 of his premier pacers, and the surprise of Asad Shafiq, nothing has worked yet. Settling into his seat in the comm box. Very good morning, Ali. Thank you, Shah Faisal. A very good morning to you too. You make a very valid point. It's surprising not to see Abrar Ahmed. We're into the first hour, over the first hour of the play, and we saw him troubling Abid Ali yesterday when he bowled few overs, but he's nowhere to be seen since morning. And we already see Asad Shafiq bowling and the 3 seamers, not him. Surprising. Tabish got that ball swinging and through the gap. Abid Ali has been prolific with his driving through the covers. Once again finds the gap and finds the boundary. Don't pitch him there. He's going to punish you all day if you keep on pitching the ball there right up to him.
Wonderful timing. Have a look at that. Pitch stopped. No problems for Abid Ali. Placement perfect. Result excellent. No fair, Ali. We were talking about the previous game with the driving on the up became very, very easy. Credit to the KP skipper, and then later on Umar Sadiq, the Southern Punjab skipper. They got their angles right. And a lot of these drives, they push their mid-off wide to cover. And we've seen Abid Ali hit 2 boundaries in that area that last week we were seeing going straight to the fielders because that mid-off was wider towards the extra cover. As Fawad Alam playing his first game in this year's championship on this venue. With its dimension and the nature of wicket, the way it keeps changing, angles are crucial. Also, the type of form Abid Ali is in is not going to leave out on this length. For bowlers, you've got to adjust your length against Abid Ali because he's in supreme form. And he can do that to you. He can leave good deliveries. That's the key for Abid Ali. That is why he has scored so many runs in first-class cricket. Over years and years again he's been performing because he has the abilities to do it at this level. Because he knows how and when to leave the deliveries. Spot on. Wonderfully done by Abid Ali. Well, that man Asad Shafiq that you just saw has been brought in to short extra cover. In case Abid hits one in the air in that direction. Comfortable to manage that length. Back of a length. Abid is very assured with his footwork. Another very impressive knock. He hasn't given them a sniff. I'd like to talk about Sindh's planning, not in just this game. They've been inconsistent. They won a wonderful game here against KP, then lost the game by an innings against Northern, changed the captain in the next game, brought in Fawad Alam, and then sent Mohammad Saad Khan up the order when they could have easily managed to send Asad Shafiq or Fawad Alam himself. And then when come to bowling, Khurram Manzoor was used before Tabish Khan. And today also, Asad Shafiq bowling, no signs of Abrar. All these questions need to be asked by Sindh to the Sindh management about their planning. Pretty strange in my opinion though. Yeah, long conversation between skipper and Tabish. Not agreeing on what they want to do probably. Fawad in the ear of Tabish. Very experienced, and it does connect to that point. He's not very happy. But when you have big name players, big in stature, like Sindh has, Khurram Manzoor, Asad Shafiq, Tabish, Fawad Alam, Suhail Khan, sometimes these kind of things do happen. Somebody needs to take charge and the other have to follow. Well, they got a big name as a coach too, Basit Ali. Sometimes it reverse affects you too, having so many big names, who to listen. I can agree on a part that Fawad Alam, okay, is the current player who's representing Pakistan national side. Then you have Asad Shafiq at the side. We'll continue talking about that. End of 37 overs. It's 132 for 3 Central Punjab. So yes, I totally agree with you when you say that the authority gets divided. We see Basit Ali there quietly sitting at the back. Must be a worried man at the moment because Sindh are way back in this game. They need a wicket. They need to break this partnership to make a comeback. And in the morning session, I was having a chat with him and he said that even a 100-run lead, we won't mind that. We have done that before. Have a look at that face. He's serious. He's not happy at all. And he's not talking. Normally, whenever he's on cam, he loves to have a chat. Yeah, this is the team dynamics sometimes can work as we still watch Asad Shafiq persisting with his slow medium pace. Is getting a little bit of shape. Very slow medium pace.
But still, Shah Faisal, it's very surprising not to see Abrar Ahmed still. Because you're searching for a wicket. You need to break this partnership. Look what you're doing. You're using your very slow medium paces. Not on. Definitely not on. In the air, but in the gap. Sweeper is back there, but he won't be able to come around. That length is not what Asad Shafiq will get any success on. And the room on offer. Although Abid Ali wasn't in entire control of that stroke, but still earns himself a boundary. Surprise, surprise. He did get some extra bounce this time, Asad Shafiq. Surprised Abid Ali, but the form he is in, the placement was wonderful. No fielder there. Sohail Khan was there, but he was in deep covers. See, this is gentle bowling. It's not going to harm a player like Abid Ali. He'll easily negotiate these deliveries. A gully, short cover, short mid-wicket catching. That kept low. Chance! Mohammad Saad took a few yards from the non-striker end, but then went back. It was probably still Abid Ali's call. Confusion, but damage averted. We've seen this many times when Mohammad Saad is at the pitch. He sometimes is guilty of watching the ball. Almost sold Abid Ali down the river. 2 straight. Asad Shafiq being scored off either side of the wicket. Fawad Alam will have to make a call very quickly. This is definitely not a good session for Sindh. Not with the ball, not with captaincy also. Still believe they should have used Abrar. You've got a weapon in your armory and not using it. You're letting the game slip away from your hands. What are you doing? Runs again. Just the one on that occasion. 2 very, very established players wouldn't mind that at all. 138 for 3. Central Punjab trailing by 17 runs now. It's been a wonderful partnership by Abid Ali and Mohammad Saad. 92 at the moment, still unbeaten. Sindh have a lot of questions to be answered. And now finally, after an hour and 15 minutes of the play, we see Abrar Ahmed into action now. This will make things interesting. At least something different to be seen today now. 3 lackluster overs from Asad Shafiq for 13. Abrar 4 overs 19. His figures so far. He did bowl a couple of long hops, but not to forget the googlies that he bowled to Abid Ali, bamboozled him. One in particular which went over the top of the stumps, went through the gate. This could be interesting. Slip and short leg, ring of fielders on the offside. Mid-on, mid-wicket and fine leg on the onside. Googly, first delivery and a big shout. Well, didn't we ask about him a little while earlier? Wonderful start. This is what you want to see. Have a look at that flight. It came in. How did that miss the edge? That's the question. Luck has not been on their side. But then follows up with a short and wide one. Saad has carted it away. Will earn himself the boundary. That's Abrar for you. A beautiful googly and then a loosener. Yeah, this will happen because this art is a difficult one to control. But he will ball wicket taking deliveries too. That's his advantage. It's like having a leg spinner in your side. But this is more tougher than being a leg spinner, because you have to spin the ball through fingers. It's never easy. Do you think Fawad needs to give him more protection? We'll have to ask this from Ali. That point fielder is still in and is dead square, whereas that ball went behind square. Well, yes, you can do that because the trail is just 13 runs. You need to stop those boundaries and give confidence to Abrar.
because at the moment these two looks very settled. All they have to negotiate is just 1 over, because it's Asad Shafiq bowling from the other end. You got to put pressure from the both ends. That's what I asked for. Is that too much to ask? Not at all. But like you said, they trail just by 13 runs. This partnership is 96 of 151 balls, a very, very good rate as well. These two have really took the game away from Sindh, it may seem. Another googly. What I'm saying, the field that Fawad Alam has given him is pretty regulation. You can easily have some in-out field for a bowler like Abrar. 142 for 3. Absolutely. I think himself, he's at mid-wicket position. You would want a player like Mohammad Saad to go and play cross and create an opportunity. You got to show him that area that you can score runs, go hit him against the spin. But because Abrar spins the ball both ways, that could be the only reason that a fielder is placed at mid-wicket, just to give him more confidence, just to give him a little more protection towards leg side. But you need wickets. That should be your priority. And bowling change now. Sohail Khan is replacing Asad Shafiq. This could be a good combination. If you want Abrar to attack, probably you want your seamers to tie one end up and build pressure that way. You cannot chase wicket, like we said many times on day 2 on this wicket. You got to be patient and build pressure. Top edge, a surprise bouncer. It will run away to the fence. Abid Ali was not in control at all. A good line on that one from Sohail Khan. A lucky boundary. Luck has not been on Sindh's side since morning. This was a good bouncer to start off his spell. Sohail Khan surprised Abid Ali. And the type of form he is in, even the thick edges are going for boundaries. Wonderful, wonderful batting. It's a good ploy as well from Sohail Khan, because Abid Ali was advancing at him, trying to shorten the length. What will be the follow-up delivery on a length? At the moment, Sindh require a team effort to make a comeback in this game. Like I said, with the Abrar bowling, there's a chance of wicket at all time, but he can go for runs as well. Probably the fast bowler's role should be to just tie one end up. Sohail Khan, as we all know, he would always think positive. He always wants this wicket tally to go up. Abid Ali, like a wall. He's very good with his footwork. We saw early on he's standing deep in the crease. And then when the delivery is about to be deliveries, he makes that movement, comes to the front foot, uses feet, trying to get to the pitch of the delivery, unsettling the line and rhythm of the bowler. He's too experienced for this. Have a look at that. He's standing deep in the crease. And as soon as the ball delivery comes, he uses his feet, comes to the pitch of the delivery. That breaks the rhythm of the bowler. And he's done that very successfully. But the best thing about that is that his head, doing all those movements, remains very still. So he can line up the ball as soon as it leaves the bowler's hand and watch it all the way, which has allowed him that solidity. And also he's been able to put the bad balls away. Good thinking cricket from Abid Ali. Rotation of strike has also been a feature of his batting, of this partnership rather. That's why you look, 100 of partnership has been brought up in this over. Just 157 deliveries for 101 runs. It means that they put the bad balls away and they've rotated the strike. Acrobatic. That Mohammad Asghar, the left arm spinner for Sindh.
Still believe that Sindh has got it wrong in the morning session. The overs from Asad Shafiq has let them settle. And we know that what Mohammad Sahad and Abid are capable of once given the opportunities to settle down on the crease. 40 overs gone, 147 for 3. Central Punjab. Well, we've noticed this, that the first hour of play does bring wickets. And it's the first time that on second day the first hour didn't bring any wicket. 2, 3 and 1 in previous rounds. Sindh were the one who got 3 wickets in round 7, but none today. I think they bowled brilliantly though, Mir Hamza and Sohail Khan, but luck was not favouring them. They could have easily gotten a couple of wickets. There were wicket-taking deliveries, but luck just not on their side. Play and a miss. Another variation. Still that point fielder is up in the ring. I think someone is suggesting they want to push back to give him some protection. Look at that. Quicker through the ears. Abid Ali clearly beaten by the length and the zip of the wicket as well. See, this will happen. As long as Abrar bowls, he might give away the boundary deliveries, but he will bowl those wicket-taking deliveries too. That is the mystery about him. It's never easy to control this art, but doing it for consistently, he's done that. He's taken wickets. And Sindh would want him to get a few more here, break this partnership somehow. The trail is still 8 runs. With this partnership going strong, I wouldn't mind having that deep point fielder back. But as soon as the new batter comes in, he can push the fielders up. Abid Ali is very, very settled. He's already hit a Abrar for 1 boundary in that direction. That will give the youngster some protection. Because like Ali said, in between, there's plenty of good deliveries. But Sindh doesn't have a lot of runs to play with. So that is putting pressure on Abrar. Another good one. This over he strung 5 good deliveries. Abid is not reading him. Let me tell you, he's playing for 1 spin. That's coming into him. You can clearly see that he's not comfortable. That is what I wanted to see early from the day. Good bowling. This is good bowling by Abrar. Keeping things tight. End of 41, 147 for 3, Central Punjab. Looking at the way Abrar is bowling, that question is definitely more and more valid, that why he didn't bowl earlier at the start of the day when Sindh had some runs to play with. I can understand for the first half an hour you go with your 2 seamers, but the first bowling change should have been Abrar from the end that he's bowling, and from the far end where Sohail Khan is bowling, he can easily rotate the seamers. Another one off the face of the bat. Hassan will take the catch and Saad is gone. Could not get to that 50. Another very, very good bumper from Sohail Khan. Right on the money. And Saad couldn't get away. Wonderful bowling. This is experience for you. Saad was not expecting a shorter one. Bowled it short and surprised. Saad that I was in no position to play this pull shot. And was undone. Have a look at that. Surprising heavy delivery. He decided to go though, but it was probably too high for him to be playing that shot, and was in between no man's land rather, and lost his wicket on 49. A very good inning though. Much timely inning, much needed inning for Central Punjab. 49 runs he scored, was well caught by Mohammad Hassan off Sohail Khan, and it's 147 for 4 Central Punjab.
Saif Badr is the new man in. Fresh from a very good knock in the previous round, helping his side to the victory. 23 years of age, 20 matches, on cusp of getting to that first 1,000 runs. 29 as his average, 750s and 100. The best of 118. Big opportunity for him. That average needs to go up. Still young, still a lot of career to go, but it will go on. He has an important role to play here for Central Punjab. Stay there with Abid Ali. See, this is what we were talking about. Pressure from both sides had ended up getting them a wicket. It was as simple as that. Absolutely. I was about to say before the dismissal of Saad that sometimes it's very frustrating to watch Sindh, the way they go about their business, looking at the resources they have. But when it comes good, it looks spectacular. Like you said, for most part in the morning session, the bowling was good from the top two seamers. But then the plans afterwards really got Central Punjab off the hook. And it's that man again. Sohail Khan. He's always been there for Sindh. He's always been there with the team that he's played for. Right on the money. First delivery. Slightly playing around his bat. Saif Badr has got his innings going. But Saad, who really played beautifully, succumbed to this very good bouncer. Look at the line and the height as well. He was going about the hook shot, but then it got too big on him, and in the end he could do nothing. Saif Badr, young guy from Sialkot, a very talented, busy cricketer. Always search for runs. That's what you want to see from a young batter. But at the moment the role is different. Bowled nicely, handsomely between the two fielders. Will earn Abid Ali another boundary. Wonderful batting continues for Abid Ali. That was a great shot. He got onto it in a flash. Talking about the previous bouncer, the height. Look at the height of this. Just about perfect for Abid Ali to get on top of it, roll the wrists, and smashed it well in front of square. Great cricketing stroke. Abid Ali is the key here. As we are just approaching, scores are almost level. 3 runs the difference. That's the height. That's the bouncer. Superb from Sohail Khan. He showed Abid Ali the previous one, and this one a little bit of extra, and almost caught him off guard. This is excellent battle between one of the most experienced bowler against one of the most experienced batter at this level. Wonderful to see some good cricket from both sides. It had to be Sohail Khan to be getting a wicket because he was the one who looked like wicket alongside Mir Hamza. They bowled a beautiful spell early on. And now you talk about the experience, the skill, the know-how about your game. It is common with fast bowlers. Sometimes they give you a short pitch delivery, show it to you, get hit for a boundary. Like this one. Look, there was nothing much behind that bouncer, and Abid Ali couldn't got on top. But this one looked more effort and almost create that unforced error from Abid Ali. Excellent cricket. Big inside edge. Very, very optimistic from the big man. that expression from Abid Ali, what are you appealing for? He had a smile on his face. Surprised that Sohail Khan appealed for it. Have a look at that. Effort delivery, good length, nipped in. Hit him way outside the off stump. And inside edge, huge inside edge also. Have a look at the expressions from Abid Ali. Look at that. What are you doing? What are you appealing for? Very interesting. Abid Ali saw Sohail Khan appealing. He didn't see Khurram Manzoor appealing.
अब्रार काफ़ी मुश्किलात पैदा करते हुए बैट्समैनों के लिए पहली कामयाबी भी हासिल की सिंध ने। सोहेल खान इस मरतबा क्रीज से बाहर निकले सैफ बदर और यहाँ पर विकेट दे बैठे। यही हम बात कर रहे थे कि अबरार की जो आमद है ये विकेटें दिलाएगी सिंध को, और यही हुआ। सैफ बदर के खाते में एक और नाकामी दर्ज हुई। ये सैफ बदर, ये शॉट अगर आप देखें तो ये एक ऐसे बैट्समैन का शॉट लग रहा है जिसको स्पिन समझ नहीं आ रही किस तरफ जाएगी। निकल के मारने की कोशिश कर रहे थे, सीधा मिड विकेट पे कप्तान फवाद आलम के हाथ में। जल्दबाजी की सजा। बहुत ही ख़राब शॉट ये कहेंगे। सलाहियत यकीनन इनमें बेतहाशा है, लेकिन विकेट पर क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, हालात का तकाजा क्या है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें नाकाम रहे सैफ बदर और अब सर झुकाए वापस आए हैं और उनको रिप्लेस किया है फ़हीम अशरफ ने। पाकिस्तान की टेस्ट टीम के मुस्तकिल रुकन हैं, ऑलराउंडर हैं, और दूसरे एंड पर आबिद अली डटे हुए हैं। दो 2000 से जायद रन्स और 2 सेंचुरीज फ़हीम अशरफ के पास मौजूद है, और 31 से जायद की औसत है, जो एक ऑलराउंडर के लिए बहुत ही अच्छी तस्वर की जाती है इस क्रिकेट में। जैसा कि सुबह अली सलमान से बात हो रही थी, तो अबरार का किरदार आज के खेल के हवाले से बहुत ही अहम लग रहा था हमें, क्योंकि ये सरप्राइज बॉलर्स हैं। इनको पिक करना जो है बड़ा मुश्किल होता है। किस तरफ इनका बॉल टर्न होगा ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाथ से पिक करना, बड़े तेज़ रिफ्लेक्सेस और बैट स्पीड अच्छी चाहिए होती है आपको इनको हैंडल करने के लिए। देखते हैं कि और मज़ीद कितना नुकसान ये पहुंचा पाते हैं। ये बेहतर अंदाज था फ़हीम अशरफ का, और ये हम सैफ बदर की अगर ये देखिए डिस्मिसल पहले ही कमिट कर गए थे। शॉट खेलना, बॉल की लाइन को भी नहीं देखा, लेंथ को भी नहीं देखा, और बिल्कुल जब टांगों पर ये गेंद पड़ा तो कोई चारा नहीं था, और ये गेंद हवा में बैट से टकराई और बहुत ही शानदार कैच यहाँ पर साद खान का। तो ये विकेटों की झड़ी लग गई है अहमद सईद। या अमूमन इस विकेट पर, इस पिच पर देखा गया है कि एक विकेट गिरती है तो उसके साथ काफ़ी सारी विकेटें गिरती हैं, और अबरार एक बार फिर फ़हीम भी उसको पिक करने में नाकाम रहे। बॉल बाहर निकली पड़ के और फ्राई मारना चाहते थे ऑस्टम के बाहर। फिर एक बार ये देखिए बहुत ही बाहर बॉल थी, उसको ट्राई मारा। बड़ा अच्छा कैच साद खान का, पहली बार में उनके हाथ पे बॉल लग के ऊपर उछली और बड़ा अच्छा रिकवर किया, और कैच शानदार एफर्ट थी। और फ़हीम अशरफ बगैर कोई रन बनाए पवेलियन में वापस। 152 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। विकेट कीपर बैट्समैन अली शान अब आए हैं आबिद अली का साथ देने, जिनके साथी बदलते जा रहे हैं। और ये हमने यहाँ पर देखा है कि जब एक बड़ी पार्टनरशिप ब्रेक होती है तो फिर उसके बाद ये के बाद दीगरे 2-3 विकेटें गिरती हैं, और यहाँ भी ऐसा हुआ। अबरार की बॉलिंग को ज़रूर क्रेडिट देंगे अहमद सईद, लेकिन ये जो दोनों शॉट्स थी ये भी किसी भी तरह से इतनी अच्छी शॉट्स नहीं थी कि जिस पर जो है वो अपनी विकेटें गंवाई जाएँ, और ख़ास तौर पर जो नए जो बल्लेबाज हैं उन दोनों के लिए। बिल्कुल दुरुस्त। जैसे सिंध की बैटिंग के बारे में हमने बात की थी पहले कि एक आध विकेट के अलावा ज़्यादातर बैट्समैनों ने जो है अपनी विकेटें गंवाई हैं। मेहनत करने को तैयार नहीं थे, वक्त लगाने को तैयार नहीं थे। इसी तरह ये 2 विकेटें जो पिछली सेंट्रल पंजाब की गिरी, बहुत जल्दी है ये 2
दिन से हम यही बातें कर रहे हैं कि जल्दबाजी इस विकेट पे जो है वो आपको महंगी पड़ेगी हमेशा। जी हाँ, मोहम्मद साद तो अनलकी रहे हम कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद अबरार को हावी कर लिया अपने ऊपर। ये देखिए, ये फ़हीम अशरफ का बॉडी से काफ़ी दूर खेले, आगे गिरा हुआ गेंद, और इसको ड्राइव नहीं किया बल्कि इसको स्लाइस अगर हम कहें तो वो किया, और बिल्कुल जो गेंद था स्लिप की जानिब गया। फरहान, एक नुक्ते पे मैं जोर डालना चाहूँगा, यहाँ हमने पहले भी इस पे बात की थी, आबिद अली की न सिर्फ बैटिंग बल्कि उनका पूरा रवैया। ये देखिए, ये सैफ बदर पहले फवाद आलम को कैच दिया उन्होंने, और उसके बाद फ़हीम अशरफ बहुत ही लूज शॉट और बड़ा अच्छा कैच स्लिप में। तो आबिद अली की हम यही बात कर रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट से जब कोई नीचे आता है फर्स्ट क्लास खेलने के लिए, तो उसके रवैये में, उसके गेम को देखने की पूरी सलाहियत में और उसकी मेहनत और ज़ाहिर हुनर में एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए एक आम फर्स्ट क्लास प्लेयर और एक टेस्ट प्लेयर में। और आबिद अली में जो फ़र्क मैं देख रहा हूँ तमाम खिलाड़ियों में, वो बड़ा वाज़ेह है। उनकी पूरा रवैया जो है, इवन जब वो फील्डिंग कर रहे थे उस वक्त भी जो इनकी इन्वॉल्वमेंट थी खेल में, तमाम लोगों को साथ लेके चलना, कप्तान को मशवरा देना, बॉलर्स को समझाना, पूरे मैच में जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। और अब बैटिंग में आप ये फ़र्क देख सकते हैं कि जिस विकेट पर बग़ैर मेहनत किए, बग़ैर वक्त गुजारे रन बनाना किसी के लिए भी नामुमकिन है, उस पर उन्होंने भरपूर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है, वक्त दिया। और ये इनिंग्स कई सेंचुरियों से भारी है आबिद अली की। यहाँ पर ऑन साइड पर खेलते हुए 1 रन हासिल किया। और अगर हम आबिद अली को देखते हैं माजी में, तो ये बड़े खामोश तबा और अपने काम से काम रखने वाले खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के टूर से मैं इनको देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो यंगस्टर हैं, अब्दुल्ला शफीक इनके साथ ओपन कर रहे थे, तो उनको बता भी रहे हैं नौजवानों को। और यहाँ भी इनका जो एटीट्यूड है बहुत फ़र्क, और दोनों टीमों में बिल्कुल नुमाया फ़र्क साबित हो रहे हैं आबिद अली। और आज सुबह भी अहमद जब इनसे बात हो रही थी तो वो उनका यही कहना था कि ये फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट है, तो मैं क्यों ना इसमें खेलूं और मैं सीखना चाहता हूं। अभी भी वो यही बात करते हैं कि मैं अपने आप को मज़ीद बेहतर करना चाहता हूं, और यही शायद फ़र्क है दूसरे खिलाड़ियों में और इनमें। जी हाँ, ये एक मुसलसल जारी रहने वाला प्रोसेस है। अगर ये रुक जाए तो खिलाड़ी ज़ाहिर है वो फिर नीचे की तरफ, पस्ती की तरफ उसका सफ़र शुरू हो जाता है। वो सीखना तो आपने हर रोज़, हर मैच में, हर जगह से जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखनी ही हैं अगर आपको टॉप पे रहना है। जितने आप दुनिया के बड़े खिलाड़ी देख लीजिए, वो बॉल भी इस तरह होते हैं कि वो हर इनिंग से, हर अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से भी, इवन अगर आप क्रिकेट की फील्ड के बाहर भी बात करें, तो जो अच्छे बड़े खिलाड़ी होते हैं वो हर जगह से कुछ ना कुछ सीख के उसको जो है वो अपने काम में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए वो बाकी मानदा प्लेयर्स से मुख्तलिफ होते हैं। और बड़ा अहम है ये जो आपने ज़िक्र किया आबिद अली की इन्वॉल्वमेंट का। ये किरदार अदा करना होता है सीनियर्स को, क्योंकि ये याद रखना चाहिए तमाम प्लेयर्स को कि क्रिकेट तो ज़्यादा से 15 साल, 20 साल, लोग आपकी कारकर्दगी के साथ साथ आपके इस पूरे किरदार को बहुत याद करते हैं, याद रखते हैं कि आप कितने इन्वॉल्व थे, आपने यंग आने वाले खिलाड़ियों को कितनी मदद की, कितना उनका साथ दिया, कितना उनका सहारा बने। तो ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं और बड़ी खुशाइन बात है आबिद अली को देख के कि वो अपने साथियों की भरपूर मदद कर रहे हैं। लेकिन इनके नौजवान साथी इनसे लगता है कि सीखने पर रजामंद नहीं है, जैसे हमने आउट होने के मनाजिर देखे हैं। इस मरतबा इस गेंद को जाने दिया अली शान ने। 153 पर 6 सेंट्रल पंजाब, और बर्तरी महज 2 रन्स की है। अच्छा कमबैक सिंध ने आज किया है दोबारा। पहला सेशन जो कि बहुत ही डल लग रहा था, थोड़ा सा लग रहा था कि सिंध
के रवैये से मुझे एतराज़ था थोड़ा, बहुत ज़्यादा जो सुबह के वक्त पे एक प्रेशर डालना चाहिए उनको बैटिंग साइड पे, वो नहीं मुझे नज़र आ रहा था। लेकिन इन 3 विकेटों से दोबारा एक बार खेल में वापस आए। चलो चलो चलो। हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा ताख़ीर से लाए हैं अबरार को, और ये आगे मुंह में गिरा हुआ गेंद था, इसको खेला मिडॉन की जानिब। लेकिन ये भी हो सकता है कप्तान के जहन में कि थोड़ी सी ये विकेट मज़ीद ड्राई हो जाए तो फिर हम स्पिनर को लेके आए, शायद इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार किया। जो पहले जो 1 घंटा था उसमें अबरार से बॉलिंग नहीं करवाई गई, मुमकिन है ये वजह हो फवाद आलम के जहन में। जी हाँ, सुबह का पहला घंटा ज़रा अमूमन बॉल स्विंग होता है, विकेट से थोड़ी मदद भी मिलती है, तो आई एम श्योर कि उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे होंगे फवाद, क्योंकि ये तो बात है कि अबरार जो है वो विकेट के मोहताज नहीं है, पिच के नहीं है। जो हमने उनकी बॉलिंग देखी है आमतौर पे, जिस तरह की पिच ऑन की है, एक तो जो सरप्राइज एलिमेंट है इनका कि हाथ से पिक करना बड़ा मुश्किल होता है किस तरफ बॉल स्पिन होगा, तो ये हर विकेट पे ही तकरीबन मौसर किरदार अदा करते हैं। ये गेंद लेग स्टंप की तरफ जा रही है, वलीद यकूब का एक अच्छा फैसला, और ये बिल्कुल किसी भी विकेट के मोहताज नहीं है। यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे हमने देखा कि एक सीमिंग फ्रेंडली विकेट पर 11 खिलाड़ियों को आउट किया, और यहाँ भी 2 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं अबरार अहमद। देखिए पिक नहीं कर सके इस बार भी, बॉल खुशकिस्मती के नीचे जा रही थी लेग स्टंप से बॉल। और यहाँ अगर आप अबरार की पेस भी देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आमतौर पर मिस्ट्री स्पिनर थोड़ी ज़्यादा रफ्तार से गेंद करते हैं, तो क्या पिक करने में ये भी वजह है कि आसानी से इनको खेलना मुमकिन हो रहा है। तो रज़ाक सेंट्रल पंजाब के कोच ज़रूर आज अपने बैट्समैनों से ये लंच के दौरान गुफ्तगू करेंगे। खामोश तबीयत की आप बात कर रहे थे फरहान, तो रज़ाक भी काफ़ी खामोश तबीयत के हैं, बहुत ज़्यादा आप इनको बातचीत करते हुए प्लेयर से नहीं देखते, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस ज़ाहिर है अपने नौजवान खिलाड़ियों पे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि तजुर्बे के मामले में तमाम तर दुनिया में जिस तरह की भी क्रिकेट का आप जिक्र करें वो ये सब देख चुके हैं, और न सिर्फ देख चुके हैं बल्कि एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस उन तमाम फॉर्मेट्स में दे चुके हैं। मीर हमजा को बॉलिंग के लिए तलब किया है, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की आज इन्होंने सुबह के सेशन में। और जब भी हम अब्दुल रज़ाक की बात करते हैं तो वो हमारे कमेंट्री बॉक्स से ज़्यादा फासले पर नहीं है, तो देखते ज़रूर है हमारी तरफ, और एक मुस्कुराहट जो उनका ट्रेडमार्क है वो मुस्कुराहट ज़रूर हमें पास करते हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर्स का जब भी नाम लिया जाएगा तो उसमें रज़ाक का नाम ऊपर के चंद खिलाड़ियों में ही आएगा। शॉट गेंद था लेकिन इतनी रफ्तार नहीं थी, इतना बाउंस नहीं मिला, और कंट्रोल्ड शॉट खेलते हुए 1 रन हासिल किया आबिद अली ने। और अगर हम दोबारा अब्दुल रज़ाक की बात करते हैं तो लोग इन्हें धुआंधार बैटिंग के हवाले से जानते हैं, लेकिन 99 के वर्ल्ड कप में जो पिंच ब्लॉकर का इन्होंने किरदार अदा किया था कि नंबर 3 पर जाते थे, इसी तरह की बल्कि इससे ज़्यादा सीमिंग और मॉइस्चर वाली विकटें होती थी, जहाँ इनका किरदार था कि विकटें नहीं गिरने देनी। तो हर किरदार में ये मौजू बैठते रहे हैं, और हर रोल में कैरियर के हर स्टेज में पाकिस्तान के लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम दी है अब्दुल रज़ाक ने।
अलीशान अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सके स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है, काफ़ी अंडररेटेड विकेट कीपर रहे हैं। और जब हम सेंट्रल पंजाब की बात करते हैं, जब तक कामरान अकमल रेगुलर खेल रहे थे तो इनको ज़्यादा मौके नहीं मिले, और इस साल भी 3 विकेट कीपर्स आजमाए हैं सेंट्रल पंजाब की टीम ने, जुनैद अली, अखलाक और अलीशान। दिफा पर कार्बन है अहमद अलीशान, शायद यही हदायत इन्हें मिली है कि अब मज़ीद विकेटें ना गिरने पाएँ। जी हाँ, इसके अलावा चारा नहीं है इस विकेट पे। जैसे हम कल से बात कर रहे हैं कि वक्त गुजारना होगा, आपको अपने शॉट्स को कम करना होगा और अपने दिफा को मजबूत रखना होगा। अगर आप इस पे तो फ़र्क कभी इतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम स्कोर की बात करते हैं तो सिंध ने भी 155 रन्स 9 विकेट पर बनाए थे और यहाँ 6 विकेटों पर 155 पर पहुंची है सेंट्रल पंजाब की टीम। और अगर फ़र्क है तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े आबिद अली का, जिन्होंने आधे से ज़्यादा रन्स स्कोर किए हैं इस मजमूए में। 83 रन्स पर वो बैटिंग कर रहे हैं और शायद ऐसी ही कोई इनिंग्स सिंध की जो टॉप ऑर्डर है उसको दरकार थी, जो वहाँ से उन्हें नहीं मिल सकी। जितनी तारीफ की जाए आबिद अली की इस इनिंग की कम है। बहुत शानदार बैटिंग। 46 ओवर का इख्तिताम, 155, 6 खिलाड़ी आउट। शायद इन्हीं को देखकर कहा जाता था उकाबी निगाहें, और कुछ और टैलेंट तलाश करने के लिए भी अमर ये कहा जाता है कि उकाबी निगाहें होनी चाहिए। और ये गेंद पड़ने के बाद बाहर निकला और अब समझना शुरू हो गए हैं आबिद अली इब्रार अहमद की बॉलिंग को। कल का अगर आपको खेल याद हो फरहान, तो वाहिद बॉलर जिन्होंने थोड़ा सा आबिद अली को परेशान किया था एक सेशन में, एक स्पेल में अपने, तो अबरार ही थे। अपना बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही आराम से खेलते हुए नजर आए अब तक। और नए गेंद पर जो उनका जो स्पिन भी था वो भी शार्प हो रहा था। 1-2 गेंदें जो गुगली की अंदर आई उस पर भी आबिद अली मुश्किल का शिकार हुए। और ये बॉलिंग एक्शन है, और अगर आप इनका हाथ देखते हैं तो रिस्ट को रोल नहीं करते। आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे अमर इनका जो जब ये गेंद डिलीवर करते हैं, ये इसीलिए डिसेप्टिव हैं। ये बड़े आखिरी वक्त में जो है वो खुद भी ये उंगलियों के इस्तेमाल से इस बात का तयन करते हैं कि बॉल किस तरह स्पिन होगा। मुश्किल बॉलर हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अभी इब्तदाई दिन है इनके। जैसे जैसे खेलते जाएंगे मज़ीद सीखते जाएंगे। और T20 क्रिकेट में मिस्ट्री बॉलर्स का बड़ा दौर है, लेकिन ये भी पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा नहीं है। और ये थोड़ी सी नॉइज़ यहाँ पर ज़रूर पैदा हुई है, पैड से टकराया अंपायर का सिग्नल, लेकिन बैट एंड पैड था। 1 रन हासिल किया यहाँ पर आबिद अली ने, और इसके साथ इनिंग्स ओवर भी ख़त्म हुआ। 47 ओवर्स में 156 रन 6 विकेट गंवाकर सेंट्रल पंजाब 1 रन की बढ़तरी के साथ। सिंध की आज की कारकर्दगी अच्छी रही है अब तक, सुबह से लेके अब तक के खेल में। अच्छी नपी तुली बॉलिंग,
जिन एरियाज को उन्होंने हिट किया है, काफ़ी परेशान किया है उन्होंने बैट्समैन को। मीर हमजा अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, बैक फुट पर ये पंच किया है, गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब, फील्डर वहां पर आए अब्रार और इस असना में 2 रन्स का इजाफा किया आबिद अली ने अपने स्कोर में। बहुत ही अच्छा शॉट, बड़ी जल्दी लेंथ को पिक करते हैं आबिद अली। जरा सा पीछे गिरा हुआ बॉल था, बहुत तेजी से बैक फुट पे गए और पंच किया इसको मिड विकेट की जानिब, 2 रन हासिल किए। इस मरतबा अपना एंगल चेंज किया, अराउंड द विकेट गेन करने के लिए आए हैं मीर हमजा। फवाद आलम यकीनन खुश होंगे अपने बॉलर्स की एफर्ट से। अभी भी एक बड़ी रुकावट इनके राह में आबिद अली की शक्ल में मौजूद है। लेकिन अहमद, यहाँ पर अगर आबिद अली की विकेट मिलती है तो हम ये कह सकते हैं कि मैच बिल्कुल फिर बराबरी पर आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा आपने अभी जिक्र किया पहले कि यही फ़र्क है अभी तक। तमाशाई भी आज मौजूद है। और अहमद, जिस तरह अब्दुल रज़ाक अपनी बॉलिंग से डिसीव किया करते थे, यहाँ पर ये हमें भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने डग आउट से जुमले उछालते हैं हमारी जानिब। अगर हम देख सकें स्क्रीन पर अब्दुल रज़ाक को, शरारत अब भी करते हैं ये। देखो रज़ाक भाई, इनकी निगाहें मैच पर हैं और समाते हमारी जानिब है। रिजवान ने सेंट्रल पंजाब के पिछले मैच में स्टेट बैंक के ग्राउंड पर डबल सेंचुरी स्कोर की थी और आज आबिद अली को वही किरदार अदा करना होगा अपनी टीम के लिए। और ये शायद कह सकते हैं कि पहला ख़राब शॉट था आबिद अली का। बहुत ज़्यादा एहतियात से बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन खुशकिस्मत रहे इस गेंद पर 86 रन पर नाकाबिले शिकस्त हैं। 48 ओवर्स मुकम्मल हुए, 158 पर 6। अबरार एक और विकेट की तलाश में, ये इख्तितामी लम्हात हैं खाने के वक्फे से पहले। चाहेंगे कि एक और विकेट अपने नाम के आगे दर्ज करवाएं। फ्लाइटेड गेंद था, इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन अलीशान सर झुकाए हुए बैटिंग पर मौजूद हैं। 16 गेंदों का सामना कर चुके हैं, अभी तक कोई रन नहीं बनाया। इख्तितामी लम्हात, जैसे फरहान आपने कहा, एक सिली मिड ऑफ भी एक बुरा आइडिया नहीं होता इस वक्त। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ कैच पकड़ने के लिए खड़े हों।
बैट्समैन को नफसियाती दबाव में डालने के लिए भी बड़ा ज़रूरी होता है कभी कि उन पे कुछ फील्डर्स को इस तरह की पोजीशंस में लगाया जाए कि उस डर से कि कहीं सिले पे आउट ना हो जाए, बैट्समैन कभी कभी गलत शॉट मार देते हैं। जी हाँ, तीन फील्डर्स बैट के करीब तो ज़रूर हैं, लेकिन और मुझे अभी भी इनकी रफ्तार पर थोड़ा सा एतराज़ रहा कि अलीशान बहुत ही ज़्यादा मोहतात बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई सेट बैटर होता तो वो यकीनन इन गेंदों को बाउंड्री की राह दिखाता। और अब लेग स्लिप में चले गए हैं खुर्रम मंजूर, और ये ड्राइव किया, पहला रन हासिल किया अलीशान ने अपनी इनिंग्स का, और इसके साथ 49 ओवर्स भी अपने अख्ताम को पहुँचे। 159 पर पहुँच गई है सेंट्रल पंजाब, और ये मुस्तकबिल के स्टार्स, लेकिन ये अभी मसरूफ़ हैं अपने फ़ोन में। इससे पहले सेल्फीज़ ले रहे थे, और ये अच्छा साइन है कि जो स्कूल के बच्चे हैं, आजकल इम्तिहानों का ज़माना है, तो लगता है कि अपने एग्ज़ाम से फ़ारिग होकर ये आए हैं मैच देखने, और सेल्फीज़ का रिवाज है कहीं भी आप देखें। जी हाँ, यही वो उम्र होती है जब अगर आप ग्राउंड्स में लाने में कामयाब हो जाएं इन बच्चों को, अपने हीरोज़ को, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखें वो खेलता हुआ, मोटिवेशन इससे मिलती है। और ये तमाम खिलाड़ी जो आज यहाँ खेल रहे हैं, ये भी किसी न किसी वक्त अपने से पहले खिलाड़ियों को देखने ग्राउंड्स में जाया करते थे। बिल्कुल, और लाहौर में हमने देखा है अमर के जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ़ में क्रिकेट एकेडमीज़ हैं, तो उनके जो बच्चे थे वो तकरीबन हर मैच में आते थे, तो ये एक अच्छा साइन है। और यहाँ मैंने यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर और नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर देखा है कि वहाँ भी शाम के वक्त जो एकेडमीज़ के बच्चे हैं वो महजूज़ होते हैं क्रिकेट से और इन स्टार्स को देखते हैं। अलीशान आगे गिरा हुआ गेंद था, ड्राइव करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हुई, और ये पहली बाउंड्री हासिल की विकेट कीपर बैट्समैन ने, लेकिन ये बाउंड्री से पहले गेंद को रोक दिया। असद शफीक ने गलत साबित किया मुझे उन्होंने। आप मेरे ख्याल से तवक्को नहीं कर रहे थे असद शफीक जो है वो डाइव मारेंगे या इस कदर कोशिश करेंगे बाउंड्री रोकने की। हाफ वॉली, अच्छा ड्राइव अलीशान का, उतनी अच्छी फील्डिंग असद शफीक की। रवि, जो कमिटमेंट की हम बात कर रहे थे आबिद अली की, तो असद शफीक की जानिब से भी सीनियर खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के लिए 70 से ज़ायद टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, तो ऐसे सीनियर से ये तवक्को रखनी चाहिए कि वो जूनियर्स के लिए एक मिसाल सेट करें। ये बाउंसर था, स्विंग ज़रूर हुआ, लेकिन बाउंसर के मामले में इतने ज़्यादा ख़तरनाक साबित नहीं हुए मीर हमजा जितनी अच्छे बाउंसर सुहेल खान ने किए हैं इस विकेट पर। बाउंसर की जब बात करते हैं तो उसमें पेस के साथ साथ उसकी डायरेक्शन का बड़ा अमल दखल होता है। ये आगे गिरा हुआ गेंद था, दिफाई अंदाज से खेले, और आबिद के जहन में भी अब यही मौजूद होगा कि वो खाने के वक्फे के बाद भी बैटिंग करने के लिए आए, इसलिए ये जो आखिरी लम्हे हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ खेल रहे हैं। एक आसान सिंगल यहाँ पर हासिल किया, आहिस्ता आहिस्ता अपनी सेंचुरी की जानिब बढ़ रहे हैं आबिद अली, 87 पर पहुँच चुके हैं। और ये बासित अली, और आज इनकी बर्थडे है, और ये चाहेंगे कि जो इनके बॉलर्स हैं वो कोई इन्हें ऐसा तोहफा दें।
और जब ये बैटिंग करते थे अमर कहा जाता था कि बिल्कुल जावेद मियादाद के अंदाज से खेलते हैं, और पाकिस्तान को एक और जावेद मियादाद मिल गया, लेकिन उतनी क्रिकेट नहीं खेल सके, बदकिस्मत रहे। लेकिन इनके सलाहियत पर कोई शक नहीं। 163 पर पहुंच गई है सेंट्रल पंजाब की टीम 8 रन की बढ़तरी के साथ, और 50वां ओवर मुकम्मल होते ही अंपायर्स ने ऐलान कर दिया है खाने के वक्फे का, और ये सेशन मिला जुला हम कह सकते हैं। पहला 1 घंटा मुकम्मल तौर पर सेंट्रल पंजाब के बल्लेबाजों के नाम रहा, लेकिन दूसरे घंटे में 3 विकेटें हासिल की हैं यहाँ पर सिंध के बॉलर्स ने। लेकिन आबिद अली नाकाबिले शिकस्त हैं 87 रन के साथ, और इस सेशन में 27 ओवर्स का खेल हुआ, 84 रन बनाए और 3 विकेटें गंवाई सेंट्रल पंजाब ने। और रन रेट बहुत अच्छा रहा, रन जो ओवर रेट है वो भी बहुत उम्दा रहा। तो मजमूई तौर पर पॉजिटिव क्रिकेट देखने को मिली है इन पहले 2 घंटों में। जी हाँ, बिल्कुल दोनों टीमों का लड़ा जो है वो बराबर रहा है इस उसमें इन 3 विकेटों के जैसे आपने जिक्र किया हासिल करने के बाद ना। पहले घंटे में सिंध काफ़ी जो है वो दबाव में नज़र आ रही थी, उनको विकेट नहीं मिल रही थी, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ रही थी, लेकिन बड़ी अच्छा कमबैक, और अब मैच बहुत ही अच्छे मरहले में, बड़े सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है। और आबिद अली 87 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त है। मोहम्मद साद ने बहुत उम्दा इनका साथ दिया, बदकिस्मत रहे कि अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर पाए, लेकिन जो दीगर बैट्समैन आउट होने वाले हैं वो डबल फिगर्स में दाखिल नहीं हो सके। तो ये एक बिल्कुल मुतजाद बैटिंग लाइन की कहानी सुनाता है ये स्कोर कार्ड, अगर आबिद अली और दीगर बल्लेबाजों का मुआवजा किया जाए। 163 पर 6
and a very warm welcome back to the State Bank Sports Complex for that post-lunch session. And this is Sindh's team getting ready to take to the field at lunch. 163 for 6. As you look at the match summary, Central Punjab only leading by 8 runs. Those 3 wickets in the second hour of the first session really rocked Central Punjab's team. But Abid Ali is still there. He's seen it all. 155 for 9 declared yesterday was Sindh's attempt at setting up the match on the first innings. Sohail Khan and Abrar Ahmed taking 2 wickets. Abrar's introduction proved the key in that morning session. As we watch Abid Ali and Ali Shan, the wicketkeeper, only come to the crease just before lunch. 11 runs these two have added. They will have to be very, very careful in this session and give Central Punjab a big lead, because we know what Sindh can do in their second innings. Skipper Fawad Alam, very intense pep talk, and the intensity in the comm box is pretty good. When I have with me Pakistan's former under-19 skipper Ahmer Saeed. Very warm welcome, Ahmer. Thank you very much, Shah Faisal, and a very warm welcome to all the viewers. Morning session. Which way do you think it go? Very evenly poised, the match at the moment, and that session was dominated by the bat for the first hour, and then the second hour, as you said, the introduction of Abrar. Sindh made a comeback with those 3 wickets, and now it is all to play for. Absolutely right, Ahmer. This has been a seesaw battle. The contest has become pretty even. The clear difference between the two sides at the moment is Abid Ali. He's seen some good bowling in patches, some good batting, also some indiscriminate shot selection as well from both sides. But Abid Ali stands apart and he holds the key. Definitely. As we were talking about the previous match of Central Punjab on this ground, it was Rizwan who played that exceptional innings, scored 200 plus runs, and took his team not only to safety but to a position of strength from where they toppled the opposition. And Abid Ali is the key here as well. If he can get his team that substantial lead, it will be a bit difficult. We have seen Sindh making comebacks in second innings, but well, every day is not a Sunday. You're right. They did that in the 7th round here, but couldn't repeat the feat in the 8th round at the UBL. But now here, they have conceded the lead already with 4 wickets in hand. What we've seen gradually on this pitch, afternoon session, which is right now, onwards on to day 3, the batting becomes slightly easier, the bounce truer, and very little sideways movement. So this can be a turning point in the game when Sindh comes around to bat second time. Well, one thing that is constant here is that if you want to score runs, you've got to apply yourself. You will have to spend time on the wicket and try to cut down on those hairy-fairy shots outside off stump. Abid Ali starts off where he left off in the previous session. Abid Ali's innings is a good example. We saw Khurram Manzoor in one of the previous rounds. These are the types of innings that you'd have to play on these surfaces. The application, shot selection, discipline have to be spot on. Because when I say it getting easier for batting, there is still help for the bowlers. It's just they have to be precise with their areas
consistently, which of course is not very easy, but if they can do it consistently, they can still trouble the batters. Absolutely right. The battle between bat and ball, it continues through all the days on surface like that, and as you said, the areas and the length the bowlers are bowling needs to be consistent, and of course it has to be fuller, and at the same time batting only looks easy once a pair has spent some time on the wicket. Absolutely, and if you talk about, if I can explain it in a simpler way, if on a day one the bowlers have a bigger rectangle to aim in terms of their line and length, as the days progresses this box becomes smaller and smaller, and hitting it ball after ball becomes harder and harder. That's where the batsmen come into the game. But still that little help is always available. See that shape once again for Tabish. Fuller, the line was a little bit wider, didn't tempt Ali Shan. But what does this make is that it makes for interesting viewing, because you know that something is going to happen. The bowlers are always in the game, and when they do have that chance, the game moves quicker. Another aspect of having a senior partner like Abid Ali on the wicket with these youngsters is that he not only guides them, he not only nearly after every ball he goes and has a chat with them, but also he makes it look easy. At times when he's batting, the batsman on the other end thinks nothing is happening. In the air, but in the gap. Didn't hit it cleanly. It won't go to the fence. Ali Shan is that expensive drive that Amar was talking about. Lucky it didn't go to hand. Very lucky. That is the kind of shots you need to avoid early on, especially. It's 166 for 6. Change of end for Abrar after lunch. Took the wickets in the morning session from where Tabish bowled just now. He's coming from another end now. Not a bad idea, that one, changing end for Abrar. So Asad Shafiq, when he was bowling his WWs, few deliveries did keep low. Not that Abrar would be looking or planning his spell that way, looking for that spot which keeps low, but yeah, that surprise factor or that additional factor might help him. Starts off with the leg spinner. It's the first leg spinner that we saw turn so much. He's been able to turn the googlies prodigiously, creating enough doubt in the mind of Abid Ali. Brilliantly bowled. During lunch, we saw Coach Basit Ali looking very closely at the wicket, and we've noticed in past as well. Another leg spinner, play and a miss, turn and bounce. This is super stuff from the young leggy. Well, that's the wickets that fell in the previous session. Fahim Ashraf, what a loose shot that was, and a very good catch by Saad in the slips.
quick run, but Abid will have to wait because Shan didn't respond. No, both these wickets came of googlies. To the right-hander Saif Badr, lose an expensive stroke early doors. So was the case with Fahim Ashraf. Slightly shorter, didn't come on, another misunderstanding. Ali Shan is not game for it. Talking about those dismissals, you're right, it came off, both came off googlies and of bad shots. Anytime, number 7. The edge again. He's troubling Abid Ali. He's done that since last evening. That's why it was so surprising. It took Sindh so long to get him onto ball in that morning session. You're talking about those shots before lunch. Inexplicable, really. Off the outside edge again. How did it miss the off stump? Abid all at sea. Magnificent over. 166 for 6. Very, very good over. The line was immaculate, making him play forward, spinning it away most of the times. That is what he needs to do more. Abrar's last over may have little impact right now, but it's signs for what he can do further ahead in the game. Tabish Khan persisting with that good line. This is the combination, an ideal combination for Sindh. Experienced fast bowler who's known for his consistency, can keep building the pressure, and then young wizard Abrar can go and bamboozle the batters on the other end. There you see those leg spinners by Abrar. Abrar, those leg spinners, look at that. And, that's the other one, a bit shorter. And look at that, got the edge again and beaten this time. And every time it's getting closer and closer. And remember, Abid Ali is at 88, very well settled. And this is Tabish's role now. Teasing line and length. Ali Shan is not tempted at the moment, but the pressure will gradually build if Abrar continues to bowl the way he did in the last over. Batting partnerships are important, so are the bowling partnerships. Oh yes, definitely. How many times have we seen that one bowler creates the pressure and the other one gets the rewards? It's very important to complement each other and bowl in pairs, hunt in pairs, as they say. And like I start to make the point that Abrar's last over may not have any visible impact on this match at this moment. But Central Punjab, having seen that already, would be thinking that they don't want to see this in the 4th innings. They have to bat Sindh out of the game. Do you think they still have that opportunity, or they have lost it by losing 6 wickets, Amar? Yes, Sindh has come back in the game, definitely, with those 6 wickets. But it all depends on how deep and how far Abid Ali goes. If that tail can wag a bit, get a lead of 100 something. Nice tail back into the right-hander. He's setting him up for this all over. He's bowling the outswingers throughout the overs, finishing off with the in-swinger. Yorked him nearly. Well dug out in the end.
Worrying about that shape. It did shape in. Beautiful pictures here from State Bank Sports Complex. Clear blue skies. Signs of early winter. The sun is shining brightly. You cannot ask for a better setting. And Sindh have just done that with their bowling as well. 6 wickets at the moment. Late introduction of Abrar. Nonetheless, it made the impact. Abid Ali troubled by some flies. You don't normally see batters batting without a cap or a helmet these days. A rare sight. Inviting that big drive. Slight misfielding from Asad, but recovered quickly. The flight was very tempting. Excellent skills shown by the young leg spinner. Great battle. And the good thing is that he gets that turn. And gets that turn on any surface. Slightly shorter, but the field is set. That cover fielder is hanging a little bit deep. Abid Ali, the runs have dried up for him, it may seem. Looking around, that look on his face. The sign of a batsman in form. How quickly he picks the length. Even Abrar's length, he's been picking very well. Extra bounce once again. Looked like it was the slider. Hurried Abid Ali. Abrar has shown all his tricks. We've seen the googly, we've seen the leg spinner and the slider. Pretty decent control too. Abid will finally get that one to get him off strike against Abrar. Well, that was the last ball of the over, so 167 for 6. Well negotiated in this over by Abid. As we saw in the previous over, he was going more on that front foot. He was beaten a few times, but this time round, he stayed back in his crease in most of the deliveries, trying to play it as late as possible. That's better. Tabish Khan will keep asking those questions all day long. This is good from Sindh after lunch. Really impressive. That's what we were missing in the first hour of play and getting frustrated about. They seemed to come out without a plan. But now this is very, very good. Abid has been driving magnificently down the ground. This time probably Tabish did get a hand on it and onto the stumps at the non-striker end. Abid was disappointed. He could have had runs here. Beautiful shot for nothing. That half volley punched straight down and it hit the stumps on the other end. Well, they say play straight. How can you get runs if you can keep playing that straight? Tempting once again. Good from Tabish. Probing stuff. Abid getting closer to that 100. Abid has had so far 350s in this Quaid Azam trophy and 300s. To go with the one that he scored in Bangladesh as well. Rich vein of form.
Big shot. Did it hit the pad first? Still appealing, Tabish. Clearly that inward movement was troubling Abid Ali. Magnificent delivery. Jagging back in. He's got a smile on his face. There you see, very good delivery. Came back sharply, inside edge, onto the pad. But very well bowled. Set him up with those outswingers, and this one coming back a long way. Tabish has got that ball swinging. Straightens down the line once again. Single to Abid Ali. This is magnificent probing stuff there from Sindh. This is a contest of highest order. Tabish, as we all know, is an absolute artist with the ball. And he's up against Abid Ali in the best of his forms. Makes for wonderful weaving. Usually he's the sort of bowler who likes to bowl longer spells. And the more he gets into his rhythm, the more he starts doing things with the ball, and also his mind starts ticking. Big shot, another big in swinger. It hit him quite low, but the angle will have to be going down the leg side for umpire Waleed to rule in favor of the batter. Be an interesting replay, but clearly Tabish has got the ball swinging around. Yes, look at that angle. Came back, and yeah, I think it would have missed leg stump. Did swing in, but that angle created definitely must have created that doubt in the mind of Waleed Khan. Great over from Tabish Khan. Like we said, this combination is really working well for Sindh. Pressure from both ends. Very difficult for the batters. Abid has got a single, and Amar, I'll put it to you. Take Abid Ali's innings of 90 out of this equation and look at where the game would have been. Central Punjab. Yeah, they would have been reeling at this time, and the game played so far, Abid Ali has been the difference, and Abid Ali will be the difference when this innings end. You will see that if he does well, if he scores that big 100, only then can Central Punjab get to a position of authority. Decides to go big. This was in the arc, and it will roll away over the bowler's head for a boundary. Ali Shan chancing his arms. He got away with it on that occasion. I don't think Abrar will mind that. Definitely not. But Ali Shan has been kept quiet for a while. Usually likes to play shots, but I think he picked that delivery up well. Bit flighted delivery. Got that extra bit of time and placed it very well. Yeah, he chose the right shot and the right area. No ball from Abrar. We've seen this before. He does have a tendency to overstep at times. Yeah, when we're talking about Abid Ali's innings, as we watch at this replay, clearly over the line. It emphasizes a couple of things. One thing is that how good a knock that is. And secondly, if you're a Sindh supporter, you would think that you're right in the game. That one innings is the difference. Yes, definitely I am a Sindh supporter. Shah Faisal, I'm a Karachiite. You should be pretty happy with the situation. I know the lead is 19. Sindh is trailing by 19. It's once again very proactive from Ali Shan. Premeditated. Each and every run is very, very important here.
in the context of the game. It's the cheekiness of a wicketkeeper coming out on that occasion. It will be very handy when handling Abrar. Nicely played by Ali Shan. 176 for 6. Look at Abid Ali. Not the ideal technique for running, but I think keep doing things differently, keep him interested. And that's the top run scorers of this year so far in the Quaid Azam Trophy. Abid Ali right up there. Sahibzada Farhan. But the number of innings, look at Abid Ali. Look at that average. 140. Very calm, very collected. Other than that little phase against Abrar, Abid Ali has really looked the part. Just head and shoulders above anyone else who's batted in this match. And the thing that Amar emphasizes, once again in the ears of Ali Shan, trying to keep him composed. Two slips Senegali. Ali Shan has looked increasingly confident and comfortable. Look at the number of balls he's played, 43. Yes, he has put in the hard work. He's had a good look at all the bowlers nearly now. It's time to continue this rather than throwing it away now. But I think Abid Ali will make sure that he doesn't do anything silly. Keeping low. Tabish is not very tall anyway. This kiddie bowler. Khurram Manzoor has run all the way from slips up to skipper Fawad Alam and Tabish. He's got some plans. There you go, the experienced man. What it could be, Amar? I'm not sure. I don't know what he must be saying, because he's doing all the right things. He's asking all the right questions, setting the batsman up. He's bringing that ball in very cleverly. And Khurram Manzoor has now moved to that mid-wicket position. Probably what he was implying, that the edges might not carry, and with that in-swinger, he needs some catching options in front of wicket on the onside. That's where he's moved into. Big shout! This is very close, and the finger has gone up. It did look very close with the naked eye, off the back foot. Ali Shan was stuck on the crease, and Tabish's persistence has paid off. Yes, excellent bowling by Tabish. Look at that. Yes, that one again. Jacked back in. Plumb in front. Excellent bowling, and he has been doing that ever since we came back after lunch. Beautifully done that in-swinger. Ali Shan out for 12. 177 for 7.
Ahmad Safi Abdullah, best of 83. That's the only 50. 611 runs. That average could be better. He has some potential with the bat. And that left hand, right hand combination may just be the answer for Central Punjab. The game has moved along very, very quickly on this second day. Well, the way Tabish Khan is bringing that ball in for the right-hander. Abid Ahmad Safi, beg your pardon, will have to be very careful. Now with the left-hander in, that slip cordon has been strengthened. Look, 2 slips, 2 gullies. Skipper Fawad Alam ringing the changes. Sindh looking completely different unit after the lunch break. The runs have dried up. The lead of just 22. They're right back in it. If you ask me, they're slightly ahead in the game. Central Punjab will need to fight back. Wasted effort. He'll be disappointed with it. This was a big effort delivery, but the line was wrong. Look at that one. Previous delivery came back in. Oh, on that back leg, right in front. Excellent bowling by Tabish Khan. Beautiful delivery that. There's a clear daylight between bat and ball. Change of angle. Ahmad Safi Abdullah. That's one way he knows to play, and this is what he started off with. A boundary to finish off the over. A streaky one, but Ahmad will take it. 181 for 7. बढ़ जाए बड़ा हुआ है हाँ वो वैसे कम कर मैं जाऊँ ड्यूटी पे 3, 2, 1 आधे पे ये एक बेहतरीन कमबैक है जो सिंध ने इस मैच में किया है। लंच से पहले आधा घंटा, लंच के बाद से सेशन अभी तक बहुत शानदार रहा है सिंध के लिए, लेकिन उनका मुकाबला आबिद अली के साथ है जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन बारी ली है। 92 रन पर मौजूद है, 164 बॉलों का सामना किया। 1 मैन आर्मी का रोल निभाया यहाँ से। मेरे साथ फरहान निसार मौजूद हैं। बहुत मेरिट पे खेलते हैं, हर बॉल को मेरिट पे खेला है आबिद अली ने। बहुत शानदार इनिंग रही है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने अली, और मेरिट पर खेलते हैं, अपनी लिमिटेशंस का पता है, और सब्र जो टेम्परामेंट है वो इनका सबसे बड़ा हथियार है। ये देखिए किसी भी लम्हे रिलैक्स नहीं होते। यह फ़र्क साफ जाहिर है इंटरनेशनल मटेरियल और डोमेस्टिक मटेरियल में बैटिंग का। उन्होंने दिखाया है कि अपनी फॉर्म वो बिलोंग करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, और ऐसी इनिंग्स इन मुश्किल कंडीशंस में जो इनिंग इंसान खेलता है वही बताता है कि उनकी अहलियत क्या है, असल स्किल लेवल क्या है। रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक शानदार रही, बैट बॉल्स में चौके मारे शानदार रहे, बट साथ नहीं दिया, ज़्यादातर लंबा साथ नहीं दे सका कोई बैटर। जी हम नौजवान बल्लेबाजों की बात कर रहे थे, इमरान डोगर की बात करें, रिजवान हुसैन की, सैफ बदर की, तो ये वो खिलाड़ी थे जो सीख सकते थे आबिद अली के साथ खेलते हुए, लेकिन कतन भी इन्होंने नहीं सीखा। और ये जिस पोजीशन पर सेंट्रल पंजाब की टीम है, इसमें जो इनका जो टॉप ऑर्डर था उसका बहुत बड़ा कसूर है, जिसकी वजह से ये 182 पर 7 का स्कोर हम देख रहे हैं। जी अगर स्कोर कार्ड की भी अगर नज़र डालें तो 4 रन इमरान डोगर ने बनाए, 4 रन रिजवान ने बनाए, 12 रन अली ज़रियाब ने, 1 रन सैफ बदर ने, फ़हीम अशरफ बगैर किसी रन बनाए। ये बड़ा शॉट है हवा में, ये आउट हो जाएंगे। खुरम मंजूर ने आसानी से कैच
इतनी आसानी से तो नहीं लिया लेकिन कैच ले लिया और अली ज़रियाब की इनिंग का इख्तिताम हुआ। एक और बुरा शॉट, एक और पूर एग्जीक्यूशन, गेम अवेयरनेस की बिल्कुल समझ नहीं कि क्या किस तरह से बैटिंग करनी चाहिए और अपनी विकेट बआसानी गंवा दी। ये ख़राब क्रिकेट है, बहुत ज़्यादा ख़राब शॉट है। ये देखिए स्पिन का बिल्कुल भी उन्हें पता नहीं चला कि गेंद किस जानिब स्पिन हो रही है। इससे पहले भी एक ऐसा शॉट खेला, उस पर किस्मत ने इनका साथ दिया और जिस अंदाज से इन्होंने फवाद आलम को आउट किया था बिल्कुल उसी अंदाज से आउट होते हुए वापस जा रहे हैं 4 रन्स बनाने के बाद और सेंट्रल पंजाब मजीद मुश्किलात में 182 पर 8। वकास मकसूद नए आने वाले बैटर हैं, भारी जिम्मेदारी होगी अब इनके कंधों पे भी कि कैसे आबिद अली के साथ दिया जाए उनका, क्योंकि जिस तरह की शॉट्स अब हम देखने को हमें मिल रही हैं सेंट्रल पंजाब से, ऐसा लगता नहीं है कि उनका मूड है ज़्यादातर बैटिंग करने का। 1148 रन उनके हिस्से में, 150 अपने करियर में कर चुके हैं और इनकी वो इनिंग आपको याद होगी जो आखिरी साल इन्होंने फाइनल में केपी के अगेंस्ट खेली थी, हसन अली का साथ दिया था, लेकिन जब मैच टाई हो गया था तब एक गलत शॉट मारा था, वरना सेंट्रल पंजाब शायद वो मैच सिंगल हैंडेडली चैंपियन रहता, टाई हो गया था वो मैच। लेकिन यहाँ पे रोल डिफरेंट है, आबिद अली के साथ खड़े रहना है और गलत शॉट मारने से परहेज करना है और साथ देना इन्हें आता है। जैसे आपने फाइनल की इनिंग्स की बात की, उससे पहले उसी सीज़न में यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर भी उन्होंने सदर्न पंजाब के ख़िलाफ़ कोई 40 के आसपास रन स्कोर किए थे। तो यहाँ पर आबिद अली की सेंचुरी भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ साथ जितने ज़्यादा रन्स यहाँ पर सेंट्रल पंजाब की टीम बनाएगी वो चौथी इनिंग्स में उतने ही कम रन उन्हें करना होंगे। तो ये चीज़ वकास को भी ज़हन में रखना होगी कि वो यहाँ पर साथ दें आबिद का और आबिद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर करें। लेकिन इब्रार 3 विकेटें लेकर इस वक्त टॉप पर है, जहाँ शानदार स्पेल रहा है। सिंगल हासिल कर लेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करते हैं आबिद अली, लेंथ को बहुत जल्दी पर रखते हैं और इसी बॉल पे हमने यही देखा कि जल्दी बैकफुट पे गए और सिंगल हासिल किया। यहाँ पे ताबिश भी बहुत जल्दी से अपना ओवर करना चाहते हैं क्योंकि प्रेशर बना हुआ है। ये देखिए इस शॉट को आप क्या कहेंगे, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल उनकी तरफ से बाहर जा रहा था, अगर आप स्लॉग स्वीप करेंगे तो ये बॉल तो खड़ा ही होगा। ये बहुत ख़राब क्रिकेट है क्योंकि ये ऐसा पिच नहीं है फरहान जिसपे आप आते ही फ्लुएंट तरीके से शॉट्स मार सकें। आपको अपना वक्त लेना है, बारी लेनी है, सेट होना है, फिर आपको कहीं जाके बुरे बॉल का वेट करना है और शॉट्स आपको मिलेंगे। जब एक सेट बैटर आपके साथ क्रीज पर मौजूद है तो आपका काम यही है कि उसको सपोर्ट करें। और ये जो शॉट खेला, ये लेफ्ट हैंडर आमतौर पर मिड विकेट पर ऐसा शॉट खेलते हैं, लेकिन उस वक्त करते हैं कि जब गेंद बिल्कुल उनके जोन में होता है, तीनों स्टंप्स के दरमियान गिरा होता है। ये ऑफ स्टंप से बहुत बाहर गेंद था जिसको ख़राब शॉट खेला अहमद सफ़ी अब्दुल्ला ने और एक और विकेट दी अबरार को। नहीं, आइडियली तो ये होता है कि एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला जाता, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वे स्लॉग स्वीप करेंगे, अपनी विकेट थ्रो कर दी, गिफ्ट कर दी अबरार को। ताबिश खान अच्छा बाउंसर है, बहुत ही शार्प बाउंसर, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आबिद अली और शायद यही आबिद अली को समझा रहे हैं कि भाई इतना भी हल्का नहीं लेना है, पेस अच्छी खासी है। कदमों का इस्तेमाल फास्ट बॉलर्स के लिए को पसंद नहीं आती है ये बात। और पहले गोला देखे गेंद की सूरत में फेंका ताबिश खान ने और उसके बाद और आबिद अली क्रीज से काफ़ी बाहर निकल आए थे। अगर क्रीज में रहकर खेलते तो शायद आसानी से निगोशिएट करते। और फिर लफ्ज़ों की गोलाबारी भी की ताबिश खान ने कि वो बता रहे थे कि अगरचे उनकी उम्र ढल चुकी है लेकिन गेंदों में काट वही है, और आबिद ने हमेशा की तरह मुस्कुरा कर जवाब दिया। एक बार फिर शॉर्ट डिलीवरी थी, ये अच्छी बैटल है, ये मज़ेदार बैटल है दोनों प्लेयर्स की जानिब से, दोनों बहुत एक्सपीरियंस हैं। आबिद अली अपनी सेंचुरी की तरफ गामजन है, ताबिश खान को विकेट्स चाहिए, तो बहुत ही शानदार बैटल जारी है। अच्छी लेंथ से किक ऑन हुआ था ये बॉल, वो पुल शॉट की पोजीशन में आ गए थे लेकिन चेक शॉट किया एंड पे। ऑल्दो बहुत बड़ा गैप है मिड विकेट पे, डीप स्क्वायर लेग जरूर मौजूद है लेकिन मिड विकेट एरिया खाली है। और ये देखिए पुल करना चाहते थे लेकिन ये गेंद तेज आया, आबिद के सामने ताबिश ने और अपनी रफ्तार का मुजाहरा किया है और इस मरतबा आगे गिरा हुआ गेंद, तो वो लगता है कि जो
जंग थी अब उसमें वो कुछ अब मध्यम हो गई है इस गेंद के बाद। बिल्कुल नहीं हुई है फरहान, यकीन रखिए, क्योंकि ये दाव पेच तो इस्तेमाल करने होंगे, क्योंकि दोनों बहुत तजुर्बेकार प्लेयर हैं। ताबिश खान की अगर हम बात करें, बहुत मंजे हुए बॉलर हैं। आबिद अली बहुत शानदार फॉर्म में, एक्सपीरियंस उनके पीछे है, रन्स करने आते हैं, सिचुएशन से निकलना आता है, लड़ना आता है। देखिए 3 फील्डर्स डीप स्क्वायर लेग पे रखे हुए हैं, मिड विकेट पे भी, स्क्वायर लेग पे भी और फाइन लेग पे भी। इस पर तो फिर क्रीज से बाहर निकले, कदमों का इस्तेमाल किया और 2 फील्डर्स के दरमियान से गेंद ने रास्ता बनाया 4 रन्स के लिए। ये बेहतरीन शॉट रहा, गैप ढूंढने में कामयाब रहे, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, पिच ऑफ द बॉल पे पहुंचे और मिड विकेट के जानिब अच्छी प्लेसमेंट की और 4 रन हासिल किए। तो इस ओवर की जो बैटल है वो आबिद अली ने जीत ली है इस बाउंड्री के साथ। प्लेसमेंट शानदार रही फरहान जी। अभी आपने तस्करा किया था कि 3 फील्डर्स ऑन साइड पर बाउंड्री लाइंस में मौजूद हैं, ये 2 फील्डर्स को बाइसेक्ट करता हुआ ये गेंद बाउंड्री की जानिब गया। एक बार फिर फील्डर वहां मौजूद है, इस बार बॉल उनके हाथ में चला जाएगा और फाइनल कामयाबी ताबिश खान ने हासिल की, अपने एक्सपीरियंस को लाते हुए और आबिद अली की विकेट हासिल की। आबिद अली थोड़ा एजी हो रहे थे, बड़ा शॉट मारना चाह रहे थे, सेंचुरी बनाना चाह रहे थे जल्द से जल्द, लेकिन ये बैटल फाइनली ताबिश खान ने जीत ली। जी और जिस तरह से सिंध के खिलाड़ी उनको दादे तहसीन दे रहे हैं, इसका यही मतलब है कि एक अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन ये सेंचुरी की जानिब जा रहे थे इसलिए ये शॉट खेला और अपनी विकेट गंवाई और इसके साथ ही दोनों बैट्समैन बाहर आ रहे हैं। तो यूं इनिंग्स का भी इख्तिताम कर दिया है, सेंट्रल पंजाब ने डिक्लेयर कर दी है अपनी इनिंग्स। आबिद अली की शानदार बैटिंग, 174 गेंदों पर 98 रन, 13 बाउंड्रीज की मदद से। जहाँ शॉट तो ऑन था, लेकिन यहाँ पे कप्तानी की भी दाद देनी होगी, मिड विकेट को भी पीछे रखा था, वो जानते थे कि थोड़ा एजी हो रहे हैं और बड़ा हिट मारने की कोशिश कर रहे हैं आबिद अली। बहुत ही शानदार इनिंग रही आबिद अली की जानिब से, अनलकी रहे कि अपने 100 रन मुकम्मल नहीं कर सके, 98 रन की इनिंग खेल सके और एक ऐसे स्कोर कार्ड में जहाँ पे सिर्फ उन्हीं के स्कोर हों और साथ मोहम्मद साद के 49 रन, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही शानदार इनिंग रही। यहाँ पे दाद देनी होगी सिंध के कमबैक को भी। कल ऐसा लग रहा था कि जैसे सेंट्रल बहुत बड़ी लीड लेने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन रिस्ट्रिक्ट किया, विकेट्स हासिल की लंच से पहले सेशन में भी, लंच के बाद भी, और सिर्फ 32 रन की लीड पे उनको रोका गया। ये कामयाबी होगी सिंध के लिए। और अली आमतौर पर ये दूसरा सेशन जो है ये बैटिंग के लिए साजगार रहता है, लेकिन यहाँ पर सिंध ने सब उलट पलट कर रख दिया। 187 के स्कोर पर इनिंग्स डिक्लेयर करना पड़ी सेंट्रल पंजाब को, जिसमें आबिद अली नुमाया थे और 147 पर 3 विकेटें गिरी हुई थी। तो उस वक्त यूँ लगता था कि शायद एक बड़ा टोटल सजाने में कामयाब होगी सेंट्रल पंजाब की टीम, लेकिन अब्रार और ताबिश खान को दाद देना होगी जिन्होंने इस मजमूए पर महदूद किया और मजबूर किया सेंट्रल पंजाब को कि वो इनिंग्स को डिक्लेयर करें। जहाँ बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है सिंध की बॉलिंग साइड की जानिब से, जितनी भी तारीफ की जाए कम है वो। स्पेशली इब्रार अहमद की बात करें, सोहेल खान की बात करें, मीर हमजा का शानदार स्पेल रहा जो उन्होंने अर्ली ऑन किया था आज सुबह। हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने विकेट्स हासिल किए आज के दिन में, बहुत ही शानदार है। ये मोहम्मद साद आउट होने वाले पहले प्लेयर थे, अच्छा बाउंसर था, शार्प बाउंसर था ये सोहेल खान की जानिब से, कमिट कर गए थे साद, विकेट गवाई अपनी। सैफ बदर एक खराब शॉट खेले, काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेड था सैफ बदर से। कहीं अशरफ भी बहुत जल्दी में लगे, रन्स बनाने की कोशिश की, लेकिन इब्रार अहमद को जज नहीं कर पाए। अली शान, ये बहुत शानदार डिलीवरी थी, पढ़ने के बाद अंदर की तरफ आई तेज़ी से। एक और ख़राब शॉट अहमद सफ़ी अब्दुल्ला की जानिब से, साथ दे सकते थे आबिद अली का। और ये आखिरी विकेट गिरने वाली, 3 फील्डर्स मौजूद थे और सीधा असद शफीक के हाथ में शॉट खेल बैठे और अपनी विकेट गवा बैठे आबिद अली। बहुत ही शानदार इनिंग रही। बॉलिंग कार्ड का अगर हम जिक्र करें तो 6 बॉलर्स का इस्तेमाल किया। सोहेल खान ने 2 विकेट्स हासिल की 50 रन देकर, 1 विकेट हासिल की मीर हमजा ने 36 रन देकर, अब्रार अहमद ने 3 विकेट्स हासिल किए 37 रन देकर, और लेजेंड ताबिश खान ने 3 विकेट्स हासिल किए 46 रन देकर। ओवरऑल एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही, एक शानदार कमबैक कहेंगे हम सिंध की जानिब से। उन्होंने 187 रन तक रिस्ट्रिक्ट किया सेंट्रल पंजाब को। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, जो ही जब सिंध अपनी इनिंग का आगाज करेगा हम आपको एक बार फिर ज्वाइन करेंगे।
एक बार फिर आपको स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खुशामदीद कहते हैं, जहां पे खबर यह है कि सिंध अपनी दूसरी इनिंग का आगाज़ करने जा रहा है। मैच समरी की अगर हम बात करें, पहली इनिंग में 155 रन 9 खिलाड़ी पे डिक्लेयर की थी सिंध ने। सोहेल खान ने टॉप रन गेटर है, 65 रन की इनिंग खेली। फवाद आलम ने शानदार 32 रन बनाए। मोहम्मद अली की 3 विकेट्स, मोहम्मद साद की सरप्राइजिंग 3 विकेट्स। जवाब में 187 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी सेंट्रल पंजाब ने। आबिद अली की बहुत ही बेहतरीन इनिंग रही, 98 रन बनाए उन्होंने। अनलकी रहे कि 100 रन मुकम्मल नहीं कर सके। मोहम्मद साद ने अच्छा साथ निभाया, 49 रन बनाए। इब्रार अहमद की 3 विकेट्स और ताबिश खान की भी 3 विकेट्स। और खबर यह है कि सिंध की जो ट्रेल है अब 32 रन की है। मेरे साथ फरहान निसार मौजूद है। फरहान, यहाँ पे अब इवन हो गया है मैच, यहाँ पे ये मैच किसी भी तरफ जा सकता है। पिछले 3 राउंड्स में भी हमने यही देखा है और तजर्बाकार खुरम मंजूर 186वां फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे हैं। 11,500 के आसपास रन्स हैं, 38 की औसत है, 30 सेंचुरियां स्कोर कर चुके हैं, 53 मरतबा 50 रन को अबूर किया और 250 इनका करियर बेस्ट है जो एक डे नाइट मुकाबले में इन्होंने स्कोर किया था। यहाँ वकास मकसूद का सामना करेंगे खुरम मंजूर। पहला बॉल इस दूसरी इनिंग का और रन्स मिल जाएंगे पहले ही बॉल पे। बहुत ही शानदार ड्राइव खेले हैं, थोड़ा आगे गिरा हुआ बॉल जिसे फुल ब्लडेड ड्राइव किया है। 2 रन हासिल कर लेंगे खुरम मंजूर। अच्छा आगाज खुरम मंजूर की जानिब से। और अब अगरचे 32 रन पीछे थी सिंध की टीम इस मैच में, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मैच अब एक तरह से बराबर हो गया, तो अब सिंध की टीम ज़्यादा पॉजिटिव हमें खेलती हुई दिखाई देगी इस इनिंग्स में। आप बैटिंग की अप्रोच भी देखिएगा, क्योंकि जब आज लंच हुआ तो यकीनन सेंट्रल पंजाब के जहन में होगा कि कोई 350 के आसपास रन्स करेंगे। और खुरम के साथी हैं एहसान अली, जिन्होंने अभी लाहौर में हमारी आंखों के सामने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की थी। तेज़ अंदाज से बैटिंग करते हैं, अभी पाकिस्तान सुपर लीग का भी हिस्सा बने हैं। 1750 रन हैं, 5 इनकी सेंचुरीज हैं और 303 बेहतरीन स्कोर। कन्वर्जन रेट बहुत बेहतरीन है। शो कराते हैं कि जब एक दफ़ा आगाज़ उनको अच्छा मिल जाए तो नहीं रुकते हैं। उनका मुकाबला होगा वकास मकसूद से। 292 विकेट्स ले चुके हैं अपने करियर में, 11 बार 5 विकेट्स और बेस्ट जो है वो 9 विकेट्स हैं जो इसी ग्राउंड में उन्होंने हासिल किए हैं। खुरम मंजूर, अच्छी क्रिकेट है ये। 2 रन यकीनी मिलने चाहिए, यहाँ बहुत आसानी से 2 रन मुकम्मल कर लेंगे। और सिंध ऐसी पोजीशन में पहले भी रह चुका है, लेकिन इस बार थोड़े कॉन्फिडेंट होंगे कि लीड जो है, जो ट्रेल है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 28 रन हैं। इनफैक्ट इस 2 रन के बाद 26 रन की होगी, 28 रन की ही रहेगी इनफैक्ट। तो वो काफ़ी पॉजिटिव होंगे जैसे आपने कहा। तो यहाँ से वो चाहेंगे कि एटलीस्ट 300 रन का हदफ दिया जाए चौथी इनिंग के लिए सेंट्रल पंजाब को। बिल्कुल, जिस तरह की बॉलिंग है सिंध के पास, पेस अटैक उनका बहुत ज़्यादा तजर्बेकार है और उसके साथ मिस्ट्री स्पिनर उनके पास हैं। 3 विकेटें ली हैं इब्रार ने, तो सिंध की टीम अब थोड़ा सा अपर हैंड उनको मिल गया इस मुकाबले में। ओह, एज अ बैटर आप ये नहीं देखना चाहते हैं कि आपकी नज़रों के सामने बॉल इतना लो रह जाए, कि अच्छा साइन नहीं है, स्पेशली सेंट्रल के लिए जिनको लास्ट बैटिंग करनी है। और ये गेंद पड़ने के बाद बिल्कुल भी बाउंस नहीं हुआ। और सुबह जब अलीम विकेट के करीब गए थे तो ये वो स्पॉट्स थे जो सुबह हमने भी देखे थे, और अब ये जो स्पॉट्स हैं वो अपना रंग दिखाना शुरू हो गए हैं। जी, सबसे ख़तरनाक बात होती है एक बैटर के लिए जो अनइवन पिच होता है, इसमें लो रहता है बॉल, क्योंकि डबल पेस विकेट, स्विंगिंग डिलीवरी, सीमिंग पिचेस, इन सब को निगोशिएट इंसान कर लेता है, लेकिन इस तरह की डिलीवरीज को निगोशिएट नहीं किया जा सकता। आप दुनिया के बेहतरीन बैटर भी होंगे, लेकिन आपको इस तरह का बॉल होगा, ये पैचेस जिनकी आप बात कर रहे थे, तो जो भी इन पैचेस पे बॉल लग के लो रहेगा और इस हद तक लो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बैटर के लिए सर्वाइव करना। मुमकिन है कि हम अभी स्क्रीन पर उन पैचेस का जो तफसील है, जो डिटेल्स है वो ना देख सके, लेकिन ये कुछ स्पॉट ऐसे ज़रूर मौजूद हैं इस पिच पर जो किसी भी लम्हे बैट्समैन के आसान ख़ता कर सकते हैं। अभी तो आसान ख़ता करने में नाकाम रहे हैं। पहले ओवर का इख्तिताम हुआ 4 बगैर किसी नुकसान के सिंध। खुरम मंजूर ने आगाज़ बहुत पॉजिटिव किया है, अप्रोच बहुत पॉजिटिव नज़र आई है, रन्स लेने के लिए जा रहे हैं।
शायद यही है सही तरीका है, लेकिन अग्रेशन और रेकलेसनेस में हम पहले भी बात करते हैं, बहुत फाइन लाइन होती है। आप अग्रेसिव ज़रूर होइए, लेकिन डिलीवरीज ढूंढनी होंगी, बुरे बॉल का इंतज़ार करना होगा अग्रेसिव होने के लिए भी, क्योंकि जैसे बैटिंग हमने दोनों इनिंग्स में देखी है दोनों टीम्स की जानिब से, मां सवाए आबिद अली को निकाल दीजिए, फवाद आलम को किसी हद तक निकाल दीजिए, वो भी आउट गलत शॉट पे हुए थे, सोहेल खान को थोड़ा निकाल दीजिए, अदरवाइज बहुत ही बुरी बैटिंग हमें देखने को मिली है दोनों साइड्स की जानिब से। इतने बड़े बड़े नाम मौजूद हैं दोनों साइडों पे, और जिस तरह की बैटिंग शो देखा हमने बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। 139 विकेट्स हासिल कर चुके हैं फ़हीम अशरफ अपने करियर में, 6 बार 5 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। यहाँ पे भी सेंट्रल की कोशिश होगी कि अपने इनका बेस्ट देखा जाए। और आपने बैटिंग की बात की तो 18 विकेटें हमने 2 इनिंग्स में देखी हैं और लगभग 350 रन्स बने हैं। और अगर हम दोनों टीमों के जो 6 टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, जो 12 विकेट्स वो गिरी हैं टॉप ऑर्डर प्लेयर्स की, तो उनमें से शायद 2 या 3 ऐसी होंगी जिसमें बॉलर्स का ज़्यादा कमाल था। नो बॉल से आगाज़ किया है फ़हीम अशरफ ने अपने स्पेल का। पहली इनिंग में बहुत ही शानदार डिलीवरी से एहसान अली की विकेट हासिल की थी, एक ऐसी लेंथ से किक ऑन किया था बॉल जहां पे कमिट कर गए थे एहसान अली शॉट को। अंपायर नासिर हुसैन पाकिस्तान के बेहतरीन अंपायर्स में इनका शुमार होता है, मेक श्योर कर रहे हैं कि हर चीज़ ऑन स्पॉट हो। ओह, ये तारीफ रास नहीं आई है शायद। अली आपको अपने अल्फाज वापस लेना पड़ेंगे। और नासिर हुसैन जो है अपने नाम के साथ सीनियर लिखवाना भी पसंद करते हैं। ये अच्छी बॉलिंग है, ये अच्छा आगाज है फ़हीम अशरफ की जानिब से, लेंथ अच्छी है। और इस पिच पे हमने देखा है बॉलर वही कामयाब हुए जिन्होंने एरियाज को अच्छे तरीके से यूज़ किया है। सोहेल खान की बात करें, मीर हमजा की बात करें, आज तो ताबिश खान भी शानदार रहे। तो लेंथ ढूंढना बहुत ज़रूरी है इस पिच पे, क्योंकि हम जानते हैं कि एहसान अली अगर फ्लो में आ गए तो वो सिंगल हैंडेडली मैच को वे दूर ले जाएंगे सेंट्रल से, इसलिए सेंट्रल चाहेंगे कि इनकी विकेट जल्द से जल्द हासिल की जाए। और लाहौर में एहसान अली के हाथ लगे थे सेंट्रल को, लेकिन ये जो लेंथ है ये इनकी बेचैनी बढ़ाएगी एहसान अली की, और स्लिप्स के फील्डर को चाको चौबंद रहना होगा। एक बार फिर लो रह रहा है बॉल, ये थोड़ा वरिंग साइन हो सकता है बैटर्स के लिए, शायद सेंट्रल के लिए ज़्यादा, क्योंकि उनको आखिरी बैटिंग करनी है इस पिच पे। और अगर आप एज अ बैटर, एज एन ओपनर बैटर अपने सामने बॉल को लो रहता देखते हैं तो कॉन्फिडेंस आपका डेफिनेटली शेक होता है। और ये विकेट पहले 3 राउंड्स के मुकाबले में काफ़ी मुख्तलिफ है, इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं था जब पहले दिन इस विकेट को देखा, और जिस तरह का बर्ताव रहा है इस पिच का। और हम बार बार वही बात कहेंगे कि जो 18 विकेटें गिरी हैं उनमें से आधी से ज़्यादा विकेट्स ऐसी थी जिनमें बल्लेबाजों का कसूर था। जी हाँ, थोड़ा लिहाज कर रहे हैं आप, मुझे तो लगता है कि सारी की सारी विकेट्स ऐसी गिरी हैं, बहुत ही ख़राब बैटिंग रही दोनों जानिब से। शायद एक आधा मार्जिन आप दे सकते हैं जो अच्छा बॉल हुआ हो, उसके अलावा तो जिस तरीके से बैटर्स ने अपनी विकेट्स गिफ्ट की हैं, बहुत हैरानकुन बात है और बहुत तफ्तीशनाक बात है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि आपकी टॉप क्रिकेट में टॉप आपकी क्रीम खेल रही है और जिस तरह की शॉट्स मार के वो आउट हुए, ये बहुत वरिंग साइन है। ये सबसे बड़ी क्रिकेट है डोमेस्टिक सतह पर, इसकी अगली मंजिल टेस्ट क्रिकेट है, और अगर आप ऐसी बैटिंग करेंगे तो फिर टेस्ट क्रिकेट से शायद दूर ही रहें। बेहतरीन यॉर्कर, और ये टॉप क्रिकेट है। कायदे आज़म ट्रॉफी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कहा जाता है। ये देखिए यॉर्कर किया था, लेकिन बड़ी जल्दी इस गेंद को निगोशिएट किया। और यहाँ पर आने के लिए भी अब अली, अब 6 टीम्स खेलती हैं, तो यहाँ पर आना भी आसान नहीं है। और अगर आप इस सतह पर खेलते हैं तो फिर आपको ये साबित करना होगा कि आप इस सतह पर खेलने के अहल भी हैं। एहतियात से बैटिंग कर रहे हैं एहसान अली, और अभी कर सकते हैं क्योंकि बहुत मैच में बहुत वक्त बाकी है अभी। आज से दूसरा दिन है और हम तीसरी इनिंग का आगाज़ देख रहे हैं। आज के दिन में भी अभी पूरा सेशन और 1 घंटा अभी इस सेशन का भी बचा हुआ है, तो बहुत टाइम मौजूद है अभी तक प्लेयर्स के लिए। आप आराम से खेल सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, बुरे बॉल का वेट कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि एहसान अली अगर थोड़ी देर पिच पे खड़े रहेंगे तो वो किस तरीके से रन्स करते हैं।
शानदार शॉट रहा ये, रन मिल जाएंगे। टाइमिंग उस तरीके से मौजूद नहीं है, लेकिन बॉल जी हाँ 4 रन के लिए चली जाएगी। अच्छा आगाज यहाँ पे एहसान अली की जानिब से, ओवर पिच डिलीवरी जिसे शानदार तरीके से सीधा ड्राइव किया है एहसान अली ने, लेकिन थोड़ा लेंथ में फिर चूक गए फ़हीम अशरफ और 4 रन हासिल किए। सिंध 9 बगैर किसी नुकसान के। आपकी आवाज नहीं आ रही। Here's Ghulam Ali on your screens. He's the head coach of the second 11 of Sindh. Of course, you all know about his first class career and an international career. Spectacular effort, chance, and the finger has gone up. Waleed Yaqub really thought long and hard about it. He was in very good position, but the replay will be worth looking at. Excellent fielding, a mix-up, throws. That is very close. Ooh. Well, maybe on that line. And as we all know, the line belongs to the umpire. But I have to say, it is one of the closest run-out decisions I've seen in a long time. Nini? Not happy at all. Azam Ali, he thought he had made it. Well, he's got his marching orders. Out for 4. Sindh lose their first wicket. Look at this once again from a different angle. Slight hesitation. Khurram had turned his back on him. Azam turned around, could have dived to make it sure. The stumps are just about to be broken. Too close for comfort. Waleed Yaqub was in excellent position to make the judgment. Umar bin Yusuf is the new man in. It's a huge mix-up between the two. Sindh could ill afford to lose that wicket. Khurram Manzoor, ball watching there. Did not really call clearly and mix-up. Very, very close call. But Waleed Yaqub looked at it very carefully. Was placed very well for it. Gave it out. Yeah, but one more thing that you have to watch very closely. Azam didn't drag his bat. He just plonked the bat. Have a look at this. This Khurram Manzoor ball watching, yes. And Azam, when he's turning back, there wasn't much of a drag. And probably that put the doubt in the umpire's mind. I would have died for my life there. I thought he'd do the same, but I don't think he's as committed as I would have been, maybe. Khurram Manzoor has been playing these expensive drives. Got very, very lucky on that occasion. There was a big gap between bat and pad. Lucky he didn't get an inside edge. Not learning, Sindh batsman. Look at that delivery. Nowhere. Feet movement was nowhere near the ball. It wasn't a half volley. Still went for that drive. Nearly paid for it. Very lucky still to be there.
Surprised to see Khurram playing like that, because he played that wonderful knock here 2 rounds ago. Big drive once again, not learning from his mistakes. And if you cast your mind back to that big 100, he did nothing of that, even after scoring 100. Yes, and even if you don't consider that innings, look at his career. It has been ages since he's been doing this. Expect better from him. Absolutely. It's funny sometimes when you think what goes through the heads of these top-class professional athletes. 2 slips and a gully. Cast in. Left arm around the wicket. Another call, another confusion. This time it was Khurram himself running for his dear life. Got in there comfortably. A chaotic over for Sindh has come to an end. 9 for 1. Well, yes, everything happening in that over. Look at that last ball, that run out. Oh, lovely fielding. Through. And look at that. Oh, very close. Maybe on the line. Look at Hassan. I mean, I was clearly concentrating on Hassan. His stretch. I didn't think he was at maximum stretch. And that bat seems to be bouncing off the ground. Look at his stretching. But then it didn't stretch out, as the drag didn't happen at all. Well, if you look at that previous replay, brilliant work from our team. I think that's a very, very good decision by Waleed Yaqub. Indeed, like I said, glorious, delightful stroke from Umar bin Yusuf. He gets his innings going in great style. Beautiful cover drive. Excellent shot from Umar, but still played away from his body. Come in a positive frame of mind, looking to dominate, but I hope they're just a tad more careful. Don't think Fahim Ashraf will be disappointed with that stroke either. Because that's the gap he's showing to Umar bin Yusuf. 2 slips, a slightly wider third slip and a gully. But there is big gap between point and mid-off. And that's Hassan Ali. He may be wondering about his dismissal, but I think he was sold down the river by Khurram Manzoor. And partially his lack of commitment towards the end. Excellent from Bilawal Iqbal. Excellent work in the field. The substitute who was there for Abid Ali after the change of innings. He should have dived. He should have made all desperate attempts to reach that crease, get that bat in. Especially when there is no third umpire. You don't want to leave it in the hands of umpire. Make every effort possible yourself. Don't give him a chance. And as it turned out to be, I think, like I called it live, Waleed got himself into an excellent position. That made it easy for him to make the tough call. And that X factor that Sindh were looking from Hassan Ali really hasn't paid any dividends. Big wicket in the context of the game. It's definitely a huge wicket because Hassan Ali, when he gets going, he can score very quickly. And if you can play some shots and
they come off, some quick runs can make the difference here. Sometimes on a wicket like this, if Hassan was able to spend about half an hour, 45 minutes, he could really turn the game on its head. But his reluctance to adapt in the first innings, and then slight sloppiness on his part, has really cost Sindh. But this game, the neutrals won't be complaining, because this game is moving at the rate of knots. Good stride into the drive, not coming entirely off the middle of the bat. A couple of runs for Omar bin Yusuf. He's prepared to put those drives away if the opportunity arises. 15 for 1. There you see Hassan Ali having a look at that dismissal. That was in the air, but in the gap. That will trickle into the fence, not quite. Ali Zaryab gets to the ball. That expensive attitude from Sindh batters continue. Khurram Manzoor on that occasion. This definitely seems a part of their plan now. Anything wide or in that zone, going hard at it. Angling away, similar to the first innings dismissal, this time away from Ali Shan. He did get a tickle on it. 4 to Khurram Manzoor. Or was it leg by? Probably didn't get a tickle on that. But looked pretty similar to the way he got dismissed in the first innings. Just brushed his thigh pad on the way. 4 runs. 4 leg byes signalled by the umpire. I think the ball had gone in the water. There was a... That's that run out again. The incredible bit is like here as well. Look at Bilawal Iqbal. He was threatening to stumps at the throw at the striker's end, and he realized the presence of mind, and the throw also came right in the hands of Waqas Maqsood. Incredible effort from the substitute. Hassan Ali still cannot believe it. Well, the ball has now been dried up, and play about to resume once again after that shot held up. This is whirlwind start for Sindh. It's all happening, action-packed. You've seen a wicket. You've seen plenty of confusion between the running, and in between, some expensive drives. That's more like it, Khurram Manzoor. Well, but there is definitely a plan. They have talked about this. They're not going to be bogged down, and
need to be more positive, but I still believe they need to be a bit more careful. It's definitely the new ball will be doing a bit. Yeah, that's the time for the bowlers as well. We've seen the way Abid Ali was playing, the way Saad was playing. They had a huge partnership after those 2 early wickets, 3 early wickets rather. New ball. And I think Central Punjab is still not happy with the condition of the ball. Now, is it because of the shape? Pretty new ball. Only 4 overs. They haven't brought out the rings just yet, both the umpires. But Nasser Hussain now. Do you think it's the shape or is it still dampness? Well, I'm not sure. It's. I think it's the dampness. Also, having a look at the shape. I think now they've decided that the game should continue. Play and a miss. I just cannot believe this, what I'm seeing. Such experienced players. Could be part of plan, like Amar said. The possibility, the percentages of this plan coming off for long seems to be pretty low. Well, I think they are planning to finish the game by the end of the 3rd day. That is the only thing that is coming to my mind with those shots. Could it be nerves? Could it be the pressure of the situation? You don't expect this with Khurram Manzoor though. That's, I have to keep stressing because he's a really top class batter. Especially at this domestic level. He's made it his own, more than 13,500 runs. And I cannot think beyond that 100 that he made a couple of weeks ago, where they were even in under bigger deficit. At that occasion, they were trailing by 120 runs on the first innings. But the way he batted was absolute exemplary. He started off in a completely different fashion. Still not happy with the ball. That was a top effort by Khurram Manzoor in that match. Sindh were in far deeper trouble then. And he absolutely played a gem of an innings. But, this time around, the 2nd innings, he's a bit flashy outside their off stump. That's the method he adopted back then. Walking down the pitch, shortening the length, making the bowlers think twice about their lengths. 5 gone, 21 for 1. $11 runs lead remaining now. And the game is as even as it was when we started on day 1. Absolutely agree with this statement. If anything, at that time, Central Punjab being the away team and had the opportunity to bowl first, had a slight advantage. That advantage has tilted towards Sindh because they will bowl last on this pitch.
but it will be of no use if they face another batting collapse. They had 3 in a row. In 2 out of those 3 collapses, Umair bin Yusuf did try his best. Scored a half century in the second innings of the previous round, and then hung in the first inning for quite some time for his 22. It's a good young batter. A lot is expected of him. This is his stage to show. It's one of his features. For most parts, he's been playing very close to the body and compact. And he needs to do it for longer to convert his starts into big substantial runs. Immensely talented Umair bin Yusuf. I've seen him play at club level, and the variety of shots he possesses is mind-boggling. But again, these are testing times. This is the most difficult stage before Test cricket, and of course you need to prove yourself worthy of not only the place but also all the expectations that have been put on you. Talking about him, definitely that's the graduation you need to do to go to the next level, only to become a top class professional at this level, from being a very good promising youngster. Then also, once you do that, the next stage will be to represent your country. The journey up to here is only half the way through. There's a lot of buzz in the field from the Central Punjab boys. They've got a chorus of claps going on in the slip cordon to keep them interested. Ahmed Safi Abdullah seems to be the ringleader. Short of a length, couldn't pierce the field. Came right out the middle of the bat. 6 gone, 21 for 1. Long batting lineup for Sindh. Did not deliver in the previous innings. But, a lot expected of the youngsters like Umair bin Yusuf and Saad Khan, and then of course the experience of Khurram Manzoor, Asad Shafiq, Fawad Alam. So not often that the likes of Fawad Alam and Khurram Manzoor and Asad Shafiq, they fail in continuous innings. Can happen, yes, as anything can happen in cricket, but mostly they are very consistent. Short delivery, found the gap, went in the air, close to Ahmed Safi, who is giving the chase, and just pulls the ball back in. Khurram Manzoor, intent of playing with aggression, is continuing here. Gets himself 3 runs. This time Waqas
tested him with the short delivery. So not holding back for a Manzoor for sure. Anything that he sees pitched up or slightly short, he is going for his shots now. On the other hand, Umair bin Yusuf really concentrating hard to get through this phase. You could say that in this 9th round, if you take out the innings of Abid Ali and to an extent Muhammad Saad, the batting has really left a lot to be desired. The application, the desired discipline wasn't there. And that's why we're already into the 3rd innings. 19 wickets have fell. Yes, tired bodies, tired minds. It's the 8th round of the championship. 2 more to go, but yes, it's been a long time. That is a very good point, Amr Said, because it was baffling to see that players who played here and performed here know the requirement of how to get successful on this pitch. Suddenly cannot seem to be concentrating, and that could be the reason, like you said, tired minds, tired bodies. 9 rounds of first-class cricket back to back with no gap whatsoever. In Punjab we had 3 days gap, that included the travelling day as well for certain teams, intercity travel. Let's watch another single from Umair bin Yusuf, and here that gap has been reduced to 2 days. Very demanding, this format, and it takes as much toll on your body as much as it does on your mind. And in these times of COVID, when you also have to observe the bubble, I can tell you it's not easy on these players. Yeah, definitely not to forget. The bubble life is very, very difficult. They've been away for almost 10 weeks now. Dot to finish off, 25 for 1. पच्चीस रन, 1 विकेट गवाकर सिंध ने बनाए अभी तक। उमैर बिन यूसुफ मौजूद है 7 रन पर, खुर्रम मंजूर मौजूद है 9 रन पर, एहसान अली आउट होने वाले प्लेयर जो रन आउट हुए 4 रन बनाकर। ये अच्छी इनिंग है अभी तक उमैर बिन यूसुफ की, बहुत सॉलिड नज़र आ रहे हैं और ऐसा ही सिंध ख्वाहिश करेंगे कि ये प्लेयर लंबी इनिंग खेले, क्योंकि लंबी इनिंग की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक ट्रेल जो है वो 7 रन की है। मेरे साथ अली सलमान मौजूद हैं। वेलकम टू द कमेंट्री बॉक्स अली। थैंक यू अली। उमैर बिन यूसुफ एक बड़ी इनिंग खेलना होगी, और जिस तरह हमने पहले भी देखा इस पिच पे जो मैचेस खेले गए, इस ग्राउंड पे जो मैचेस खेले गए, वो सेकंड इनिंग में जाके डिसाइडर साबित होते हैं। अब यहाँ पे 7 रन की अभी भी खसारा है सिंध को, और इस बर्तरी को ख़त्म करना होगा सेंट्रल पंजाब की, और फिर लीड हासिल करनी होगी। जी यहाँ पे सिंध कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डैमेज हुआ नहीं जितना हो सकता था। अच्छा कम बैक किया अपनी बॉलिंग में, लंच से पहले वाला आधा घंटा, लंच के बाद वाला घंटा, ये सिंध की फेवर में रहा है। बहुत शानदार बॉलिंग की है और सपोर्ट भी किया गया है थोड़ी ऑर्डिनरी बैटिंग की जानिब से। ज़रा जिस तरह की शॉट्स खेली गई, जिस तरह की बैटिंग की गई, थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रही दोनों साइड से। फवाद आलम कप्तानी कर रहे हैं सिंध की,
चाहेंगे कि सेकंड इनिंग में एक इम्पैक्ट डाल सकें। थोड़े रिलैक्स नज़र आ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ी बर्तरी नहीं है सेंट्रल पंजाब की। अच्छा दिफा अंदाज इस मौके पर उमैर बिन यूसुफ का। एहसान अली के एक डिसमिसल के बाद खुश नहीं थे एहसान अली अपने रन आउट से। या इन द एंड तो हम कहेंगे कि बहुत शानदार डिसीजन रहा है, बहुत टच एंड गो डिसीजन था ये एहसान अली के अगेंस्ट गया वो। लेकिन शायद अली मुझे लगता है कि नेकेड आए हो, अगर आपके पास थर्ड अंपायर वाली फैसिलिटीज़ ना मौजूद हो तो आपको बैटर को थोड़ा बेनिफिट देना चाहिए। बहुत क्लोज था, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आउट नहीं था, लेकिन बहुत ही करीबी, बहुत ही शानदार इन द एंड हम कहेंगे कि डिसीजन था ये सिंध का डग आउट है जहाँ पे फराज अली, हसन अली, हसन मोहसिन थे इनफैक्ट, और मीर हमज़ा और दीगर प्लेयर्स बैठे हैं यहीं पे। इनके साथ इनके कोच बासित अली भी हैं और इसके अलावा सिंध की जो सेकंड 11 के चैंपियन कोच है गुलाम अली भी, जिन्होंने मुसलसल 2 साल जो है वो टाइटल जीता। बड़ी ज़बरदस्त कोचिंग रही है गुलाम अली की सेकंड 11 के लिए। और जो फर्स्ट 11 थे उसको बड़ा अच्छा उन्होंने फीडबैक दिया, बड़े अच्छे प्लेयर्स उन्होंने दिए। शाहनवाज धानी सेकंड 11 से फर्स्ट 11 में मूव हुए, एहसान अली सेकंड 11 से फर्स्ट 11 में ट्रांसफ़र हुए, तो बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है गुलाम अली ने। यहाँ आज मौजूद हैं इस मैच को देखने के लिए। जी आपने टाइम के बहुत ही शानदार प्लेयर गुलाम अली, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया। और अब कोचिंग में आई एम श्योर जब ऐसे प्लेयर्स कोचिंग में आते हैं, यंगस्टर्स को कोच करते हैं, तो यंगस्टर्स का हौसला वैसे ही बहुत बुलंद हो जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। आपसे कुछ हफ्ते पहले इस क़ायद आज़म ट्रॉफी के शुरू होने से पहले मोहम्मद समीन के सामने आ गए और इन्होंने क्या हुक और पुल शॉट खेले मोहम्मद समी को। इस उम्र में भी बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन थे अपने वक्त के, बासित अली और साथ साथ गुलाम अली, सिंध के दोनों कोचेस। यहाँ पे 2 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स कोचेस का भी मुकाबला है। सेंट्रल की जानिब से अब्दुल रज़ाक, सिंध की जानिब से बासित अली। दोनों बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर अपने वक्त के और दोनों ही अपने जहानाना अंदाज से खेलने के लिए मशहूर थे। और अगर फ़हीम अशरफ जैसे ऑलराउंडर्स या दीगर बैट्समैन बासित अली और अब्दुल रज़ाक जैसे ऑलराउंडर से कुछ हासिल ना कर सकें तो बड़ी बदकिस्मती होगी है। 8 ओवर मुकम्मल, 25 पर 1। यहाँ पे एक भारी जिम्मेदारी है उमैर बिन यूसुफ और खुरम मंजूर पे, एक लंबी इनिंग खेली जाए यहाँ से। ये गुज़िश्ता शॉट को देख के आपने कहा भारी जिम्मेदारी है कह सकते हैं, लेकिन अभी मेरा जो फोकस है वो गेम पे है, मैं कुछ और सोच नहीं रहा हूँ क्योंकि इतनी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली हमें दोनों साइड्स की जानिब से। अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि एक टीम का बलड़ा भारी रहा है। अगर कहीं गेम हाथ से निकली है तो जल्दी कम बैक किया है दोनों टीमों ने, और हम जानते हैं खुरम मंजूर कैसी बैटिंग कर सकते हैं, बहुत एक्सपीरियंस, 30 सेंचुरीज़ हैं इस लेवल पे। उमैर बिन यूसुफ काफ़ी यंग हैं, काफ़ी हाई रेट किए जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, तो मैं चाहूँगा कि ये पार्टनरशिप अच्छी जाए, अपना मेटल दिखाएं दोनों प्लेयर्स। और दूसरी तरफ मोहम्मद अली जो बड़ी अच्छी बॉलिंग फॉर्म में इस क़ायद आज़म ट्रॉफी में। मरतबा शॉर्ट बॉल दे, खुर्रम मंजूर ने मिड विकेट पे खेला इसको, फील्डर गेंद के पीछे गेंद का ताक़ुब करते हुए, लेकिन शॉट की रफ्तार फील्डर की रफ्तार से कहीं ज़्यादा तेज़ और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। जी हाँ, ये अच्छा आगाज़ नहीं रहा मोहम्मद अली की जानिब से। हाफ वे अगर आप इस तरह का लेंथ बॉल करेंगे तो खुरम मंजूर जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर उसको नहीं छोड़ने वाले हैं। गैप बहुत बड़ा मौजूद है, मिड विकेट पे कोई फील्डर नहीं था, बआसानी 4 रन हासिल किए। अच्छी क्रिकेटर, हम जानते हैं कि खुरम मंजूर क्या कर सकते हैं। ये देखिए हाफ वे, इस लेंथ पे इस पेस के साथ ज़्यादा मसला आप नहीं डाल सकते हैं बैटर को। यहाँ पे जल्दी अपनी लेंथ को परखना होगा मोहम्मद अली ने। और जैसे आपने कहा कि बहुत शानदार फॉर्म है, पंजाब लेग की बात करें, कराची लेग की बात करें, अच्छी फॉर्म दिखाई है, विकेट्स हासिल किए हैं, लेकिन लेंथ जल्दी परखना होगा। अब तक 57 विकेटें हासिल की हैं, 15 फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे हैं मोहम्मद अली। इस बार कट किया है, बहुत जोरदार कट था, लेकिन इतनी शानदार फील्डिंग अली ज़रियाब की जानिब से पॉइंट पे खड़े हुए, यकीनी 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। बहुत ही उम्दा फील्डिंग एफर्ट, और इस किस्म की फील्डिंग जो है वो पूरी टीम का मोराल बढ़ाने में काम आती है। बहुत ही ज़बरदस्त एफर्ट थी यहाँ पे अली ज़रियाब की। उसमें से थोड़ी सी बाहर ये गेंद थी और जो कट किया था पावरफुल कट था। और खुर्रम मंजूर बैकफुट पे बहुत ही मजबूत प्लेयर हैं और उतनी ही उम्दा फील्डिंग यहाँ पे
अली की जानिब से। यहाँ पे अच्छी अप्रोच देखने को मिल रही है हमें खुर्रम मंजूर की जानिब से। बुरे बॉल पे रन्स करना बहुत ज़रूरी है इस पिच पे, क्योंकि यहाँ पे आप जब तक रन्स की तलाश में नहीं रहेंगे, बुरे बॉल पे रन्स नहीं करेंगे तो बॉलर आपको कभी भी आउट कर सकता है, इसलिए आपको रन्स की तलाश में रहना चाहिए। बैकफुट पे खेले हैं पंच, फील्डर वहां मौजूद हैं, एक ही रन बन पाएगा। अरे दोनों जो बैट्समैन, इनकी अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई है। दोनों बैट्समैन सिंगल्स नहीं ज़ाया कर रहे, शॉर्ट बॉल जो मिल रही है, लूज बॉल जो मिल रही है, उसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करते नज़र आ रहे हैं। तो बड़ा अच्छा अब तक है दोनों का परफॉर्मेंस रही है अब तक। ये खुर्रम मंजूर हैं कि जो गुज़िश्ता मैच में यहाँ पर एक मुश्किल मौके पर एक सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, और असद शफीक के साथ इस ग्राउंड की सबसे बड़ी जो पार्टनरशिप थी 176 रन की वो उन्होंने यहाँ पे बनाई तीसरी विकेट के लिए, और बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी असद शफीक और खुर्रम मंजूर के दरमियान। जी हाँ, मैच विनिंग इनिंग थी वो, और ऐसी परफॉर्मेंसेस जो टीम को मैच जिताए उसकी वैल्यू तो अली डबल हो जाती है, क्योंकि ऐसे मौके पे जब 120 रन की लीड कंसीड की हुई थी और अपनी टीम को कम बैक करवाना, खुर्रम मंजूर और असद शफीक की लाजवाब इनिंग थी। ऐसा ही कुछ चाहेंगे बासित अली और मैनेजमेंट सिंध के खुर्रम मंजूर से कि इस इनिंग में भी एक बड़ी इनिंग खेली जाए, शायद वो 100 को 31 में बदला जाए। अब सिर्फ 1 रन की बढ़तरी रह गई है सेंट्रल पंजाब की सिंध के खिलाफ। आबिद अली को आपने स्क्रीन पे देखा, नर्वस 90s का शिकार हुए आबिद अली, अननेसेसरी शॉट खेलने गए जिसका खमियाजा ना सिर्फ उनकी टीम को भुगतना पड़ा और आबिद अली को। अमूमन आबिद अली इस अंदाज से स्ट्रोक खेलते नहीं हैं, और इस मरतबा रश ऑफ ब्लड का शिकार हुए खुर्रम मंजूर। इस मौके पर इस किस्म के स्ट्रोक की ज़रूरत थी नहीं। क्या कहेंगे इसको, इस अप्रोच को, क्योंकि हम बात करते रहे एग्रेसिव होने में, रेकलेस होने में बहुत फाइन लाइन है अली। आप अग्रेसिव ज़रूर हुई है, लेकिन आपको मैच की सूरत हाल का भी नज़र रखना है, टीम की कंडीशन की भी नज़र रखनी है, और अगर आप ऐसी शॉट मारते हुए आउट हो जाएंगे तो पूरी टीम पे उसका इफेक्ट जाता है, क्योंकि आप सीनियर मोस्ट बैटर हैं, आपको ऐसा शॉट खेल के आउट नहीं होना, विकेट नहीं गंवानी है, अपनी वैल्यू देनी है अपनी विकेट को। जी हाँ बिल्कुल, और ऐसी एग्रेशन का मुजाहरा आबिद अली ने किया था और 98 पर आउट हुए। और इस मरतबा खुर्रम मंजूर बहुत ही खूबसूरत खेले, गैप में 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। या ये बेहतरीन शॉट है, बुरा बॉल था लेग साइड पे, हाफ में गिरा हुआ बॉल जिसे टाइम किया, स्क्वायर लेग और फाइन लेग के दरमियान से 4 रन हासिल किए। तो अग्रेशन जरूर मुझे लगता है वनडे मोड में है यहाँ पे खुर्रम मंजूर। देखिए फिर हाफ वॉली, हाफ पिच डिलीवरी थी जिसे आसानी से गैप में खेल के 4 रन हासिल किए हैं। बेहतर अप्रोच है, लेकिन मुझे कहीं से लग रहा है थोड़ा इची हो रहे हैं यहाँ पे खुर्रम मंजूर। 9 ओवर्स का इख्तिताम हुआ, 35 पर 1 सिंध। असद शफीक, मसरूर, उनके साथ सिंध के फिजियो डॉक्टर इम्तियाज़ और फवाद आलम अकब में साथ खाना में नज़र आ रहे हैं। जहाँ साद खान पैरेड ऑफ हैं, पहली इनिंग में भी नंबर 4 पे खेले थे। फवाद आलम और असद शफीक उनके बाद बैटिंग करने आए थे, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है बैटिंग के लिए थोड़ा बेहतर है पहले दिन के, अगर हम उसके मुकाबले में बात करें। और ये बासित अली कि जिनकी आज ऑन पेपर आज इनकी बर्थडे है, लेकिन आज इनकी बर्थडे असल है नहीं, इनकी असल जो बर्थडे है उनके साथ पीछे गुलाम अली, फर्स्ट और सेकंड 11 के कोचेज एक साथ यहाँ पर जाते हुए। इनकी जो असल बर्थडे है वो है 30 दिसंबर। तो एक दफ़ा मेरी बासित अली से सवाल से बात हुई तो यहाँ पे अच्छा कलेक्शन करने की कोशिश की अली शान ने। गेंद ग्लव से लगने के बाद थोड़ा सा आगे की जानिब गई, 1 रन बनाने का मौका मिला। अंपायर नासिर हुसैन की जानिब से सिग्नल देखना होगा, बाई का सिग्नल नासिर हुसैन की जानिब से। और मेरी इनसे जो बात करने का, मैंने 30th बोला था और लिखने वाले ने 13 लिख दिया। तो आज आप क्रिकेट की अगर मुख्तलिफ वेबसाइट पे देखेंगे तो वहाँ पे आज बासित अली की सालगिरह है, वरना एक्चुअल बासित अली की आज सालगिरह है नहीं। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि ऑन पेपर और ऑफ पेपर हमने 2 तजाद है, लेकिन आपने खुद ही काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया इस बात को। शानदार कोच, शानदार इंसान बासित अली। और ये शानदार डिलीवरी फ़हीम अशरफ की जानिब से, अच्छी लेंथ पे गिरा हुआ बॉल। और यहाँ पे एक पैच मौजूद है पिच पे जो ऑकवर्ड बाउंस क्रिएट कर रहा है बॉलर्स के लिए। हमने देखा है पहले भी 2-3 बॉल जो लो रह गए उस पिच पे, उस पैच पे पड़ने के बाद यहाँ पे थोड़ा किक ऑन कर गए।
ये देखिए पढ़ने के बाद जैसे टेनिस बॉल बाउंस होता है। ये इस पिच की खुसूसियत है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमें जो है वो हार्ड होती जाती है पिच और गेंद पड़ने के बाद राइज करती है। हम बासित अली की बात कर रहे थे तो लेट 80s में रामदास की क़यादत में भारतीय अंडर 19 आई, उसके कप्तान बने बासित अली और 188 रन की इनिंग खेली थी बासित अली ने गुजरावाला में। शॉर्ट बॉल बैक फुट पे गए इस पर तबाह, दो फील्डर के दरमियान से गेंद को निकाला, महज 1 रन का इजाफा। और उस जो अंडर 19 टीम थी बासित अली की उसमें बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर सामने आए, वक़ार यूनुस से सामने आए, इसके अलावा मुश्ताक अहमद उस क्रिकेट से निकल के सामने आए, मोइन खान उस की डिस्कवरी थे। एक प्लेयर आए थे GM पाशा जो ज़्यादा अरसे क्रिकेट नहीं खेल सके, शाहिद नवाज़ जो एम्पायर रब नवाज़ के साहबजादे थे वो उस सीरीज़ से निकल के सामने आए। तो बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे। और भारत की अगर बात करते हैं तो वहाँ से मोंगिया उस टीम का हिस्सा थे, पंजाबे जैसे प्लेयर हिस्सा थे, आशीष विस्टन जैदी, अकरम कादरी, तो बड़े ज़बरदस्त, अजय जडेजा वो उस टीम का हिस्सा थे। जी हाँ, लेवल ऑफ क्रिकेट जैसे आपने नाम लिए बहुत ही हाई होगा उस सीरीज में, तो क्योंकि जिस तरह के नाम आपने लिए सारे ही टॉप क्लास क्रिकेटर बने अपने मुल्क के लिए, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है अपने मुल्क के लिए। पाकिस्तान के क्रिकेट के आपने इतने बड़े नाम गिनवा दिए, इंडियन क्रिकेट टीम भी सेम उतने ही बड़े नाम इंडिया को रिप्रेजेंट किया बहुत अरसे अब तक। और सचिन तेंदुलकर ने वो टूर इसलिए मिस किया था अली क्योंकि सचिन तेंदुलकर के मैट्रिक के पेपर होते उस ज़माने में, वरना वो भी उस टूर का हिस्सा होते। और पहली मरतबा अगर किसी टीम ने लॉन्गर वर्जन में नेशनल स्टेडियम कराची में फतह हासिल की तो वो वही भारतीय अंडर 19 थी जिसने पाकिस्तानी अंडर 19 को नेशनल स्टेडियम कराची में शिकस्त दी। आपकी यादाश्त को भी दाद देनी होगी। एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टार स्टडीड सीरीज़ थी ये। आगा जावेद, वक़ार यूनुस फास्ट बॉलिंग में दरियाफ्त थे और उसके अलावा लेग स्पिन बॉलिंग से उभर के सामने आए थे मुश्ताक, इंजमाम भी उस सीरीज़ में खेले, ज़हूर इलाही भी उस सीरीज़ में खेले। तो बड़ी एक ज़बरदस्त सीरीज़ थी। कुछ अंडर 19 ऐसी होती हैं जो बहुत प्लेयर पाकिस्तान को दे जाती हैं, वो ये अंडर 19 उनमें से एक थी। और एक अंडर 19 आई थी अर्ली 80s में जिसके रमीज़ राजा कप्तान थे, लैरी पॉटर जो थे ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के कप्तान थे, और ये वो कप्तान है जो बाद में इंग्लैंड अंडर 19 को भी उन्होंने लीड किया। उसमें बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे, उसमें सलीम मलिक वाइस कप्तान थे रमीज़ राजा के, अनिल दलपत खेलते थे, शाहिद महबूब थे, मोहसिन कमाल थे, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे उस अंडर 19 टीम में भी। और ऑस्ट्रेलिया की जो अंडर 19 थी वहाँ से टिम में जैसा प्लेयर निकल के सामने आया था। दस ओवर्स का इख्तिताम हुआ, 37 पर 1 सिंध। ज़बरदस्त मंजर स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची का, और इंतहाई ज़बरदस्त पिच है कि जहाँ पे अब तक जितने भी मैचेस खेले गए सबका रिजल्ट आया। और जिस तरह हम बार बार अपने स्पेल्स में बात करते हैं कि जीतने वाली टीम के साथ साथ हारने वाली टीम भी अब तक हमें पिच को दोष देती नज़र नहीं आई, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से उनको शिकस्त हुई है। जहाँ बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने उठाया है, सिंध का डगआउट देख सकते हैं, अमीर हमजा मौजूद ने बहुत ही शानदार स्पेल किया जिन्होंने अर्ली ऑन पहला घंटे में तो बहुत ही कमाल बॉलिंग की, प्रेशर डाल के रखा। हसन मोहसिन है, और ये जिस प्लेयर ने गिलास अपने हाथ में उठाए मोहम्मद उमर है, फास्ट बॉलर। और जब शाहनवाज धानी का इंक्लूजन हुआ मुल्तान सुल्तान में, उन्होंने परफॉर्मेंस दी। उससे पहले मोहम्मद उमर मुल्तान सुल्तान के लिए एज एन एमर्जिंग प्लेयर खेल रहे थे, और अभी देखें यहाँ भी सीट खाली कर दी और वहाँ भी उन्होंने अपनी सीट खाली कर दी थी धानी के लिए। अब वापस आए उमर, उसके बाद धानी का जो कैरियर था वो 4th गियर में गया। जी हाँ, इसी का नाम क्रिकेट है कि हमेशा इवॉल्व होती रहता है, चेंज होता रहता है, नए प्लेयर्स आते रहते हैं, नए परफॉर्मर्स आते रहते हैं, इसीलिए आपको ऑन योर टोज रहना पड़ता है, अपनी 100% गेम देनी पड़ती है जब भी आप मैदान में आए। पुल शॉट खेले हैं बहुत ही शानदार तरीके से, 4 रन मिल जाएंगे खुर्रम मंजूर को। बेहतरीन अप्रोच जारी है खुर्रम मंजूर की जानिब से, 4 रन हासिल किए स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान खेल के। लीड बढ़ के 9 रन की हो गई है। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था, शॉर्ट बॉल की थी और गेंद प्रॉपर खुर्रम मंजूर के बैट पर आते हुए। खुर्रम मंजूर के लिए एक आइडियल डिलीवरी, हुक और पुल बहुत अच्छा खेलते हैं खुर्रम मंजूर। और इस शॉट की खूबसूरती ये है कि गेंद को उन्होंने दबाते हुए खेला, हवा में नहीं खेला। 4 रन हासिल किए, बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रोक और गेंद काफ़ी दूर तक गई। जी हाँ बिल्कुल, जो ब्लेड था वो ज़मीन की तरफ इंक्लाइंड था, शो कह रहा था कि वो
रोलिंग शॉट मारना चाह रहे हैं, हवा में नहीं खेलना चाह रहे हैं, यही सही अप्रोच है। शानदार स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, 30 बॉलों पे 23 रन बना लिए हैं और जो लीड है अब 9 रन की हो गई है। तो प्रेशर अब यहाँ से ऑनवर्ड सेंट्रल पंजाब पे है, क्योंकि उनको चौथी बारी करनी है इस पिच पे, और जितना कम से कम इस लीड को रोक सके उतना ही बेहतर है सेंट्रल के लिए। और टाइम भी काफ़ी है अभी सिंध के पास के, और रन अच्छी तादाद में बनाएं, प्रेशर डालें सेंट्रल पंजाब पर, और आउट करने का भी मौका मिल सकता है, क्योंकि आबिद अली ने जिस अंदाज से इनिंग खेली है तो यकीनन ये सिंध के बॉलर्स के जहन में होगा कि एक एंड से तो उनको विकेट मिलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आबिद अली जैसा प्लेयर मौजूद है जो क्रीज को और विकेट को ऑक्यूपाई रखता है। जो और दूसरा शायद उनको इतनी गलत शॉट्स का भी सहारा ना मिले, जैसे हमने सिंध की पहली इनिंग में देखा था, बहुत गलत शॉट्स खेले थे। आई एम श्योर ये बहुत बड़ी टीम है, काफ़ी काम किया होगा इन्होंने अपनी इस शॉट सिलेक्शन पे जो पहली इनिंग में हमने देखी सिंध की जानिब से। मोहम्मद साद एक सरप्राइज पैकेज उभर के सामने आए, और हम देख सकते हैं इफेक्ट कि अब खुर्रम मंजूर जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, उमैर बिन यूसुफ बहुत सॉलिड लग रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं चाहूँगा अली कि उमैर बिन यूसुफ अपना स्किल लेवल दिखाएं कि वो डिजर्व करते हैं इस लेवल पे। जी एहसान अली ने भी अच्छा आगाज़ किया, लेकिन बदकिस्मत रह के रन आउट हुए, वरना आगाज़ अच्छा था सिंध का दोनों ओपनर्स की जानिब से। और अब उसके बाद उमैर बिन यूसुफ खुर्रम मंजूर के साथ मौजूद, ये उमैर बिन यूसुफ जिनका अली यूनुस तस्करा कर रहे थे। यहाँ टेक्निकली अच्छे लगते हैं, सॉलिड लगते हैं, डिफेंस अच्छा है, लेकिन जब तक आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपका नाम नहीं बनेगा। हमने देखा है कि प्लेयर्स जिन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया एक सीज़न में, उनका नाम बना है। कामरान गुलाम लास्ट सीज़न में जिस तरीके से उन्होंने 1200 से ऊपर रन्स बनाए, और अब उनका नाम एक काफ़ी हल्कों में लिया जाता है, एज अ अच्छा प्लेयर है वो। और ऐसे ही कुछ उमैर बिन यूसुफ को भी करना पड़ेगा। कामरान गुलाम का आपने तस्करा किया तो स्टेट बैंक के लोकल प्लेयर और स्टेट बैंक से काफ़ी अर्से क्रिकेट खेले हैं कामरान गुलाम, पाकिस्तान अंडर-19 को रिप्रेजेंट किया, और इनका जो निक नेम है वो बड़ा ज़बरदस्त है कामरान गुलाम का, क्योंकि छोटे कद के खिलाड़ी हैं, बड़े प्लेयर हैं, टैलेंटेड है, लेकिन उनका जो निक नेम है वो है केजी, और उनको देख के लगता भी है केजी किंडरगार्टन। मुझे लगा शायद आप कामरान गुलाम कहेंगे। नहीं, कामरान गुलाम का निक नेम है केजी, तो उनको देख के लगता है भी किसी छोटे बच्चे की बात हो रही है, लेकिन प्लेयर बहुत बड़े हैं। 11 ओवर्स का इख्तिताम हुआ, 41 पर 1 सिंध। यूटिलिटी प्लेयर है अली, आप उनसे फील्डिंग करवा लें, बैटिंग करवा लें, बॉलिंग करवा लें, बड़े ज़बरदस्त मॉस्टर लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, किसी भी नंबर पे खेलने वाले बैट्समैन और फील्डर बड़े गजब के हैं। तो एक पूरा एक आइडियल पैकेज है कामरान गुलाम, और इस मरतबा PSL में भी वो पिक किए गए, तो उम्मीद है लाहौर कलंदर के लिए अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे कामरान गुलाम। फ़हीम अशरफ अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, अपने स्पेल का 6वां ओवर करेंगे। विकेट हासिल नहीं किया, लेकिन ज़्यादा रन्स भी नहीं दिए, सिर्फ 12 रन्स दिए अपने 5 ओवर्स में। अच्छी टाइट लाइन और लेंथ बॉलिंग की है। ये फ़र्क नज़र आ रहा है हमें आज सिंध की बैटिंग में। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जो भी बॉल मिल रहा है उसे छोड़ रहे हैं। पहली इनिंग में हमने देखा था थोड़ा चेज़ करने गए थे बॉलिंग को, रन्स की तलाश में गए थे, अपनी विकेट्स गंवाई थी। ये बेहतर अप्रोच है, क्योंकि वक्त गुजारेंगे तभी रन्स मिलेंगे। बिल्कुल, और खुर्रम मंजूर को वही किरदार अदा करना होगा जो आबिद अली ने सेंट्रल पंजाब के लिए किया, कि एक एंड से विकेट को ऑक्यूपाई रखा, और खुर्रम मंजूर नेचुरली एग्रेसिव प्लेयर हैं तो रन्स भी निकाल रहे हैं। ये हमारे साथी कमेंटेटर्स फरहान निसार दरमियान में, उनके अलावा अमर सईद और शाह फैसल बैठे हैं राह गुजर पे, कोई हमें उठाए क्यों, और रिलैक्स नजर आता है शाह फैसल। बड़ा ज़बरदस्त कूल एंड काम करेक्टर हैं शाह फैसल, एंजॉय करते हैं, और इनकी कंपनी बड़ी ज़बरदस्त है। हमारी मुख्तसर सी कमेंट्री टीम ये जो आपको इस खेल का आंखों देखा हाल पहुंचा रही है। रिजवान हुसैन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके इस मैच में, सैफ बदर भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। इसी ग्राउंड पे सबसे बड़ी इंफरादी इनिंग खेलने का एजाज़ है रिजवान हुसैन को, 253 रन की। शानदार लीव उमैर बिन यूसुफ की जानिब से,
ये बदलाव आया है सिंध की बैटिंग में। अब चेस करने नहीं जा रहे हैं, ऑल्दो थोड़ी सिचुएशन और थोड़े हालात पिच के बेहतर हो गए हैं। जो अर्ली मॉइस्चर था जो पहली इनिंग में जिसका सामना था वो ख़त्म हो गया है। पिच हार्ड से हार्ड होती चली जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसी पिच नहीं अली कि जिसपे आपको आते ही स्ट्रोक्स मिलेंगे, आते ही रन्स मिलेंगे। आपको वक्त गुजारना होगा, बुरे बॉल का वेट करना होगा, स्किल अपना 100% दिखाना होगा, तभी आपको रन्स मिलेंगे। आपने अंपायर नासिर हुसैन को देखा, फैसलाबाद में ये दरअसल तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं प्रोफेसर नासिर हुसैन। दिफाई अंदाज से इस मरतबा खेले, बहुत ही खूबसूरत विद द रिस्ट। वकास मकसूद गेंद के पीछे और इससे पहले वकास गेंद तक पहुंचते, गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। बड़ा जबरदस्त एफर्ट स्ट्रोक कलाई की मदद से और 4 रन। जी हाँ, ओवर पिच डिलीवरी जिसे शानदार तरीके से टाइम किया, प्लेस किया उमैर बिन यूसुफ ने। कलाइयों का मदद शानदार रहा, थोड़ा ओवर पिच डिलीवरी दी। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से प्लेसमेंट कमाल की रही। कोई मौका नहीं वकास मकसूद के लिए कि इस बॉल को रोका जा सकता। शानदार तरीके से 4 रन हासिल किए। बेहतर लग रहे हैं आज। ऐसा लग रहा है कि उमैर बिन यूसुफ एक मकसद के तहत बैटिंग करने आए हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अपनी टीम को मुश्किलात से निकालना है, बड़ा स्कोर करना है। बहुत बेहतरीन अप्रोच है ये। 4 रन हासिल करने के बाद उनको एहसास हुआ कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल है, उसे छोड़ना आना चाहिए प्लेयर को। अच्छा लेफ्ट किया था यहाँ पे, ऑप्शन से बाहर ये गेंद दी उमैर बिन यूसुफ ने। नौजवान प्लेयर सलाहियतों से माला माल, परफॉर्म करना होगा इस लेवल पर। हम बात करते हैं अंपायर नासिर हुसैन की, जो बुनियादी तौर पर बेसिकली प्रोफेसर हैं। ये हैं प्रोफेसर नासिर हुसैन, और कई अंपायर हैं जो प्रोफेसर है। प्रोफेसर आफ्ताब गिलानी भावलपुर यूनिवर्सिटी में दरअसल तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। एक कराची यूनिवर्सिटी में थे, मशहूर अंपायर थे प्रोफेसर साकिब कुरैशी, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे वो। लेकिन उनकी जिस तरह केमिस्ट्री में आयोनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, उनकी प्लेयर के साथ बॉन्डिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बहुत ही स्ट्रिक्ट अंपायर थे साकिब कुरैशी। अब इस दुनिया में नहीं रह, अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाएं। और इसके अलावा प्रोफेसर अनीस जो मैच रेफरी हैं, तो अब बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं वो मैच ऑफिशियल आ रहे हैं, एक अच्छा साइन है। ओवर मुकम्मल 45 पर 1। सिंध की लीड जो है वो 13 रन की हो गई है। एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे जारी है उमैर बिन यूसुफ और खुर्रम मंजूर की जानिब से। और अब हम देखेंगे कि बॉलिंग में एक तब्दीली की गई है, मोहम्मद साद को लाए गए हैं। और पहली इनिंग में तो एक सरप्राइज पैकेज साबित हुए थे वो दोनों टीम्स के लिए। सरप्राइज सेंट्रल पंजाब के लिए, शॉकिंग सिंध के लिए, क्योंकि 3 बड़ी विकेट्स हासिल की थी इन्होंने अपनी पहली इनिंग में। और आगाज़ किया था पहली ही बॉल पे असद शफीक को बोल्ड करके। क्या वही परफॉर्मेंस रिपीट कर सकेंगे? क्या ये कंडीशंस इनकी बॉलिंग को सूट करती हैं? ये देखना होगा हमें। ये अच्छा मुकाबला होगा। खुर्रम मंजूर क्योंकि जारहाना मूड में है, रन दे रहे हैं। ये देखिए पहले ही बॉल पे फिर, जी हाँ, कट मारने गए थे और एक बार फिर मोहम्मद साद ने पहले ही बॉल पे विकेट हासिल कर ली। ये शानदार चेंज रहा है, बहुत ही कमाल बॉलिंग मोहम्मद साद की जानिब से। बड़ी विकेट हासिल की खुर्रम मंजूर की। ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब हुए साद और खुर्रम मंजूर। पहले गेंद को कट खेलने गए, बल्ले का बारी किनारा लेकर गेंद सीधी ग्लव्स में महफूज हुई और बिल्कुल विकेटों के साथ लगे खड़े थे अलीशान। कोई गलती नहीं की अलीशान ने, और खुर्रम मंजूर जो आहिस्ता आहिस्ता खतरनाक साबित हो रहे थे, आउट हुए। देखें काफ़ी ऑप्शन से बाहर गेंद, 2 स्लिप भी लगी हुई हैं, उसके बाद इतनी बाहर गेंद चेस करने चले गए और गेंद बल्ले के निचले किनारे से लगने के बाद अलीशान के हाथों में महफूज। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे विकेट कीपिंग अलीशान की जानिब से और खुर्रम मंजूर का डिपार्चर। जी हाँ, बहुत ही ईजी लगे थे शायद बॉल को, 23 रन बना सके। अलीशान ने कैच किया मोहम्मद साद की बॉल पे। सिंध 45 पर 2। ये शानदार कमबैक रहा है सेंट्रल पंजाब की जानिब से। और मोहम्मद साद को अब हम कह सकते हैं मैन विद द गोल्डन आर्म। पहली इनिंग में पहले बॉल पे इन्होंने असद शफीक की विकेट हासिल की थी। दूसरी इनिंग में पहली ही बॉल पर खुर्रम मंजूर की विकेट हासिल की। और ऐसा होता नहीं है यूजुअली कि आप पार्ट टाइम बॉलर्स कंसिस्टेंटली 2 इनिंग्स में इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकें। यहाँ पे थोड़ा शिकवा करना होगा सिंध की बैटिंग पे, जिस तरह की शॉट के लिए। 1000 रन साद खान के करियर में 17
मैचेस में 43 की एवरेज, शानदार एवरेज, 300 और 550 उनके नाम पे हैं, 129 उनका बेस्ट स्कोर है। बहुत ही टैलेंटेड यंग प्लेयर हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि वन फॉर द फ्यूचर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। साद खान, यहाँ पे भारी जिम्मेदारी है, यहाँ पे अब तो साद को संभालना मुश्किल हो गया है। जिस तरीके की वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, बहुत ही शानदार। पहली गेंद बहुत ही खूबसूरत ऑन पे खेले, गैप में खेलने में कामयाब हुए, फील्डर गेंद तक पहुंचे, अपने पांव से गेंद को रोका और इसी असना में तीसरे रन का इजाफा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों नौजवान खिलाड़ियों के दरमियान। 16 रन की बढ़तरी, 3 रन के साथ अपने स्कोर का आगाज किया। या अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट है ये मोहम्मद साद की जानिब से सेंट्रल के लिए। देखिए बहुत बाहर गेंद था, फिर चेज करने चले गए, नहीं सीख रहे हैं अपनी गलतियों से। रिदम तोड़ा है साद के इस ओवर ने सिंध की बैटिंग का। सरफराज अहमद, सिंध के कप्तान, पाकिस्तान के फॉर्मर चैंपियन कैप्टन, टीम को ज्वाइन करते हुए अब से थोड़ी देर पहले नेट्स में ट्रेनिंग कर रहे थे सरफराज अहमद, और अब यहाँ पे अबरार अहमद के साथ महव गुफ्तगू हैं। इसके अलावा स्क्रीन में आपको फराज भी नज़र आ रहे हैं, फराज अली। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, चैंपियन कैप्टन रहे हैं सरफराज अहमद। बहुत ही शानदार नफीस इंसान, अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे टीम मेंबर हैं, अच्छे लीडर हैं, और जब अगले मैच में सिंध के लिए आ जाएंगे तो सिंध की टीम और मजबूत हो जाएगी इनके आने से। एक और अच्छी गेंद यहाँ पे साथ की, परेशान किया उमर बिन यूसुफ को। आपने सब बॉलर्स को हैंडल कर लिया बैटर्स ने, मीर हमजा हो, ताबिश खान हो, सुहेल खान हो, लेकिन मोहम्मद साद को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। बहुत ही कमाल पे, बहुत अच्छी लेंथ पे पड़ा हुआ बॉल। इस मरतबा दिफा अंदाज से खेले उमर बिन यूसुफ, इस वक्त डेंजर मैन बने हुए, साथ अनप्लेबल बने हुए। गुज़िश्ता इनिंग में 3 विकेट हासिल की, इस इनिंग में भी अपने इनिंग को मिक्सअप करते हुए। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन, बहुत अच्छा रहा साद का अपने आप को बॉलिंग पे लाने के लिए। यहाँ पे अंपायर का डिसीजन देखना होगा कि क्या चाय का वक्फा हो गया, नहीं, शायद एक ओवर और जल्दी से करवाया जा सकता है। 1 मिनट अभी बाकी है, 13 ओवर्स के बाद 48 पर 2 सिंध। 16 रन की बढ़तरी अब सिंध को हासिल हो चुकी है, और कम से कम ज़रूर जहन में होगा कि 250 रन की बढ़तरी होगी जब ये मैच सिंध के हक़ में मुवाफ़िक हो सकता है। 48 2 विकेटों के नुकसान पे 13 ओवर से खेल के बाद फ़हीम अशरफ कंटिन्यू करेंगे और सामना करेंगे उनका साद खान। दोनों एक दूसरे के साथ हबीब बैंक की जानिब से काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं। साद खान ने हबीब बैंक की जानिब से डेब्यू में 50 रन की इनिंग खेली थी, अपना फर्स्ट क्लास जो डेब्यू किया था साद खान ने। अच्छा आगाज किया है साद खान ने, पॉजिटिव, पहले बॉल पे 3 रन बनाए और अच्छा बाउंसर है ये। फ़हीम अशरफ ने अभी सिर्फ 16 रन दिए अपने 6 ओवर्स में, विकेट हासिल नहीं किए। ये थोड़ा परेशानी वाली बात है सेंट्रल के लिए, पहली इनिंग में ही सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके थे, और यहाँ पे सेंट्रल पंजाब चाहेंगे कि 1 विकेट अगर और हासिल कर सकें इस ओवर में, चाय के वक्फे से पहले। असद शफीक, फवाद आलम, मोहम्मद हसन सब बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन जितना वक्त अभी इस मैच में बाकी है, चाहेंगे कि एटलीस्ट आज के दिन तो बगैर किसी विकेट और गवाई निकाला जाए। और इस मरतबा स्लिप में गेंद, साद खान अपनी जगह मौजूद है और अब उन्होंने चलना शुरू किया, तो बड़ा जबरदस्त यहां पे कैच। इमरान डोगर थे आई थिंक फील्डर जिन्होंने कैच किया, और साद खान। जी हाँ, ये बहुत ही शानदार बॉल रहा है। जब हम बात ही कर रहे थे इनके टैलेंट की, इनके स्किल की, और इस विकेट की, अपनी विकेट गिरा दी। देखिए बहुत ही तेज शार्प कैच पकड़ा डोगर ने, बहुत तेजी से बॉल गया था उनकी जानिब, और मोहम्मद साद ने अपनी विकेट गवा दी। साद खान ने, डिसअपॉइंटिंग एंड रहा ये।
3 रन बनाने के बाद साद खान 3 गेंदों का सामना करने के बाद आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी सिंध के। जी और इसके साथ ही चाय का वक्फा यहाँ पे दूसरे दिन स्टेट बैंक में हो गया और बहुत ही शानदार इख्तिताम इस सेशन का किया है सेंट्रल पंजाब ने। 2 विकेट्स हासिल करके 2 बड़ी विकेट्स खुर्रम मंजूर और साद खान की सूरत में हासिल की मोहम्मद साद और फ़हीम अशरफ ने। अब तक डोमिनेट किया है इस पूरे मैच में सेंट्रल पंजाब ने सिंध पर। ऐसा लग रहा था कि दूसरी इनिंग में ज़्यादा बेहतर खेलेगी सिंध, लेकिन अब तक सिंध उस अंदाज से खेलने में कामयाब नहीं हुई। 3 विकेटें जल्द गिरा दी। एहसान अली अनलकी रहे। इसके अलावा खुर्रम मंजूर ने एक रैकलेस स्ट्रोक खेलने की कोशिश की और अब साद खान कट करने गए थे और बड़ा ज़बरदस्त कैच था इमरान डोगर का। जी हाँ, ये बहुत ख़राब क्रिकेट रही। स्पेशली जो अगर दोष देना होगा वो खुर्रम मंजूर को देना होगा। जिस तरह की शॉट उन्होंने मारी, जिन्होंने अप्रोच किया, 6 विकेट इस सेशन में गिरे, 72 रन सिर्फ बन सके और ये सेशन डेफिनेटली सेंट्रल के नाम रहेगा। और क्रेडिट देना होगा जिस तरीके से कप्तानी की है मोहम्मद साद ने, जिस तरीके से फील्डिंग की है, जिस तरीके से कैचिंग हुई है। आबिद अली अनलकी रहे, 100 रन नहीं बना सके, लेकिन अच्छी शानदार इनिंग रही उनकी। और अली यहाँ पे सिंध के लिए हम क्या अल्फाज यूज करें? जी हाँ, 72 रन सेशन में बने और 3 विकेटें गिर चुकी हैं। तो ये खुद स्कोर कार्ड जो है इनकी ज़बूहाली की दास्तान बताता हुआ। खुर्रम मंजूर 23, एहसान अली 4 और 3 रन बनाकर साद खान आउट हुए। महज 13.2 ओवर से अब तक खेल हुआ और 48 3 विकेटों के नुकसान। ये खुर्रम मंजूर की कॉल थी, लेकिन एहसान अली बहुत ज़्यादा फॉलो अप कर गए थे। बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा ये इन द एंड। और ये बहुत ख़राब शॉट, जितनी भी इस मैच में सबसे ख़राब शॉट की बात की जाए वो सबसे ज़्यादा खुर्रम मंजूर की। एक और ख़राब शॉट, लेकिन उतना ही शानदार कैच इमरान डोगर की जानिब से। इनिंग का इख्तिताम किया साद खान की। एक विकेट हासिल की फ़हीम अशरफ और साद ने और एक खिलाड़ी एहसान अली की सूरत में रन आउट हुआ। और
खुशामदीद, चाय के वक्फे के बाद का खेल आपके लिए क्या आ रहे हैं ये मैच समरी। अब तक की सिंध 155 पे 9 खिलाड़ी आउट। सेंट्रल पंजाब ने उसके जवाब में 187 रन बनाए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और सिंध अब अपनी दूसरी इनिंग में 48 रन पे 3 खिलाड़ी आउट। मुश्किलात का सामना है सिंध को, सिर्फ 16 रन की लीड जो है वो अब तक हासिल कर चुके हैं। असद शफीक और उमर बिन यूसुफ। असद शफीक का गुज़िश्ता इनिंग में ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सके थे। चाय के वक्फे के बाद ज़्यादा तरोताज़ा ताज़ा दम सेंट्रल पंजाब। अब तक डोमिनेट किया इस खेल में सेंट्रल पंजाब ने। आबिद अली के जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग दिखाई और परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, 98 रन बनाए। और गुज़िश्ता मैच में भी हमने देखा 2 नर्वस 90s हुए थे, उमर सिद्दीक और आगा सलमान। और यहाँ पर आबिद अली सादर ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की है। गुज़िश्ता इनिंग में भी 3 विकेटें हासिल की और इस इनिंग में भी उन्होंने खुर्रम मंजूर की बड़ी वाइटल विकेट हासिल की। असद शफीक नए आने वाले बैट्समैन, बड़ी भारी जिम्मेदारी है सीजन प्लेयर असद शफीक के कांधों पर। मिडिल स्टंप का गार्ड लेते हुए असद शफीक। अब तक 172वां मैच खेल रहे हैं, 10,521 रन स्कोर किए, 40.61 इनका एवरेज रहा, 57, 50, 100 का हिस्सा इन्होंने 25 बार क्रॉस किया, 25 सेंचुरी इनके नाम के आगे, 223 कैरियर बेस्ट। बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है असद शफीक का और आज इनको अपनी सलाहियतों का इजहार करना होगा इस मुश्किल सिचुएशन में। आज इस 4 रोज़ा मैच का दूसरा दिन और दूसरे दिन के फाइनल सेशन के खेल का आगाज़ अब से थोड़ी देर के बाद हुआ चाहता है। और अमर पहली कोशिश क्या होगी इन दोनों की? जाहिर है कुछ पॉजिटिव माइंडसेट से इस बार सिंध की टीम दूसरी इनिंग में आई थी, लेकिन खूबसूरत शॉट इस बार असद शफीक का। पहली बॉल पे खूबसूरत टाइमिंग, फ्रंट फुट पे आए और टाइम किया सिर्फ बॉल को। कवर का गैप भरपूर फायदा उठाया, हाफ वॉली थी, 4 रन हासिल की। अपनी क्लास की 81 की असद शफीक ने पहली गेंद पे 4 रन हासिल किए। कॉन्फिडेंस यकीनन बहाल हुआ होगा असद शफीक का। फ़हीम बशरफ और असद शफीक भी काफ़ी अरसे हबीब बैंक से एक साथ खेलते रहे, पाकिस्तान की टीम में एक साथ रहे, काफ़ी सामना किया होगा एक दूसरे का नेट्स में। लेफ्ट किया इस मरतबा असद ने। बीस रन की बढ़तरी है सिंध की। 250 रन अमर फेयर इनफ होंगे? जी हाँ, फेयर इनफ तो ज़रूर होंगे, लेकिन अभी बहुत दूर की बात आपने कर दी। 250 रन, 230 रन होंगे जो मजीद करने हैं और यकीनन कर सकती है, कैपेबिलिटी है सिंध की टीम में। और इस मरतबा शॉर्ट बॉल थी, पॉइंट के फील्डर को क्रॉस करती हुई गई और ऐसा लगता है कि हाथ से लगने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब ट्रैवल करते हुए और खुद गेंद की रफ्तार बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब धीमी हुई। अच्छी कोशिश थी यहाँ पे रिजवान हुसैन की जानिब से। देखना ये होगा क्या यह गेंद कैच की सूरत में गई थी रिजवान की जानिब या एफर्ट बड़ी जबरदस्त थी रिजवान की। जरा सा पीछे गिरा हुआ बॉल कट मारा और बहुत जोर से मारा और ये देखिए रिजवान और हाथों से होती हुई उनके लग के अच्छी कोशिश, लेकिन इस लेवल पे मेरे ख्याल से अली सलमान ये कैच पकड़े जाने चाहिए। हाँ, अली जरियाब थे इनफैक्ट फील्डर और अच्छे फील्डर है अली जरियाब।
और असद शफीक जैसे बैट्समैन का कैच है, यहाँ पे ड्रॉप होना यकीनन ये काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। 3 रन का इजाफा स्कोर में बहरहाल हुआ। दिफा अंदाज से खेले, ये 250 से ज़्यादा की बर्तरी मुझे लग रही है। आप कह रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल है, तरी मुझे होती नज़र आ रही है। मैच इंटरेस्टिंग होता नज़र आ रहा है। 14 मुकम्मल 55 पे 3। जी हाँ, हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। ज़ाहिर है क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर होगा, ये मैच क्लोज होगा। लेकिन इस वक्त जो है वो मुझे मुश्किल लग रहा है ये और जिस अंदाज से सिंध के बैट्समैन जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, एक मुस्बत अंदाज ज़रूर है लेकिन काफ़ी हद से ज़्यादा जारहाना अंदाज अपनाया हुआ है। और जो शॉट्स की हम पहले बात करते रहे कि इस विकेट पे तमाम तर शॉट्स जो है वो खेलना मुश्किल है। तो देखें, असद शफीक और फवाद आलम जैसे प्लेयर्स अभी बाकी हैं सिंध के लिए। तो जो 250 रन का आप हदफ उनको दे रहे हैं वो बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो नामुमकिन है। देखते हैं कि सिंध की क्या हिकमत अमली अब रहती है आगे। साद जिन्होंने गुज़िश्ता इनिंग में 3 विकेटें हासिल की, इस इनिंग में उन्होंने खुर्रम मंजूर की बड़ी वाइटल विकेट हासिल की। और जितना हमें साद को क्रेडिट देना होगा इतना ही क्रेडिट हमें विकेट कीपर अली शान को भी देना होगा, क्योंकि जब साद गेंद करते हैं तो अली शान विकेटों से बिल्कुल चिपक के खड़े होते हैं। बैट्समैन ज़रा से भी अगर स्ट्रेच करे अपने पाँव को तो स्टंपिंग के चांस होते हैं। तो ये प्रेशर है जो विकेटों के आगे और विकेटों के पीछे से डाला हुआ है सेंट्रल पंजाब ने। तो बैट्समैन इस वक्त गू की कैफियत में रहते हैं और उसका फ़ायदा उठाना पड़ता है। और आप देखें कि जैसे ही मैंने तस्करा किया फ़ौरन अली शान जो है स्टंप्स पे आ गए। और इससे पहले जब मैंने कहा था तो कि बहुत देर से आगे खड़े हैं, इनको पीछे जाना चाहिए गुज़िश्ता इनिंग में, तो उस वक्त ये पीछे चले गए थे। उस शाह फैसल मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स शेयर कर रहे थे। खासी फर्मा बरदारी का मुजाहरा कर रहे हैं अली शान को अली सलमान का इतनी तो बात सुननी चाहिए। बैक फुट पे पंच किया, बड़ा खूबसूरत शॉट, बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी। 4 रन, बहुत ही अच्छा बैलेंस और सारा सी शॉट और भरपूर फायदा उठाया इसका, कोई ज़्यादा पेस नहीं है। 4 रन हासिल किए। बहुत ही उम्दा दिफा अंदाज, भरपूर बैकलिफ्ट के साथ गुज़िश्ता स्ट्रोक खेले असद शफीक। 12 अपने कैरियर में इस किस्म की सूरत हाल से गुजर चुके हैं असद शफीक। और इसके साथ साथ गुज़िश्ता मैच में केपी के खिलाफ 176 की पार्टनरशिप दी थी। इसी किस्म की सूरत हाल में असद शफीक और खुर्रम मंजूर ने अगर बॉलिंग देखें साथ की तो गेंद को आगे ला के छोड़ रहे हैं, वो बैट्समैन को ड्राइव खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो एरिया है जैसे बैट्समैन को काफ़ी मुश्किल हो रही है। और दीगर जो बॉलर है मोहम्मद अली और दीगर जो बॉलर है शॉर्ट बॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से खुर्रम मंजूर और दीगर बैट्समैन को आसानी के साथ स्ट्रोक खेलने का मौका मिल रहा था। पंद्रह ओवर का इख्तिताम, 59 में 3 खिलाड़ी आउट। वाज़े तौर पर एक हिकमत अमली जो नज़र आ रही है सिंध की, वो शॉर्ट बॉल के ख़िलाफ़ है। मेरे ख्याल से कुछ इज्तिमाई फ़ैसला ये बैट्समैन ने किया है कि जो बॉल शॉर्ट होगी उसका भरपूर फ़ायदा उठाना है और उस पर रन्स बनाने हैं, क्योंकि इस विकेट पे अच्छा बॉल पड़ भी सकता है। बैट्समैन के दिमाग में ये बात चल रही होती है, तो वो जो भी बॉल, जो भी मौका रन्स बनाने का है उसको हाथ से जाने नहीं दे रहे। लेकिन अब तक जो है वो सिंध के प्लेयर्स बैकफुट पे तो ज़रूर शॉट्स अपने खेल रहे हैं सारे, लेकिन कभी कभी गैर जिम्मेदाराना शॉट्स भी मार देते हैं। एतमाद के साथ खेले नौजवान उमर बिन यूसुफ, एक्सपीरियंस असद शफीक के साथ क्रीज को शेयर करते हुए। इन दोनों की मौजूदगी यकीनन सिंध के लिए जो है वो काफ़ी खुशाइंद है।
250 से ज़ायद रन की बढ़तरी है। 250 रन इस मैच का मूड और मोमेंटम सेट करेंगे। 2 स्लिप एक गली के साथ गेंद करते हुए फ़हीम अशरफ। कवर्स में खेले, एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे, फील्डर वहां पे मौजूद थे, रन नहीं मिल सकेगा। साद डेंजर मैन काफ़ी नपीतुली बॉलिंग कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं अपनी डिलीवरीज को। साथ 26 डिग्री सेंटीग्रेड कराची का दर्जा हरारत, 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चलते हुए, और ये 5 किलोमीटर फी घंटे की जो हवा की रफ्तार है ये साद की बॉलिंग के लिए काफ़ी मुआफिक है, क्योंकि विद द विंड गेंद कर रहे हैं साद। आबिद अली डेंजर मैन, बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन आबिद अली। अगेंस्ट बांग्लादेश उन्होंने अपनी सेंचुरी मिस की, 93 पे आउट हुए, और आज यहाँ पर 98 पर आउट हुए, लेकिन काफ़ी सेटिस्फाइड थे अपनी परफॉर्मेंस से और काफ़ी खुश थे कि उनकी इस बैटिंग की बदौलत सेंट्रल पंजाब को लीड हासिल हुई। यहाँ इस वक्त जो मैच बराबर, अगर आप उसको कहें कि तकरीबन बराबर है मैच, तो ये आबिद अली की इस इनिंग की मरून मिन्नत है। सेंट्रल पंजाब ने 187 रन स्कोर किए और उसमें से 98 रन महज आबिद अली के बैट्स की वजह से। अमूमन कहते हैं हम बैट की वजह से, लेकिन इनके बैट्स की वजह से, क्योंकि एक बैट इनका टूट गया था। और ये आपकी स्क्रीन पे उमेर बिन यूसुफ, एक और बहुत ही बासलाहियत खिलाड़ी, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं इनकी, न सिर्फ सिंध की टीम की बल्कि और तमाम जो इनके चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो समझते हैं कि इनको काफ़ी आगे क्रिकेट में जाना चाहिए। कवर्स में फील्डर मौजूद हैं, काफ़ी इंगेज रखा हुआ है साथ को सिंध के बैट्समैन ने। बॉलिंग और बैटिंग भी बड़ी अच्छी की थी साथ ने, और फील्डिंग भी अच्छी करते हुए, यूटिलिटी प्लेयर हैं साथ। और ये फवाद आलम सिंध के कप्तान, एक अच्छी इनिंग फवाद की मुंतज़िर, और उसके बाद फिर फवाद का मखसूस अर्तुगल गाजी वाला मखसूस अंदाज। बड़ा अहम किरदार होगा फवाद आलम का इस मैच में, अगर सिंध ने कामयाबी हासिल करनी है तो। व्हाट अ स्प्लेंडेड स्ट्रोक प्लेड बाय उमर बिन यूसुफ, और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर खूबसूरत अंदाज से खेला गया स्ट्रोक से, पुश किया है बैकफुट पे जाके, फ़हीम अशरफ की पेस को इस्तेमाल किया और गेंद बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही अच्छा शॉट था ये बैकफुट पे, देखिए बॉल को करीब आने दिया और टाइम किया उसको। बैट की इनकी जो स्पीड है वो बहुत ही शानदार है, तेजी से बैट और पंच, जो बहुत ही अहम सबसे चीज़ है इस शॉट में, इन्होंने पंच किया, ज़्यादा ज़ोर से मारने की कोशिश नहीं की, और प्लेसमेंट जो थी बॉल की बेहतरीन। 16 ओवर का इख्तिताम, 63 पे 3 खिलाड़ी आउट। वकास मकसूद हैं यहाँ बॉलिंग के निशान पे जाते हुए, और बड़ा खूबसूरत अंदाज था यहाँ पे जहाँ 4 रन हासिल किए। और अमर, ये हम बात भी कर रहे थे कि जो शॉर्ट बॉल करेंगे वो आसानी के साथ जगह मिल जाएगी स्ट्रोक खेलने की, आगे गेंद करेंगे तो मुश्किलात होगी। साद ने प्रेशर डाला था और अब साद को जो चेंज किया है, अमर किस तरह देखते हैं इस फैसले को? जी अच्छा मुनासिब फैसला लग रहा है, क्योंकि साद इरेगुलर बॉलर है, इफेक्टिव ज़रूर है, लेकिन जो टीम में बॉलर के तौर पे जो हिस्सा ले रहे हैं, जाहिर है उनको वो फर्स्ट चॉइस भी होते हैं, उन्हीं से तवक्को की जाती है कि वो ब्रेक थ्रू दिलवाएं आपको। तो साद ने मेरे ख्याल से अपना काम फिर इस बार, पिछली इनिंग की तरह इस बार भी अपना काम उन्होंने कर दिया, उनका काम ख़त्म हो गया, उन्होंने विकेट दिला दी। अब बाकी मानदा बॉलर्स की जिम्मेदारी है कि वो
अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल करके बैट्समैन को परेशान करें, विकेटें दिलाएं अपनी टीम को। आपने अब से थोड़ी देर पहले देखा असद शफीक का स्टांस, और आपने देखा होगा कि असद शफीक का जो स्टांस है, जो अमूमन प्लेयर को अगर आप दिखाते हैं, अच्छा मैनेज किया था इस मौके पे असद शफीक ने। थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस ज़रूर मिला, असद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस ऑकवर्ड बाउंस को। ये आप देख सकते हैं, ये जो जूते पहने इनमें कीलें लगी हुई हैं और इनको स्पाइक्स कहा जाता है। बैटिंग स्पाइक्स और बॉलिंग स्पाइक्स अलग अलग होते हैं और बहुत कम लोगों के इल्म में ये बात होगी। ये नो बॉल का सिग्नल है इस मौके पे वलीद याकूब की जानिब से। नो बॉल, पैर सफेद लाइन से आगे उनका। स्पाइक्स की मैं तस्करा कर रहा था, जो जूतों में कीलें लगी होती हैं उनको स्पाइक्स कहा जाता है, और 1890 में विलियम फॉस्टर जोसेफ ने इसको इन्वेंट किया था। तो एक सदी का किस्सा है, कोई पल दो पल की बात नहीं। अमूमन लोग समझते हैं कि स्पाइक्स की इन्वेंशन जो है वो इस सदी में हुई है या अभी रिसेंटली ये इन्वेंट हुए हैं या रिसेंटली डिज़ाइन हुए हैं, लेकिन 1890 में विलियम फॉस्टर जोसेफ ने स्पाइक्स को इन्वेंट किया था और उसके बाद फिर स्पाइक्स रनर्स ने पहनना शुरू किए। बहुत ही खूबसूरत खेले इस मौके पर असद शफीक, और कोई भी लूज डिलीवरी जो मिलती है सिंध के बैट्समैन को उस पर बाउंड्री खेलने से नहीं चूक रहे। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर कवर पोजीशन पर। क्या खूबसूरत शॉट असद शफीक ने खेला। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर काफ़ी जगह उनको मिली, अच्छा बैलेंस और गैप में खेले, कवर्स में, शानदार शॉट। सॉफ्ट हैंड के साथ खेले, तेजी के साथ ये रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के दरमियान। एक्सपीरियंस असद शफीक का बड़ा अच्छा साथ दिया यंग उमैर बिन यूसुफ ने। बड़ी अच्छी रनिंग, तेज भागते हैं जाहिर है उमैर बिन यूसुफ, और अच्छी कॉल, कोई हेजिटेशन नहीं दोनों के दरमियान, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, आसानी से रन मुकम्मल कर लिया। नो बॉल का सिग्नल। काफी नो बॉल्स हुई हैं इस इनिंग में अब तक। एक्स्ट्रास की तादाद 7 और अब इस एक्स्ट्रास को मिला के 8, जिसमें 3 नो बॉल्स, 4 लेग बाई, 1 बाई। काफी आगे इस बार भी पैर उनका। असद शफीक अब तक बहुत ही पुरएतमाद लग रहे हैं। अब तक जितने ही बैटर्स ने सिंध के आके खेला है वो इनमें सबसे ज़्यादा अच्छी अब तक प्लानिंग और एक मखसूस हिकमत अमली नज़र आ रही है उनकी बैटिंग में। ओवर मुकम्मल हुआ 70 पे 3। और अगर फवाद आलम को इस लॉन्ग शॉट में देखें तो काफ़ी देर से फवाद आलम पिच पे भी खड़े हो जाते हैं और ड्रेसिंग रूम में भी खड़े रहते हैं और अपने आप को वार्म अप करते हुए फवाद आलम रिलैक्स नजर नहीं आ रहे। और अब 7 को सामने वाले एंड से लेकर आए।
कप्तानी से पूरी तरह लुत्फानंदोज होते हुए साथ। ऊपर चढ़ के खेले इस मरतबा, और इसकी वाहिद वजह यह थी कि विकेट कीपर पीछे हैं। विकेट कीपर आगे आएंगे और आगे आ गए। ये देखिए, तो अहमद सईद यकीन नहीं, वाटर कूलर तो मेरा हुआ। ये तीसरी मरतबा हुआ है। अच्छी फील्डिंग यहाँ पे कवर्स में आबिद अली की जानिब से, यकीनी रन महफूज की अपनी टीम के लिए, और पूरी टीम ने दाद दिया आबिद अली को। अच्छा शफीक हैरत से देख रहे हैं कि क्यों कर इस गेंद को स्टॉप किया आबिद अली ने। यकीनी रन महफूज किए यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं असद भी। बहुत अच्छा शॉट था, यकीनी 4 रन होते मेरे ख्याल से अगर आबिद अली बीच में ना आते तो। बड़ी भारी जिम्मेदारी और मुस्बत एक माइंडसेट के साथ आए हैं वाज़ेह तौर पर असद शफीक, तजुर्बे का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए। दिफाई अंदाज से अगले कदमों पे खेले। काफ़ी बड़ी बैटिंग है सिंध के पास अभी भी। इस पेयर के बाद फवाद आलम जैसे बैट्समैन मौजूद है, फिर सोहेल खान जिन्होंने 65 रन की इनिंग खेली, मोहम्मद हसन। तब ये बैटिंग है सिंध के पास और ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी जानिब साद खान डेंजर मैन बने हुए। एरियाज अपने चूज किए हुए हैं असद शफीक ने। कोई भी बॉल जो उनके ड्राइविंग लेंथ पे होता है, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि मुंह पे गिरा हुआ बॉल जो होता है, वो उसको ड्राइव मारने से नहीं चूक रहे। और दूसरी जो जगह उन्होंने जिस पे वो रन्स बनाने पे जा रहे हैं वो शॉर्ट बॉल है। शॉर्ट बॉल तमाम सिंध के बैट्समैन, कोई भी जो है वो इस इनिंग्स में अभी तक शॉर्ट बॉल को किसी ने भी जो है वो जाने नहीं दिया। ओवर मुकम्मल हुआ 70, 3 विकेटों के नुकसान पर। जो भी आगे गिरी हुई गेंद होती है उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन शॉर्ट बॉल बड़ी आसानी के साथ पिक हो रही है। बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं नहीं चल रही हैं। ज़बरदस्त क्रिकेट के लिए आइडियल कराची का मौसम, ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा धूप, ना ज़्यादा शिद्दत। इनसाइड एज हुआ, लेकिन अपील की थी यहाँ पर सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स ने और फील्डर्स ने। काफ़ी बड़ा इनसाइड एज था ये। बहुत बड़ा डिविएशन इनसाइड एज लगने की वजह से। आबिद अली ने इस विकेट पर सबको खेल के दिखा दिया एक बार किस अंदाज से इस विकेट पे खेला जा सकता है। बहुत ही शानदार उनकी बैटिंग थी। उन्होंने भी अपने एरियाज चूज़ किए हुए थे, पॉजिटिव रहे। जो उनको बॉल अपनी जो उन्होंने जगहें मखसूस देख रखी थी वहाँ मिलती थी तो उसको स्कोर उस बॉल पे ज़रूर करते थे। इसकी वजह से स्कोरबोर्ड भी आगे बढ़ता है और आपके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होता है। बॉलर भी ज़्यादा मोहतात हो जाता है कि उसको भी पता होता है कि गलती की गुंजाइश उसके पास भी नहीं है। इस मरतबा ऑन पे खेले, काफ़ी लॉन्ग चेस होगा ये मोहम्मद अली के लिए। डिफाइन लेग से दौड़ते हुए पहुंचे हैं मिड विकेट पोजीशन पर। 2 रन का स्कोर में इजाफा चहलकदमी के इस अंदाज में इन रन्स को मुकम्मल किया इन दोनों बैट्समैन ने। 40 रन की बरतरी अब सिंध को हासिल हो चुकी है। पार्टनरशिप आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम होते हुए। और आबिद अली की तरह अब तक असद शफीक ने इस दूसरे इनिंग में भी उसी हिकमत अमली से
बैटिंग वो कर रहे हैं, कोई स्कोरिंग जो उनका एरिया है उस पर किसी बॉल को जाने नहीं दे रहे और अवॉइड कर रहे हैं उन बॉलों पे शॉट मारना जो कि ख़तरनाक हो सकती हैं। लेंथ की बॉल, दूर से ड्राइव नहीं मार रहे। बहुत ही उम्दा फील्डिंग की है पॉइंट पे मौजूद फील्डर ने, यकीनी 4 रन महफूज किए अपनी टीम के लिए। सैफ बदर थे फील्डर, बहुत ही उम्दा फील्डिंग की है पॉइंट पोजीशन पे सैफ बदर ने, यकीनी रन महफूज किए। फुल स्टेज डाइव अपने दाएं जानिब, जबरदस्त। एंजॉय करे अपनी फील्डिंग को सैफ बदर। एहसास है सेंट्रल पंजाब को भी कि ज्यादा रन नहीं देने। और इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत खेले उमर बिन यूसुफ, भरपूर यहां पे बैक लेफ्ट का मुजाहरा और गेंद 4 रन के लिए एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पर बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही खूबसूरत शॉट, पिछले पांव पे अपना सारा वजन उन्होंने डाला और ये बैट देखिए एक बार फिर बॉडी से करीब बॉल को आने दे रहे हैं अपने पास, पंच करते हैं आखिर में। और यही तरीका है इस विकेट पे खेलने का, बॉल को अपने करीब आने दिया जाए, जिस्म से करीब बल्ले को रख के खेलें। इस मरतबा लेफ्ट किया जाने दिया और ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। बढ़तरी सिंध की अब 44 रन की, ज्यादा बेहतर निक में नजर आ रही है अब सिंध की टीम, इब्तिदाई गिरने वाली विकेटों का इजाला करते हुए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कुछ शॉट्स यहाँ पे हैं जो अवॉइड करने हैं आपने, वो यहाँ पे खेलना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है उन शॉटों को। और इस इनिंग में हम देख रहे हैं कि सिंध, ख़ास तौर पे ये दोनों बैट्समैन जो इस वक्त विकेट पे मौजूद हैं, बड़ी अच्छी हिकमत अमली है, उन शॉट्स को अवॉइड कर रहे हैं। ड्राइव दूर से अपने जिस्म के बल्ले को निकालना, कुछ एरियाज मखसूस बनाने पड़ेंगे जहां पे रन बनाने, और अब तक वही ऐसा ही किया है दोनों बैट्समैनों ने। दो स्लिप एक गली के साथ गेंद करते हुए साद गेंदों को आगे पिच कर रहे हैं। इसी एंड से गुज़िश्ता इनिंग में असद शफीक को आउट कर चुके हैं। इस मरतबा शॉट दी और ये वो एरिया नहीं है कि जहां पे गेंद कर दी है। साद को शॉर्ट बॉल की थी, ज्यादा पेस नहीं, आसानी के साथ 4 रन के लिए खेले असद शफीक। नासिर हुसैन की जानिब से 4 रन का सिग्नल। असद शफीक जैसे तजुर्बेकार और बासलाहियत प्लेयर को आप इस पेस पे, इस लेंथ पे बॉल नहीं कर सकते, और उन्होंने ये वाजे कर दिया कि क्यों नहीं कर सकते। तेजी से बैकफुट पे जाके खूबसूरत शॉट, 4 रन। ये वो लाइन है जहां पे 7 को गेंद करनी है। कवर्स में मौजूद है आबिद अली, इससे पहले सिंध को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं आबिद अली। कायद आजम ट्रॉफी में 249 रन की बड़ी ज़बरदस्त नॉट आउट इनिंग खेली थी इन्होंने सिंध के लिए। उनका कैरियर का हाईएस्ट स्कोर भी था। ड्राइव किया इस मरतबा सीधे बल्ले के साथ, गेंद बाउंड्री लाइन की जाने 4 रन के लिए। तो असद शफीक यहाँ पे बैक टू बैक बाउंड्रीज हासिल करते हुए। बहुत ही उम्दा शॉट, इस बार पूरा बल्ला दिखाया बॉलर को, और पहले भी वो कर रहे हैं, बॉल को आने दे रहे हैं अपने पास। पंच किया, हल्का सा टाइम किया, ये देखिए ये पंच आखिर में, और प्लेसमेंट बेहतरीन दोनों मिड ऑन और मिड ऑफ के फील्डर्स के बीच में। शानदार शॉट, 4 रन। और जिस तरह फुटबॉलर डॉज देता है इस अंदाज से जो है
उमर बिन यूसुफ ने अपने पाँव को गेंद की लाइन से हटाया। दोबारा अगर रीप्ले देखें तो नॉर्मल उन्होंने पाँव नहीं हटाया, पहले पाँव आगे ले गए, उसके बाद पाँव को उन्होंने घुमाया। अगर हम इसका रीप्ले देख सकें कि किस अंदाज से फुटबॉलर डॉज देता है अपने मुखालिफ खिलाड़ियों को। ये देखिएगा यहाँ से ये शॉट लगा, ये तब ओवर भी मुकम्मल हुआ 85 3 विकेटों के नुकसान पर। What an intense game of cricket we're just witnessing here at State Bank Sports Complex. It's Central Punjab versus Sindh, and Sindh at the moment are leading by 53 runs. What a wonderful counter-attack that has been from Asad Shafiq. 25 runs off 27 deliveries. He's not missed out on any opportunity given to score runs, and he's been well supported by the very solid Umar bin Yusuf. Mohammad Ali, we see now coming back to ball, has given away 14 runs in 2 overs. Shah Faisal alongside me. A good comeback by Sindh. Absolutely. Talking about Asad Shafiq's knock. Look at that, even that last one, he's going for it. His short little innings has been laced with some glorious stroke. Delightful cover drive. Width was on offer. Shot was on. This has been the quality of this inning from Asad Shafiq. He's not missed out on opportunities to score runs. The right way of playing on this pitch though. He would know that any lead over 150 would make things very interesting for the 4th inning. Very good cricket. Yeah, but you have to say the battle in the last half an hour after tea has been exhilarating. We've seen, like I said, some wonderful, delightful strokes, but also some magnificent fielding, first from Abid Ali, then Saif Badr. They're in the battle. Central Punjab also realized that. A couple of wickets here could really put them in the driver's seat. Highest quality cricket from both sides. Fielding, bowling, batting, top quality. Intense. They know the value of this partnership, Shah Faisal. They don't want to miss out on this opportunity. If they can get the lead to till it's 53 at the moment, till 250, will put them in driving seat for sure. Yeah, definitely that 250 will be a huge psychological boost. But remember, to get there is still a long, long way to go. Things have moved very quickly in this game already. How well Asad Shafiq has come back. Oh, that kept low. His eye might have lit up when he saw that length. Stayed low. That is why we say that anything above 150 will make things very interesting for that 4th inning. Central know that they have to bat last on this inning. They would want to wrap it up quickly. Absolutely, and that similar length we've already seen. This is happening for the 2nd time. First over of the Sindh innings also produced one that almost rolled along the surface. At back of a length, lucky on neither occasion it was straight enough. Oh, that was wanted to play it towards onside. Got to be spot on with your shot selection, Asad Shafiq. Don't want to lose your wicket after having this sort of start, because it's not easy for a new batter. Shipping to play it onto the onside, got the leading edge. Got lucky. The key is to keep looking to play straight here.
85 in 21 overs. Over 4 per over. This is terrific. That has been their strength. Searching for runs. End of 21 overs, it's 85 for 3. Beautiful pictures. The wind has really picked up in the last hour or so. So has the scoring rate from Sindh. 25 of 33. Asad Shafiq. Umair bin Yusuf is really fighting hard. He got to 22 in the first innings. He's batting on 22 now. Looked really solid. And I was talking about that run rate, Ali. 21 overs, 85. More than 4 per over. Terrific speed of the game. Wickets, runs, excellent fielding. You name it. Khurram Manzoor played a wrong shot. It's been all fielding. How well Abid Ali has fielded. He was wonderful in the covers. Excellent fielding by him. And how well has Saad bowled in this match? 1 for 16 of his 4 overs in the second innings. Got the wicket of very first ball of his spell. Umair is extra careful against him though. Remember, he knocked him over in the first innings with that big in-swinger which went through the gate. He's done his part. He's got the wicket of Khurram Manzoor already. Cuts straight to the man. Fielding position have been spot on. They have to stop the flow of runs too and get wickets. They have to keep a balance. Mohammad Saad, the captain for Central Punjab. Do you think he's done his job after taking the wicket? Would you take him off? Bring one of the regular bowlers? He's bowling well. He's bowling in that right length and right areas. Had he was bowling like Asad Shafiq or Khurram Manzoor did for Sindh, I would have definitely changed him. But he's into his 5th over, just given away 16 runs. One important wicket of Khurram Manzoor forced him to play a bad shot. But this player has managed him well, especially Asad Shafiq. He's looked to attack at him. Probably that is the right way, because if you keep on blocking him, probably will get him wicket sooner or later. You're right in saying he's still putting the ball in the right areas. That's you ask of a part-timer. And that's why he's still bowling. Wonderful shot through the gap. 2 fielders behind that ball. But ball will win the race. 4 runs for Umair bin Yusuf. Beautiful shot. Perfectly timed and perfectly placed. The minute I praise his accuracy, he bowls a leg stump half volley. But look at Umair, the power he generates from his wrists. The turn of the blade at the very last minute to find the gap. And the timing on that shot. He's been prolific in that mid-wicket area. Very impressive knock so far from the youngster. And again, but quite timed it nicely. Nicely enough to play it straight to the fielder. He's looking really dangerous. Very good batting. End of 22 overs, 89 for 3 Sindh. Asad Shafiq. Fawad Alam is waiting in the wings. Another important cog in Sindh's wheel. Good turn of the race. Chance! Umair. That's the better technique. The youngster dragging the bat, fully extending his arms to get in. Direct hit. I think he still would have made it. Any youngsters watching? This is how it should be done. I'm not sure if that was a good run. The ball went straight to the fielder and at a position Sindh are in. It was on his left, right? But have a look at that. Oh, there was a misunderstanding in between two. But as you said, rightly mentioned, the right way
to complete a run is by dragging the bat all through the ground. Wonderfully explained and wonderfully done by Umair bin Yusuf. Waste of energy. Compare that to Ehsan Ali's dismissal. He was never fully extended and he hardly dragged that bat. He just plonked it just before the line and it bounced a couple times and it didn't drag. That probably cost him his wicket. Probably he couldn't believe that umpire would give him out. He was so sure that he has made it to the ground. But action replay showed that he was short of the ground just by the finest of the margins. But his reaction was amazing after he was given out. Just couldn't believe it. But I think if anyone he has to blame, it has to be himself. I think we're going to show you this. Look at this replay. Ehsan Ali, first of all, the misunderstanding. I know it was Khurram's fault, but look at the way he just plonked the bat just before the line and compare that to what we just saw from Umair. And that can be the difference at this level. Absolutely, 100%. That was the difference. Had he extended his arm through the ground, he would have made it probably. Wonderfully left. I know there are a lot of oohs and ahs, but you got to give it to the batter. The way he had left the ball in this inning, Umair bin Yusuf, I think he's showed the skill, he's showed the character, he's showed the temperament. This is what he's known for, Umair bin Yusuf, his batting skills. Wonderful prospect. Team needed it and he's delivering. Ever since he's come from Sri Lanka, he's had starts in this tournament. He's shown glimpses of what he can do. The only thing missing in the season for him so far is that big score. But he looks in very good order. They're complementing each other very nicely, Umair bin Yusuf and Asad Shafiq. Asad Shafiq is more of an aggressor in this partnership. Umair bin Yusuf more of solid, temperamentally correct, taking his time, knows the value of his wicket. There's a lot of time left in this game. Still 2 days to go after this session. They can bat as long as they can. Probably bat till tea tomorrow. Get to a 350 run. 350. I know you won't agree. But the pace Asad Shafiq is playing at, if he can get going till maybe lunch, an hour after lunch, you never know. 23 gone, 90 for 3 Sindh. Yet another gorgeous day in Karachi. As you look at the main pavilion from the side, this is where we are situated. And this is the bowling card for Central Punjab. Wickets for Fahim Ashraf and Mohammad Saad once again. Waqas Maqsood and Muhammad Ali still searching for the wicket, as we're about to see some spin in action for the first time in this third innings of the match. Ahmed Safi Abdullah. He's reading my mind. Just about to say, where is Ahmed Safi Abdullah? Can we have an over or two from him? And as we speak about him, he's there into the action. First time we're going to see him in this inning. This will be very interesting. In the first inning, got a big wicket of Fawad Alam. What can he do here? 33 matches, 98 wickets to his name. Might well break the rhythm of Asad Shafiq, the way he is handling him. Straight away, on the money. It will present a different challenge for Asad Shafiq. He's 2 wickets shy of 100 wickets mark in the first class game. 1 5-for, 5-4-1-6 as his best. And yeah, you're talking about how quickly Sindh are moving the game ahead. But remember, there's a certain degree of risk associated with going for that positive approach. But yeah, you're right. If with this pace, if they play till tea tomorrow, they will be way ahead in the game. But a lot of hard work needs to go into that. Absolutely, lots of skill needed to do that.
to carry on playing at this pace for a longer period of time on a pitch like this will require a lot of skill, and deliveries like that too. Easily put away by Asad Shafiq for 4 runs. That is poor bowling by Ahmed Safi Abdullah, way down to leg stump. Easily done by Asad Shafiq. Wonderful result. It's a gift, absolute gift. Bowling outside the leg stump. There was no 45. The sweep was quite square. Asad just had to pick the gap. Easy pickings for the experienced man. Sweeps. Oh, that hit him. Looks fine. Swept it with force. Ali Zaryab, the ex-captain, at short leg. Do you think he'd still be fielding there if he was the captain? You never know. We've seen captains field there. Ricky Ponting did it beautifully. Seen him do it a lot of time. "24 overs gone, 94 for 3, Sindh." Sindh leading by 62 runs at the moment. It's been a good recovery after Khurram Manzoor threw his wicket away. Saad Khan was brilliantly caught by Imran Doga. He lost his wicket just before the tea interval, and since then it has been all Umar bin Yusuf and Asad Shafiq. Asad Shafiq in particular, because he scored at a pace, at a very good pace. 30 runs of 40 deliveries with 6 boundaries to his name. And they would feel that if Asad Shafiq can continue playing like that, they will definitely get to that desired score of 250 that we've been talking about. 350 is what I want to make things interesting for the last day and a half. I'm sure you won't be very popular with the Central Punjab unit, because if you make them chase 350 on this wicket on last day, they would not like you. What if they do it? What if they chase down 350? Think like that. All these big players, Abid Ali, Dogger, Saif Badr, Rizwan Hussain, they have the potential of doing it. Why not? We've seen things happening before. Would want to see it again. No? You don't agree, I think? The sarcasm on your face says no, you don't agree. I cannot disagree with you, Ali. You're very stubborn with your views, so I better not disagree with you. Fumble there from wicketkeeper Ali Shan. Yeah, but definitely for a neutral, anything above 200 or more would really make for an interesting 4th inning chase. Absolutely. Anything above 200 would do for Sindh at the moment. Oh, how did that miss? Whoa, wonderful delivery. And equally well kept by the wicketkeeper. That nipped in sharply by Mohammad Ali. Standard of cricket after tea has been sensational. First of all, look at that delivery. Cut him in half. Umair didn't do a lot wrong. Ali Shan was spectacular. Acrobatic take. The agility, the athleticism from the young wicketkeeper. Treat to watch. Look at that length nipped in. How do you play that? Lucky that he didn't get the inside edge. Driven beautifully through the gap. Might not have the legs for 4, but will definitely get 2 runs. Runs matter, regardless how they come. You have to give credit to Umair bin Yusuf. The way he forgot about the previous delivery, took it out of his system before he faced the new one. Still got that nice stride into the drive. Probably the timing wasn't there, but the intent was. And you have to admit the contest is
Very, very intense. Look at that stride. And didn't look to hit it hard. Good batting. Nice leave too. It was tempting, but that's what is the requirement from Umar bin Yusuf. Let those deliveries go which are outside the off stump. Right way of playing at the moment. In fact, any time on this pitch, you got to be very picky and choosy with your shots. Asad Shafiq has done it well. He's got to stay there with him. This guy doesn't trophies get the points table is getting so close that the margin of error is so little. You cannot afford to lose a game. Oh, where did that go on? Over the head of the wicketkeeper, 4. Very lucky for Umar bin Yusuf that it didn't balloon up. Instead, it went over the head of the wicketkeeper for 4. Luck favoring Umar bin Yusuf at the moment. Look at that. Umar was looking to avoid it. He dropped the race, but he was too late in doing that. And off the edge, it flew over the head of Ali Shan. Like Ali said, could easily have gone up in the air, straight to the wicketkeeper. He's rode his luck. He deserves a little bit of luck, the way he's played. 25 done, 100 for 3. Run rate is 4 at the moment, courtesy to a brilliant inning by Asad Shafiq at the moment. Not done yet. The lead is 68 runs. For Sindh liking, they would want him to carry on at least till the end day end. Ahmed Safi Abdullah bowled 1 over. He's come onto the central team in place of Razali Dar, another left-arm all-round cricketer. Wonderful cricketer. Zafar Gohar also isn't the side, but Razali Dar, another cricketer from central Punjab, very talented. Oh, is there a chance? No. Very good all-round cricketer, Razali Dar. Bats well, bowls well. More known as for his white ball abilities, though. Very good for central Punjab. You can feel that Asad Shafiq is itching. He wants to get at Ahmed Safi Abdullah. That's his favourite shot, though. It's never easy for a short leg fielder when Asad Shafiq is playing, because he loves playing those sweep shots. 1 more run added to the total. Did it hit him on the back or on the helmet? Because the umpires are getting together. Are we going to do the concussion protocols? That will be the case if he's got hit on the helmet. Probably that's exactly what's happening. Second blow in 2 overs for young Ali Zaryab. Not easy. Not easy when Asad Shafiq is sweeping the ball. Looks fine though. Although the physio has to follow the SOPs of concussion. He'll ask him few questions here and there. All smiles, says he's fine. Yeah, that will tell you the thing or two. Fahim Ashraf just went out of your picture, smiling. That's the replay. Good extension of the arms from Asad Shafiq. Just a glancing blow. It wasn't very firm, but still, precautions need to be taken care, and that has been done. Let's look at the points table. Have a look at the margin. 102, 102, 101 and 100. These are the top 4 teams in this Quaid Azam trophy. It's so close. Even Southern Punjab is at 90. Balochistan is way behind at 71. You can add the points they earned during this round. Add 3 points to Sindh's tally, 6 points to KP's tally. That means that they would be leading the table now. Another 3 points for Central Punjab. That will propel them over Northern. But then Northern has got 5 points and a very good chance of a win as well. Southern Punjab looks like they're getting out of the race. Just 1 point in this round.
He's between those top 4 teams. If we can have another look. It's so close. It's so tough. These are the quality sides playing each other. And from now on, you don't want to miss out on any point. That's why we saw both the teams declaring after losing 9 wickets. You don't want to give out extra points to your opponents too. It's that close, yes. In Southern Punjab, 5th on that list, they still had a chance before this round. Could only get 1 point in this round so far, so that probably would mean that they will be out of contention for that race for the final. Look at number 5, Southern Punjab, 90, with only 1 point to add to the tally, with all the other teams moving well in front. Wow, cannot get any tighter than that. Absolutely. The last round match would be the decider for every team. How close is it? Is it going to be Northern KP? Is it going to be KP Sindh? Is it going to be Central Northern? You just never know what that final will be. That is going to start on 25th of this month at National Stadium. And we hear that it is going to be a day-night final. It's going to make things very interesting. Yeah, this is very, very tough competition for places in this championship. It has been a nail-biting contest. And talking about Northern's 5 points for this round, they haven't got through the 100 overs just yet, so they might add a point or 2. But in the games going ahead, Northern are in a good position to win an outright victory. So is KP. But the 2 here, they don't want to lose this game, otherwise they'll fall behind in the packing order. Tense. That is why I said at the toss that it's a must-win game, because a team that wins the game will go with a lot of confidence into the last game of the season, the round game I mean. And if you lose this one, it will be a desperate situation for the last round game. You don't want to be in that situation. Both Central and Sindh would want to finish on high. No is the call. Early call by Shafiq. And a good one. Saif Badr sweeping in quickly. Southern Punjab, who's lagging behind in the table, even after this round, they would still be in contention because they're going to play Sindh next. And they will have a chance to climb up that ladder. We'll know the exact situation after the end of this round. But after 9 rounds, we still don't know. Don't even know one finalist, let alone both of them. Absolutely. Khyber Pakhtunkhwa will take on Central Punjab at Ubil Complex for that last game. Balochistan will take on Northern here at State Bank. Sindh will take on Southern Punjab at National Bank Sports Complex for the last round games. Whoa, as you said, it's very tense. You just never know what happens. But by the end of this game, things will clear out. By the looks of it, the draws are in favor of Northern. If they are able to get a victory in this 9th round, they'll be facing Balochistan in the final round. Probably that'll allow them a slightly easier passage into the final. But between Southern, Central, KP and Sindh, it's up and over. Good shot by Asad Shafiq. Opportunity taken. 4 runs. Wonderful shot. Asad Shafiq continuing the vein of his positive intent. This was short from Muhammad Ali. The line was pretty good. He had to drag it from outside the off stump, but reasonably well controlled. And it trickles over the fence. Like I said,
Ali said, Asad Shafiq is not sparing any opportunity to score runs. Just the way he's watching the ball. As you said, it was just outside the off stump. He dragged it from there because he's watching the ball so nicely that it was easy pickings for them. The lead is now 73 runs. Sindh feeling comfortable. Another good shout of no. Effort delivery on that occasion. But Asad Shafiq rode it very nicely. He has looked in very good touch. 27 gone, 105 for 3. As the players will take drinks here at the State Bank Sports Complex. चाय देंगे खाना आप अपने जो कर रहे हो करो उसका तो ब्रेक में वो लाइनें वही धागे रखे हुए हैं रस्सियां उनसे लगाते हैं सलाम फारूक भाई बहुत सफाई से ठीक है हाँ यार मैं स्टेट बैंक में कमेंट्री दूँ मैं बस 15-20 मिनट बाद निकल गए नहीं मैं कर दूँगा ठीक ठीक और जी स्टैंड बाय मैं कैंप 5 स्ट्रांग स्टैंड बाय कैंप 5 3 2 1 एंड कैंप 5 एक दफ़ा फिर पानी के वक्फे के बाद खेल का दोबारा आगाज़ होता हुआ और अच्छी रिकवरी इस मौके पर सिंध की जानिब से 48 के स्कोर पर तीसरी विकेट गिरी और उसके बाद 105 रन तक ये पार्टनरशिप जो आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम होती हुई तो इस तरह 57 रन की ये पार्टनरशिप है जब तक इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान कायम हो चुकी है। एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप उमर बिन यूसुफ और असद शफीक के दरमियान। हमारे स्टैट्स गुरु फरहान निसार ने हमें ज्वाइन किया कमेंट्री बॉक्स में। वेलकम फरहान। शुक्रिया अली। और आप पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर चौथी विकेट पर 300 से ज़ायद रन्स की शराकत कायम की है उमर अमीन और फैज़ान रियाज ने। और ये आगे गिरा हुआ गेंद था, उमर बिन यूसुफ ने
बहुत ही दिलकश बैटिंग की, और जब ये रन्स करने पर आते हैं तो फिर इनको खेलता हुआ देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शायद एक ही इनकी खामी है कि तसलसल के साथ ये रन्स नहीं बना पाते। और ये सिर्फ इनकी खामी नहीं है, बल्कि आजकल के यंगस्टर्स हैं, ये उनका T20 क्रिकेट और शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट की शायद भरमार है, जिसकी वजह से तसलसल जो है उसमें कमी नज़र आ रही है। लेकिन बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं उमैर बिन यूसुफ, साद खान, बड़ा मुतासर किया अब तक का इन प्लेयर्स ने, साहबजादा फरहान, ये तमाम प्लेयर हैं कि जिन्होंने अपनी उम्दा कारकर्दगी से काफ़ी अब तक मुतासर किया है। फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों पर यकसा महारत से खेलते हैं, दिफा इनका बहुत उम्दा, और जब ये स्ट्रोक प्ले पर आते हैं तो फिर इन्हें रोकना जो है मुमकिन नहीं होता। इस मरतबा क्रीज से बाहर निकले, अपने स्ट्रोक को चेक किया और बॉलर बैक ड्राइव खेली। हल्का सा स्लिप भी हुए थे इस स्ट्रोक के लिए जब ये बाहर निकले, इनवाइट किया था फ्लाइट के साथ, एयर दिया गेंद को अहमद सफ़ी ने। 73 रन की बढ़तरी हासिल है। और अली, ये पिछला जो मैच यहाँ पर खेले थे उसमें भी मुझे याद है ये स्टंप हुए थे स्लिप होने के बाद। इस मरतबा क्रीज से बाहर निकले, ये ठीक से टाइम नहीं कर पाए, वकास मकसूद के हाथों में ये गेंद, और जिस कामयाबी की तलाश थी यहाँ पर सेंट्रल पंजाब को वो उन्हें हासिल हुई है। और यही हम बात कर रहे थे कि तसलसल नहीं है इनकी परफॉर्मेंस में, और यहाँ एक मरतबा फिर 32 रन बनाने के बाद अब पवेलियन की जानिब वापस आ रहे हैं। बहुत ही ज़ोरदार अंदाज से खेला गया स्ट्रोक था, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पे कदमों का इस्तेमाल किया। इससे पहले भी निकल के खेले थे और स्लिप हुए, जिसका हमने तस्करा किया, और इस मरतबा फिर फ्लाइट की, इनवाइट किया, निकल के स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद थे वकास मकसूद, और गेंद सीधी वकास के मिड ऑन पे फील्डर मौजूद थे वकास मकसूद, और गेंद सीधी मिड ऑन पे मौजूद वकास मकसूद के हाथों में महफूज। एक बड़ी विकेट हासिल की, एक अच्छी पार्टनरशिप का अख्तिताम। 32 रन बनाकर आउट हुए, 105 पे 4। पर अली, इसी तसलसल की हम बात कर रहे हैं नौजवान खिलाड़ियों में, और अक्सर औकात इन्होंने मायूस किया। अच्छा खेलते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, सलाहियत मौजूद है, लेकिन जो रन्स करने का आर्ट है, जो रन्स बनाने की भूख है, वो इनमें दिखाई नहीं देती। लेकिन इनमें ये भूख पूरी तरह से मौजूद है। पिछले कई बरसों से रन्स पर रन्स बनाते जा रहे हैं फवाद आलम, और 4 रोज़ा क्रिकेट की यही शनाख्त है, यही इसका कुलिया कि आप जितनी ज़्यादा रन्स करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। नए आने वाले बैट्समैन कप्तान सिंध के फवाद आलम 184वां मैच खेलने, 13,578 रन स्कोर किए, 13 निफ्ट सेंचुरियाँ, 41 सेंचुरियाँ, 63 निफ्ट सेंचुरी, 41 निफ्ट सेंचुरी उनकी सलाहियत तो 81 करते हुए 296 का कैरियर बेस्ट, 56.671 ज़बरदस्त एवरेज है। भारी भरकम परफॉर्मेंस इनके बैग में मौजूद। बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का, पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट का फवाद आलम, और आज अपने तजुर्बे को बुरकार लाते हुए एक बड़ी इनिंग खेलना होगी, कैप्टन नॉक खेलना होगा फवाद को। और 184 मैचेस में देखिए कि 104 मरतबा ये 50 से ज़ायद रन्स की इन्होंने इनिंग्स खेली है, 296 इनका बेहतरीन स्कोर है। तो लंबी इनिंग्स जब तक खेलने का हुनर नहीं आएगा बल्लेबाजों को, उस वक्त तक वो इस क्रिकेट में कामयाब नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तान के वो प्लेयर के जिन्होंने मुल्क से बाहर डेब्यू पे सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग खेली, श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू पे 100 किया उन्होंने। 169 रन्स की इनिंग्स खेली थी फवाद आलम ने, और ये हैं उमैर बिन यूसुफ जो क्रीज से बाहर निकले, गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए, ना गेंद उनके बैट पर सही तरीके से आया, और जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा अपनी विकेट गंवाने की सूरत में। फरहान, अगर हम इसको दोबारा रिप्ले देखें एक दफ़ा फिर, मुझे लगता है कि उनका पिछला पाँव जो था वो स्लिप हुआ है। अगर हम देखें, पहले भी हमने बात की थी कि उनका पाँव स्लिप हुआ, अभी यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा, अगर हम स्लो करके देखें, ये देखिएगा, ये यहाँ से आप देखें थोड़ा सा जो उनका पिछला पाँव है, पूरा बॉडी वेट ट्रांसफर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से शॉट को पावर नहीं मिल सकी और गेंद सीधी गई है मिड ऑन पे मौजूद फील्डर के हाथों में।
सही नुक्ता उठाया आपने अली। और जो अपना जो गियर है क्रिकेट का, उसका पहले खिलाड़ी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। पिछले मैच में यहाँ पर ये स्टंप हुए, स्लिप हो गए थे, इनकी स्पाइक्स में अगर वो ठीक नहीं है या उन्हें स्लिप होने से नहीं रोक रहे तो इन्हें कुछ उसका सद्देबाब करना होगा। कदमों का इस्तेमाल किया एक ही ओवर में 3 दफ़ा उमैर बिन यूसुफ ने, और बिलाखिर तीसरी मरतबा में विकेट हासिल करने में अहमद सफ़ी कामयाब हुए। फ्लाइट के साथ गेंद कर रहे थे। मोहम्मद अली अब तक विकेट लेस हैं, लेकिन गुज़िश्ता इनिंग में 3 विकेटें हासिल की। शॉर्ट बॉल, और इस किस्म की शॉर्ट बॉल जो है वह आसानी पैदा कर देंगी सिंध के बैट्समैन के लिए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट करेंगे तो बैट्समैन बड़ी आसानी के साथ इसको मैनेज कर जाते हैं। आगे गेंद जो गिरी हुई है उसमें काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं बैट्समैन के लिए। असद शफीक ने इस इनिंग्स में तेज़ी के साथ रन स्कोर किए, इसलिए उनकी मरतबा जो फील्ड को खोल दिया गया था। ऑफ साइड पर भी फील्डर्स जो हैं वो सेमी सर्कल में थे, और उसके बाद दूसरी जानिब अगर ऑन साइड पर देखें तो वहाँ भी फील्डर्स बाउंड्री लाइन पर मौजूद थे। फवाद आलम के लिए जो फील्डिंग है वो मुख्तलिफ है, 2 स्लिप हैं, गली है, पॉइंट है, कवर है, और 4 फील्डर्स ऑन साइड पर मौजूद हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज फवाद आलम के लिए। ये हमारी प्रोडक्शन टीम के 2 अरकान। ऑकवर्ड बाउंस मिला, मना किया सर शफीक ने। दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, अगर इस मौके पे विकेट गिरती है तो मुश्किलात हो सकती हैं, और थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार किया फवाद ने। उनके ख्याल में, उनकी दानिश में सिंगल हो सकता था। जी हाँ, फवाद ऐसा समझते थे। और असद को जब हमने स्ट्राइक पर देखा तो वो इस तरह के रन्स बड़ी चालाकी से बनाते हैं, लेकिन इस मरतबा नॉन स्ट्राइकर पर मना कर दिया। और सैफ बदर को अगर हम देख सकें तो शॉर्ट लेग पोजीशन की जानिब वो चलते हुए आ रहे हैं। रिवायती शॉर्ट लेग पोजीशन तो इसे हम नहीं कहेंगे, काफ़ी दूर खड़े हैं फवाद आलम से वो। सॉफ्ट हैंड के साथ खेले, और इस मरतबा असद शफीक थोड़ा सा स्लिप हुए। सैफ बदर कैचिंग पोजीशन पे खड़ा किया फवाद आलम के लिए। बैट्समैन के बिल्कुल राइट साइड पर हैं सैफ बदर, क्लोजिंग पोजीशन पर। जिस तरफ फवाद आलम मुंह करके खड़े हैं, अगर मैं कहूं तो उसी तरफ खड़े हो गए। इससे ज़्यादा आसान कर नहीं सकता मैं मामला। ये हैं सैफ बदर जिनका आप तस्करा कर रहे थे। जी और ये रिवायती जो शॉर्ट लेग की पोजीशन है ये वो नहीं है। ये देखिए अली काफ़ी दूर खड़े हैं, और यही वजह जो मोहम्मद अली ने पहला गेंद किया था टांग पर उन्हें किया था और थोड़ा सा बाउंस मिला था। चाहते हैं कि कलाई के साथ खेलें फवाद आलम। इस मरतबा भी कोशिश यही है कि सैफ बदर को इस्तेमाल में लाया जाए जिस पोजीशन पर वो खड़े हैं, और मुसलसल उनकी लेग स्टंप पर हमला कर रहे हैं मोहम्मद अली। सैफ बदर बिल्कुल बैट्समैन से चंद कदमों के फासले पर किसी भी मुमकिन गलती को कैच करने के लिए तैयार, दबाव डालते हुए फवाद आलम। और इतना दूर खड़े हैं कि उन्हें शिन पैड पहनने की ज़रूरत नहीं है, वरना हमने शॉर्ट लेग या सिली मिड ऑफ पर देखा है कि खिलाड़ी हेलमेट और शिन पैड के साथ मौजूद होते हैं। ये गेंद भी उसी जगह पर की, पैड से लगने के बाद ये हवा में उछली ज़रूर, लेकिन दूर थी वहाँ उनसे। तो टारगेट अब यही है कि फवाद आलम की जो लेग स्टंप है वहाँ पर अटैक किया जाएगा, और जब वो कलाई की मदद से ऑन साइड पर शॉट खेलें तो शायद मौका पैदा हो कैच का। ब्लैक बाय का सिग्नल था ये अंपायर की जानिब से। अभी तक अपने स्कोर का आगाज़ नहीं किया फवाद आलम ने। असद शफीक अब तक बेहतर फॉर्म में 36 रन के साथ 75 रन की बढ़तरी सिंध को हासिल हो चुकी है। यकीनन मजीद 250 के हिस्से तक पहुंचने के लिए इनको रन दरकार हैं। जब इस मैच में फाइट कर सकेगी सिंध की टीम, उनके बॉलर्स को थोड़े रन मिलने चाहिए ताकि मैच इंटरेस्टिंग हो सके। 1 रन का स्कोर में इजाफा, 108 पे 4।
खुर्रम मंजूर 23 रन बनाकर आउट हुए। काफ़ी बरकरफ्तारी से बैटिंग कर रहे थे। एहसान अली किसी हद तक अनलकी रहे कि बहुत ही क्लोज कॉल थी। उमैर बिन यूसुफ अभी आउट हुए हैं और चाय के वक्फे से पहले साद खान भी एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हुए। तो जिस पार्टनरशिप की तलाश में है सिंध की टीम वो अभी तक उन्हें मैसर नहीं आई। एक बड़ी पार्टनरशिप दरकार है। पिछली चौथी विकेट पर 50 से ज़ायद रन जोड़े, लेकिन जब सिंध का पलड़ा भारी हो रहा था तो वहाँ पर उमैर बिन यूसुफ ने अपनी विकेट गंवा दी अहमद सफ़ी के हाथों। फ्लाइट के साथ गेंद करते हैं अहमद सफ़ी। बैट्समैन को अटेम्प्ट करते हैं कि बैट्समैन निकल के स्ट्रोक खेलें। कोई गलती, कोई चांस लेने के लिए तैयार नहीं अहमद सफ़ी के सामने असद शफीक। और सईद अजमल का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है अहमद सफ़ी पर। बाएं हाथ की जो स्पिन बॉलिंग है और वहीं से फैसलाबाद रीजन से भी ये खेलते रहे हैं माजी में। दो तीन लेफ्ट आर्म स्पिनर बड़े अच्छे एक ही दौर में आए फैसलाबाद से। सदाकत आपको याद होगा एक मौके पे पाकिस्तान के T20 के रिजर्व तक वो पहुंच चुके थे। काका के नाम से मशहूर हैं। इस वक्त नॉर्दर्न की नुमाइंदगी कर रहे हैं सदाकत। इसके अलावा हसन महमूद एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो स्टेट बैंक के लिए भी खेले, और फिर इमरान खालिद जो सीनियर लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं फैसलाबाद रीजन के। तो तीन चार बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आए। इमरान खालिद PSL का जो पहला एडिशन था उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेले और बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी। हसन महमूद स्टेट बैंक के लिए खेले। जब स्टेट बैंक ने ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में क्वालिफाई किया तो हसन महमूद, जल्लाद खान और शोएब खान की बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस थी। उसके बाद फिर अहमद सफ़ी ने बड़ा अच्छा अपना इंप्रेशन कायम किया और सदाकत थोड़ा सा लाइमलाइट से दूर ज़रूर हुए, लेकिन सदाकत भी बड़े ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। और ये तमाम स्पिनर जो हैं ये वाइट बॉल के ख़ास तौर पर स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी अहमद सफ़ी की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो ढकी छुपी नहीं है। 99 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं और एक विकेट दूर हैं 100 विकेटों से, और चाहेंगे कि फवाद आलम की विकेट लेकर वो इस संगे मील तक पहुँचे। PSL में भी पिक किए गए हैं अहमद सफ़ी। ड्राइव किया इस मरतबा, फील्डर के पास मौका नहीं था गेंद को रोकने का। 4 रन हो जाएंगे। चौके के साथ स्कोर का आगाज किया फवाद आलम ने। ये फ्लाइट की थी अहमद सफ़ी ने, काफ़ी वाइड थी लेकिन इसको कबूल किया और खेल दिया गैप में 4 रन्स के लिए फवाद आलम ने। और यूं सिंध का स्कोर अब पहुंच चुका है 113 रन्स और 4 कीमती विकेटें गंवा चुकी है सिंध की टीम 81 रन्स की बढ़तरी के साथ। अभी मजीद 180 रन ज़रूर करने होंगे ताकि 250 के से ज़्यादा तक पहुंचा जाए, और 250 रन वो रन होंगे कि जहां पे फाइट बैक कर सकती है सिंध की टीम 113 4 विकेटों के नुकसान पर। बाउंसर करने की कोशिश की और ये इतना वाइड था कि अंपायर वलीद यकूब को भी अपने दोनों हाथ खोलने पड़े। वाइड बॉल का सिग्नल दिया। और अली ये जो मुट्ठी बंद करके इन्होंने, ये भी किसी चीज़ का सिग्नल है? जी हाँ, इन्होंने बताया कि पावर अंपायर के हाथ में है, लेकिन यकीनी तौर पे कोई ख़ास शायद स्कोर के साथ इनका सिग्नल होगा, या शायद ये बताया होगा इन्होंने कि ये जो वेस्ट साइड है उसके ऊपर की बाउंसर है उसकी वाइड दी है। और आमतौर पर स्कोरर जो हैं वो सिग्नल देते हैं अंपायर को कि उन्होंने जो सिग्नल अंपायर का वो देख लिया है। ये हमारे दोनों स्कोरर्स, डिजिटल भी और मैनुअल भी। और ये वो रन जिसकी हम बात कर रहे थे कि जब असद शफीक स्ट्राइक पर होते हैं तो वो फिर इस तरह के रन्स बड़ी आसानी से हासिल करते हैं, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर थोड़ा सा सोच समझ कर वो क्रीज से बाहर निकलते हैं। अपने निफ्स सेंचुरी से करीब होते हुए असद शफीक, एक बड़ी कारकर्दगी की तवक्को है उनसे। 83 रन की बढ़तरी, 100 की सिचुएशन है इस मैच में, कई उतार चढ़ाव आए।
आबिद अली ने जो बैटिंग खेली, जो इनिंग खेली, जो बारी ली आबिद अली ने, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और 187 रन में से 98 रन आबिद अली की उम्दा कारकर्दगी की बदौलत। और ये जो फील्डर पिछले ओवर में प्लेस किया था मुसलसल उसी जगह पर बॉलिंग कर रहे हैं मोहम्मद अली। और आपने आबिद अली की इनिंग्स की बात की तो तकरीबन 52% रन उन्होंने स्कोर किए हैं सेंट्रल पंजाब के। और मुझे याद पड़ता है कि पोर्ट कासिम के लिए खालिद लतीफ़ ने 173 रन की इनिंग्स खेली थी 215 के मजबूए में से, तो तकरीबन 80% रन उन्होंने बनाए थे, जो पाकिस्तान में किसी भी बैट्समैन का सबसे ज़्यादा जो तनासुब है रन्स का वो है। अच्छी गेंद दी अब मोहम्मद अली डिसीव कराने में कामयाब हुए। एक्सपीरियंस फवाद आलम को खुश नहीं है अपनी इस शॉट सिलेक्शन से। फवाद आलम अपने ऊपर नाराज़गी का इजहार किया फवाद आलम ने। देखिए इस मरतबा फवाद आलम यही तवक्को कर रहे थे कि उनका मिडल और लेग पर ये गेंद आएगा, लेकिन ये गेंद पड़ने के बाद एंगल हुआ, बाहर निकला, तैयार नहीं थे इसके लिए और इतने कंफर्टेबल दिखाई नहीं दिए फवाद आलम इन दोनों इनिंग्स की। अगर हम बात करें ख़ासतौर पर दूसरी इनिंग्स में, अगरचे एक बाउंड्री हासिल की है लेकिन अभी तक वो कंफर्टेबल अंदाज से बैटिंग नहीं कर रहे। और ये गेंद पड़ने के बाद बिल्कुल सीधा टकराया, नीचे भी रहा लेकिन गालिबन लेग स्टंप के बाहर पिच हुआ था, इसलिए अंपायर वलीद याकूब ने अपने सर को जुम्बिश दी कि फवाद आलम क्रीज पर मौजूद रहेंगे। लेग स्टंप की लाइन के बाहर ये गेंद पिच हुई। आसान डिसीजन था यहाँ पे वलीद याकूब के लिए। 115 4 विकेटों के नुकसान पे मजीद 83 रन की यहाँ पे बरतरी हासिल कर ली है अब सिंध ने। शॉर्ट बॉल पंजों के बल उछल के खेले मोहम्मद अली की इस रफ्तार गेंद को फवाद आलम पूरी तरह इम्तिहान ले रहे हैं मोहम्मद अली फवाद आलम जैसे बल्लेबाज का। और अगर फवाद आलम डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी बॉलर के खिलाफ अनसेटल रहे तो इसका मतलब ये अली के बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करवाई जा रही है। ये है मोहम्मद अली, सियालकोट से इनका ताल्लुक़ है, बड़े मेहनती फास्ट बॉलर हैं और वर्क हॉर्स इन्हें अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लंबे लंबे स्पेल्स करते हैं, विकेटें दिलाते हैं अपनी टीम को। अंदर आती हुई गेंद ऑन पे खेले, फील्डर मौजूद थे वहाँ, काफ़ी तंग किया इस ओवर में मोहम्मद अली ने फवाद को। ओवर मुकम्मल 115 पे 4। तैंतीस मैचेस में 99 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं। अगरचे एक मरतबा ही 5 विकेटें इनिंग्स में हासिल की हैं लेकिन अपनी टीम के लिए कारगर साबित होते रहे हैं। और अगर हम मौजूदा क्रिकेट में देखते हैं तो नुमान अली लेफ्ट आर्म स्पिनर 300 से ज़्यादा विकेटें हैं, रज़ा हसन भी 150 विकेटों के संगे मील के आसपास हैं और ये अहमद सफ़ी जो 100 विकेट से अब 1 विकेट के फासले पे हैं। जहाँ काशिफ भट्टी और जफर गौहर भी इसी फहरिस्त का हिस्सा हैं जिन्होंने बड़ी अचीवमेंट हासिल की हुई है। काशिफ भट्टी भी 300 के हिंसे के आसपास हैं। पिछले मैच में इनिंग्स में 7 विकेटें भी हासिल की थी उन्होंने। और ये शॉर्ट गेंद था, इसको कट किया और कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। ये गेंद कवर बाउंड्री के क्रॉस जाएगी 4 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक था इस मौके पर इन फॉर्म बैट्समैन असद शफीक का। उस तरफ से थोड़ी सी बाहर गेंद मिली और उसको कट करने में कामयाब हुए। थोड़ी सी बाहर गेंद और पिछले कदमों पे खेला गया।
ताकतवर ज़ोरदार स्ट्रोक, 4 रन्स। बरतरी को बढ़ाता हुआ 87 रन तक ले गया। असद शफीक के स्कोर को अब 43 रन तक इस स्ट्रोक ने पहुंचाया, 119 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी बहुत वक्त बाकी है इस मैच में, तो सिंध के लिए किसी भी तरह की जल्दी नहीं करनी चाहिए इन दोनों बल्लेबाजों को, लेकिन जल्दी करना चाहते हैं असद शफीक। और यहाँ अगर ये गेंद डायरेक्ट लगता तो फिर देखना पड़ेगा। फवाद आलम बिल्कुल भी खुश नहीं है इस रन पर, और असद शफीक ने कई मरतबा अपने साथियों को इम्तिहान में डाला इस तरह की रनिंग से। मुझे नहीं समझ में आया इस गेंद पे क्या स्ट्रेटजी थी असद शफीक की। और फवाद आलम ने सही नाराजगी का इजहार किया असद शफीक से, क्योंकि असद शफीक जैसे सीनियर प्लेयर से इस किस्म की उम्मीद नहीं की जा सकती। जब अमूमन आप गली में लाइट लगा के क्रिकेट खेलते हैं, जब इस किस्म के रन लेते हैं, फरहान हमने अक्सर गली में मोहल्ले में जब स्ट्रीट क्रिकेट होती है, नाइट क्रिकेट होती है, जो तंग गली मोहल्लों में होती है, वहाँ पे ऐसे रन हमने ज़रूर देखे। लेकिन इस लेवल पे इस किस्म के रन अपील हुई है LBW की, लेकिन नासिर हुसैन को यह अपील मुतासर नहीं कर सकी। यहाँ ज़ोरदार अपील थी, अच्छा गेम था ये, और अहमद सफ़ी भी यही बता रहे हैं कि ये काफ़ी क्लोज था ये डिसीजन। पहली नज़र में यही लगता है कि गेंद ऑफ स्टंप के ये बाहर पिच हुआ था। हाँ जी, और अच्छा फैसला अंपायर नासिर हुसैन की जानिब से। लेकिन जो रन असद शफीक ने लिया उस पर ज़रूर मैं आपके कमेंट जानना चाहूँगा। और इस मरतबा फवाद आलम ने जिस अंदाज से उन्हें रोका असद शफीक को, शायद ये भी बताया है कि कॉल अगर करनी है या कॉल नहीं करनी तो ये अंदाज अपनाना चाहिए। यहाँ पर इतना मार्जिन असद शफीक को ये दे सकते हैं कि वो डेंजर एंड पर असद शफीक जा रहे थे, उनकी कॉल थी, तो अगर कोई नुकसान होता तो उनको होता। लेकिन फवाद आलम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का नुकसान इस स्टेज पर हो उनकी टीम को, शायद इसलिए थोड़ी सी नाराज़गी का इजहार किया फवाद आलम ने। और यूँ 32वां ओवर भी इसी असना में मुकम्मल हुआ, 120 पर 4, सिंध 88 रन की बढ़तरी के साथ। मज़ीद 162 रन तो करने ही करने होंगे अगर 250 रन की बढ़तरी हासिल करनी है। और अभी सिंध की इतनी बैटिंग बाकी है, इस पेयर में इतनी कैपेबिलिटी है कि मज़ीद अगले 162 रन स्कोर करें और प्रेशर में रखें सेंट्रल पंजाब को, क्योंकि अभी काफ़ी वक्त इस मैच का बाकी है। दूसरा दिन अभी इस मैच का जारी है, मज़ीद 2 दिन का खेल अभी बाकी। तो यहाँ पे जो 250 रन हैं, कम से कम इतने रन होंगे स्कोर बोर्ड पे सिंध के पास, जब ये मैच इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल इतने रन करने चाहिए, क्योंकि अगर कल देखिए कि चाहे कि वक्फे तक भी सिंध की टीम बैटिंग करती है तो फिर इतने रन स्कोर करने में कामयाब हो जाएगी कि सेंट्रल पंजाब को उस स्कोर को चेस करना मुश्किल हो। और ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस मैच में फ़तह हासिल करने वाली टीम के पास फाइनल तक रसाई का जो इम्कान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोनों टीमें अली चाहेंगी कि इस मैच में कामयाबी हासिल करें। जी हाँ, पहली इनिंग में दोनों ही टीमों ने डिक्लेरेशन की और दोनों ही टीमों ने अपने मुखालिफ टीम को पॉइंट्स नहीं लेने दिए। 2 स्लिप के साथ और 2 गली के साथ गेंद करते हुए यहाँ इस मौके पर मोहम्मद अली, अब्दुल रज़्ज़ाक़, हुमायूं फ़रद और अक़ब में मैनेजर अशरफ अली, जो अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन थे। और उनके भाई सादत अली ने भी पाकिस्तान के लिए खेला, UBL के लिए एक अरसे तक खेलते रहे अशरफ अली। इस मरतबा कवर्स में खेले फील्डर मौजूद थे और फिर राशिद लतीफ़ ने इनको रिप्लेस किया था। और राशिद लतीफ़ से पहले सैफुल्लाह एक विकेट कीपर थे जिनका लाहौर से ताल्लुक़ था, उन्होंने रिप्लेस किया था अशरफ अली को। सैफुल्लाह को रिप्लेस किया राशिद लतीफ़ ने, और राशिद लतीफ़ के बिल्कुल साथ साथ लगे थे वसीम यूसुफ़ी। जी हाँ, सैफुल्लाह का ताल्लुक़ भी लाहौर से अंपायरिंग के शोबे से वाबस्ता है, अगरचा टॉप लेवल पर अंपायरिंग नहीं कर सके, लेकिन जूनियर क्रिकेट में हम उन्हें लाहौर में अंपायरिंग करते हुए देखते हैं। और जिस दौर में अशरफ अली खेल रहे थे, ये वो वक्त था कि जब वसीम बारी का करियर अपने अख्ताम को था, तो पाकिस्तान ने बहुत से जो विकेट कीपर्स हैं उनको आजमाया। उनमें अनिल दलपत भी थे,
जुल्करनैन भी थे, अशरफ अली भी थे, फिर सलीम यूसुफ की जब आमद हुई तो ये तमाम विकेट कीपर थोड़ा सा धुंधला गए, क्योंकि सलीम यूसुफ जिन्हें टाइगर कहते थे उनके कप्तान इमरान खान, तो उन्होंने बहुत ही नुमाया जगह हासिल कर ली और फिर मोइन खान और राशिद लतीफ़ का दौर शुरू हुआ तो सलीम यूसुफ भी पस मंज़र में चले गए। जी हाँ, इसी अरसे में इसी दौरान नदीम अब्बासी को भी टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला और इसके बाद फिर शकील डस्का को भी खिलाया गया। तो काफ़ी विकेट कीपर्स आए हैं, लेकिन सलीम यूसुफ की आमद के बाद और उसके बाद फिर मोइन खान और राशिद लतीफ़ की आमद के बाद किसी और विकेट कीपर के लिए इतनी गुंजाइश नहीं रही। और फिर उसके बाद अतीक़ुज़्ज़मा, जावेद कदीर और कामरान अकमल जैसे विकेट कीपर्स आए और वहाँ पे फिर कामरान अकमल ने अपना इंप्रेशन कायम किया। राशिद लतीफ़ और मोइन खान की मौजूदगी में भी बहुत से ऐसे विकेट कीपर्स थे जो अगर उस दौर में ना होते तो शायद ज़्यादा लंबी क्रिकेट खेलते। यहाँ पर 1 रन हासिल होगा। अतीक़ुज़्ज़मा की आपने बात की, जावेद कदीर वनडे इंटरनेशनल खेले, हुमायूं फ़रत अभी सेंट्रल पंजाब के साथ हैं, कामरान अकमल, उसके अलावा जुल्करनैन हैदर, अमीनुर रहमान एक विकेट कीपर थे कराची के जो इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेल सके लेकिन बहुत ज़्यादा उन्हें महारत हासिल थी इस शोबे में। अमीनुर रहमान का आपने तस्करा किया तो मुझे याद है अमीनुर रहमान के लिए बॉब वुलमर ने कहा था कि अगर इनकी आंख पे पट्टी भी बांधी जाए जब भी ये गेंद कलेक्ट कर सकते हैं। इतने ज़बरदस्त विकेट कीपर थे अमीनुर रहमान, जो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके, लेकिन जुल्फ़िकार जान एक ऐसे विकेट कीपर थे कि जो बिल्कुल पाकिस्तान की टीम के दरवाजे पर दस्तक देते देते वापस दरवाजे से लौट गए। और जुल्फ़िकार जान के पास इतनी ज़्यादा ट्रॉफीज़ थी बेस्ट विकेट कीपर की कि शायद ही उस दौर में किसी और विकेट कीपर के पास हो। और इस दौरान 1 रन हासिल किया फवाद आलम ने और 33 ओवर्स भी मुकम्मल हुए। स्कोर है 122 रन 4 विकेटों के नुकसान पर सिंध। On to 90 by Sindh. Wickets keep continue to fall. Umar bin Yusuf was the last one to go. Ahmed Safi Abdullah also took the wicket of Fawad Alam in the first innings. Coach Abdul Razak, Ashraf Ali behind him. Pensive mood. This game is on a knife edge. Welcome along late in the evening, Ahmed Saeed. Thank you very much, Shah Faisal, and I hope all the viewers are enjoying this game, which is tilting from one side to the other. And if one man can really turn it around for Sindh, that has to be Fawad Alam, in company of Asad Shafiq, who's batted beautifully. Played some delightful strokes. Good effort in the field. Central Punjab has been very good with their ground fielding. Is that man Sapadar again? He's tall, he anticipates well. Prevents a run, each and every run of utmost importance in this tight contest here. Wad once again calls for a run. Chance at the non-striker end, but Ali decides to hold on to the throw. Yeah, it's very tense, Amr Saeed. And like you said, it can go either way from here. So this man on your screen, Asad Shafiq, has been absolutely brilliant in the second innings. Has done everything right, chosen the right deliveries to hit
avoided the ones that shouldn't be hit, and that has been the most important factor of this inning so far. 34 gone, 123 for 4. Like Amar, we were talking off air, and you mentioned and made the point that the areas they chose to hit, the attacking strokes, the balls that they chose, was absolutely spot on. And you had to do that on a wicket like this. But it was all very well planned and nicely executed. That has been the problem with all the batters nearly who've we've seen at this ground. They do have those shots, and at times they do come off, but the ones that should be avoided are usually not avoided, and that has been the downfall of most batters. Absolutely correct. But these two, especially Asad Shafiq with his stroke play, has been very selective. And he looked very attractive when they did come off. Like we were discussing a while ago, this points table is really congested up at the top. To update you with some scores from around the city in the other two venues, Balochistan will have to score 281 runs to beat KPK on day 3. Another one. Quaid is getting himself into a tangle. Muhammad Ali's really attacked him on that body with that short leg in. It's really troubled him. He's never comfortable when it's being bowled in his ribs, but manages it well usually. Very stubborn character while he's on the wicket. Puts a very high price on his wicket, and that is why he has scored so many runs. That's something that a lot of the youngsters would need to learn from him. But updating the other scores as well, Northern are in a very commanding position, 398 for 5 in response to 238. So they've already 160 runs lead. Faizan Riaz with a big 166. Umar Amin 158. And that Balochistan game, Taj Wali got 11 wickets. Omar Akmal, Shan Masood. It's another big shout. Pitching outside the leg stump clearly. This is another mouth-watering contest as well between Balochistan and KP. See that replay. Yeah. Pitching outside leg, which ends any chance of any sort of LBW. Very, very tough examination from Muhammad Ali for Fawad Alam. Once again, got him hopping. Like I said, it may not look pleasing, but Fawad Alam must be enjoying this. He liked these kind of battles. Coach Basit Ali in the foreground. And some of the production team. The lads, they work really hard. Kashif in the middle is the ringleader. Getting a moment to take a breather. That ball got lodged. Match referee, is this a dead ball? It didn't lodge in the pads.
but it got stuck between his body and his elbow. End of the over. 1, 2, 3 for 4. Even though Sindh are doing well with a 91-run lead so far, definitely not out of trouble yet. Another wicket or so will again expose the tail, and as we have experienced so far, it gets very difficult for the tail-enders to put any sort of resistance. So this is the pair which has to bat not only today, but at least for the first session tomorrow morning, if Sindh wants to be in a commanding position. You're right. Coping on this wicket has been difficult for the top order, let alone the lower orders. Although you have to say, in these 2 days, there's been plenty of poor shot selection that you can really question from both teams. But like you made the point earlier, that it's tired, the bodies are tiring, the minds are tiring. Also, talking to Coach Abdul Razak earlier, he made the point that the points table is so tight at the moment. There's a lot of pressure on the players for the situation to get the ascendancy. That final is a huge price, and the closer you get, the more pressure you feel under. That's why could be one of the reasons for that nervous or indiscriminate stroke play. But that man has played beautifully. That is what I love about this season so far. It has been so close on the points table. Everyone needs to think about the game, think very closely. Tactically, you've got to be spot on, and no margin for error now. So that is also a reason we are witnessing some very interesting cricket. 36 overs gone, 123 for 4, Sindh. So you're watching Fahim Ashraf limbering up in the previous over. He has been handed the ball. Crucial stage of the game. Central Punjab could do with a wicket or two before the day closes. But 35 minutes, close to 35 minutes of play may be available. Schedule closes in 18 minutes. Do you think Shah Faisal 250 would be enough on this track in the 4th innings? Keeping in mind that Abid Ali is part of the batting lineup of the opposition. Short and wide. Go fetch that, says Fawad Alam. He's really waited for that opportunity, and once it arrived, he gleefully accepted it. It's the class of the man. It's too short, too wide. Got what it deserved. Like we were seeing Fawad Alam really struggling against Muhammad Ali, hopping around the crease, getting hit on the body. The minute he got an opportunity to score runs, he pounced on it in a flash. As a result, that deep point fielder has been sent back. Runs are at a premium here, and Central Punjab realize that.
completely different angle from Fahim Ashraf to what Muhammad Ali was operating. He was coming over the wicket, targeting the body. The short leg in. Fahim Ashraf is coming around the wicket, targeting that channel bowling. Something different for Fawad Alam to worry about. Yes, from that angle he would be looking for the ball to keep it straighter, come in with that angle and just hold its line. That point fielder will be in action now. Abid Ali. The lead closing in on that 100 mark, 96 now. The moment he's tad short of that length that he would like to hit, and Fawad Alam taking advantage of that. Asad Shafiq has really took a back seat in the last half an hour or so. From the way he started, he was all guns blazing. That's the experience of the man. He got himself a start, and now with Fawad Alam, he's prepared to wait. He's looked very solid. Sindh would need these two batters at close of play today. Want them to come out fresh tomorrow morning and start again. In the air, calling quickly are the two experienced batters. A direct hit. Waqas Maqsood, who just had an injury a while ago, taking that catch, scored a direct hit. But I think it was pretty well judged by the two experienced men. He started off a bit late, a direct hit, but well home. Asad Shafiq. Asad Shafiq's inning is one of authority, one of control, just like Abid Ali played for Central Punjab. Whenever he comes on strike, you will notice that all of a sudden it seems that the pitch is offering nothing. The bowlers are unable to extract anything. But that is most probably the class of the man. $129 for 4. Basit Ali manages a smile, and say former Pakistan skipper Sarfraz in the picture as well, sitting right next to Faraz. Sindh dugout, very calm and reassuring when these two batters are in the middle. I'm sure it will change if one of these fall. But yeah, talking about the way these two are batting, Abid Ali and Asad Shafiq, they look like batting on a completely different surface to everyone else. That is their class. Judge the length very well. They know where their off stump is, and above all, their game stands on a very, very solid defensive technique to go with plenty of strokes around the wicket. Very well-rounded game for such a testing pitch, and they have exhibited highest quality on this difficult surface. Pushing for ones where available. Mid-off is hanging back. Easy run on that occasion. So it is such a delight to see that what Asad Shafiq just did, using his feet just to place it to the left of that fielder and take a single. Something which is rare nowadays. Usually when batsmen go down the track, they go for a big hit.
That is the old-fashioned way of countering any sort of spin. Getting to the pitch of the ball, placing it in the gap and going to the other end. There you go. Fawad Alam telling Asad Shafiq, anything you could do, I can do better. Putting Rizwan under pressure and inducing that mistake in the field. The first one in the field from Central Punjab that I can recall of. That did cost him the extra run, which will take the lead to 3 figures. Sindh lead by 100 now. Slightly shorter. Fawad will be disappointed he couldn't find the gap. Again, this game is in that stage where more than the runs, it's the time that counts. Got to spend time. There is a lot of time left in this match. 38 gone, 132 for 4. That's not Harry Potter. That's Abrar Ahmed. Slightly hidden the view by one of the Sindh substitute. You can see in conversation with Mir Hamza in the foreground of your picture. His spell was really crucial today. I thought he bowled magnificently. He got the ball to turn both ways. Complemented the paces really good, and when the times were tough, he came up with the breakthroughs, and that initiated the collapse. And I have a very strong feeling, Shah Faisal, that he will have the last say in this match as well. For Sindh manage anything above 250, it will not be easy with the ball in Abrar's hand on a third or a later in the day, third day and the fourth day pitch. Definitely 250 will put Sindh in the driver's seat. Even 200, I think, will be very, very tight contest, especially the resources Sindh have. Their bowling is very experienced, all three of them seamers. And then add Abrar to the equation. Abrar didn't even get a look in for the first 75 minutes of this morning. That is the strength and depth of Sindh's bowling resources. So yeah, the batter's job, put the runs on the board and leave it to the bowlers. Central Punjab looking for some inspiration. The Pakistan Test all-rounder Fahim Ashraf has been given the responsibility to break the resolve of these two pillars of Sindh batting lineup. Becomes very difficult for bowlers. Frustrating as well when so much experience is what they are countering on the wicket. Soft hands, good calling on that occasion. Excellent running between the wickets. Asad Shafiq was playing it off the back foot. He had a late start, but he judged it perfectly. That one played right under his eyes and immediately called for one. Direct hit, but safely home. Asad Shafiq. A couple of past masters of doing that I can think of. Playing the ball right onto their toes and running quick singles. Rahul Dravid for once. Mark Waugh. Tall, elegant players.
very compact, would allow the ball to come on, drop it onto their feet and call for runs. Very good way to rotate the strike. And it works even better if you got a right hand, left hand combination. Yes, that is the left hand, right hand combination. It is, I can tell you, such a big nuisance for the fielding side. It's double the work, and a full session of this sort of a combination can be really tiring for the fielding side. And also the bowlers have to keep adjusting their line and length if that rotation of strike is constantly occurring. Yeah, it's never good, and that's why they always, there's an argument for having a left-hander in the middle order, just to give this headache to the fielding side. Partnership so far, only 28 runs. But like Amar was saying, time is also important. The more time these two spend in the middle, the easier it will become for them. 133 for 4. Shadows lengthening. The sun is setting. And the breeze is very refreshing. Sea breeze, that's the beauty of Karachi in the late afternoons and early evenings. Really does make a change to the weather. And in fact, we can feel a slight chill. I mean, it's not winter yet, but there are early signs of it, and you can feel it more and more towards the evening or early mornings. Muhammad Ali has changed ends and has been given another chance. Cracking cut shot with an offer. Asad Shafiq, his eyes lit up, pounced on it in a flash. Magnificent stroke. First ball, erred with his line and punished in style. No chance for any fielder. Beautiful shot, 4 runs. Delight to watch Asad Shafiq. Slight discrepancy. Now you can see he's on to 48. Just too shy of another classical 50. You've already seen him score an 80 odd here a couple of weeks ago. That was a completely different knock to this, equally as important. Working it into the gaps as well, and that rotational strike takes him to 49. We'll have to sort this out. 53 it shows now. Slight discrepancy with the scorecard. We'll fix that for you in a second. Regardless of what he's on at, it has been a wonderful knock. It's the innings he played here in the previous game, as you mentioned, was a very important innings as well. And that confirmation, Asad Shafiq has reached his 50. 80 balls, 9 fours. Exceptional innings once again.
call is Asad Shafiq's. It went behind square. Fawad Alam annoyed, and Asad Shafiq didn't run for that. The previous innings you were mentioning from Asad Shafiq here was different in style. Very, very stubborn at that occasion. Hung in there, and that eventually ended up in a winning cause. That was against Southern Punjab. That occasion as well, Sindh's backs were against the wall, and of course the most experienced batters, Khurram Manzoor and Asad Shafiq, came to the rescue, and again some rescue work done. Edge then taken. That's the big scalp. Muhammad Ali has run in hard. He's given it his all, and he got the reward. He troubled Fawad Alam in the previous spell, but this time he picks him up with the delivery outside the off stump and the edge carrying to the slip. A massive moment in the game. Well, that delivery, pitching, just outside, leaving him. Good catch by Rizwan. Low catch at second slip. Nothing wrong Fawad Alam did there really. Maybe just played a tad away from that off stump, but it's gone for 13 of 41 deliveries, 138 for 5, Sindh. Muhammad Hassan is the next man in. 106 runs is the lead. Half the side back in the hut. 4,280 runs for Hassan. 29.51 the average. The best of 251. 700s, 1850s. Shows that this man does have the capabilities with the bat. How he would deliver under immense pressure is another thing. On the other hand, Muhammad Ali has worked really hard. Bowled well, bowled consistently, and has got the reward. Prize scalp of Fawad Alam. Always running in hard, hitting the right areas. Very enthusiastic, and those celebrations, very animated, and why not? It does tell you how important that wicket was. 3 slips in a gully, charging in, big fast bowler, play and a miss. Hassan didn't even cover his off stump. Very nervous prod. This is Hassan, first delivery look, not sure with his feet, not with his hands. Well, a difficult first ball really, but Hassan will have to step it tight. Look at that one, the dismissal. Ooh, left him very late, and a good catch by Rizwan. Asad Shafiq's role is even more important now. He's lost Fawad Alam. Ground fielding has been superb from Saif Badr. Even catching has been very nice from Central Punjab. It has been the contest of highest order by both these sides. And after 2 days, can you call it?
Amber, which way is it going? It's very, very difficult call, that one. 107 runs lead. Definitely not enough, but Sindh are not done yet. With Asa Shafiq on the wicket. They have a lot to offer still. One must remember, Suhail Khan is still to come. The top scorer of the first innings. Played exceptionally well. You're right, but one feels the door is open for Central Punjab. Hassan will play like that. He's a very positive player, typical nuggety wicketkeeper. It's very hard to keep him quiet. He'll be better served if it takes some time in the beginning. Maybe about 10-11 minutes before the close of play. His first job should be survival tonight. Just easy length to manage. Hassan put it away. He didn't quite time it. Good chase, good teamwork there from Central Punjab. They're not allowing any extra inch to their opponents. They've really worked hard in the field. Excellent effort once again. Fahim Ashraf, tad shot once again and bounced on it, Hassan. Making full use of that short wide delivery. Pushing at it, hard hands. This was his downfall in the first innings as well. He really pushes at it with hard hands. Never short of a chat or two. Yeah, keeper to keeper. Both these keepers are not only fidgety when they are batting, when they are keeping, but both of them are really give everyone a few words. Never known a keeper who's not talkative or not chirpy enough. It seems to be a built-in ingredient whilst keeping, and when they're batting, they keep everyone on their toes as well. Some great wicket keepers come to mind. Moin Khan, Sarfraz, who we've seen here today training all day. Probably the quietest one was Rashid Latif. But what an artist he was with the gloves. Adnan Akmal is also, you cannot keep him quiet. Very annoying must have been for the batters. 41 gone, 141 for 5. Eight minutes past the schedule close already. Such Shafiq hanging in there for his side. 2 slips, 2 gullies. Ten more overs left in scheduled play after this. I know it's not going to be possible. If we're lucky, probably we'll get about 8-9 minutes of play. That has been the pattern. That's Ali Shan for you. Playing the drums, the beat, I can understand from here. Getting everyone on their feet. Well, these
last moments of the game, last moments of the day. At times the fielders, not only the batters but the fielders as well, they become a bit complacent, and that is when the keepers come in, wake everyone up and remind them that they've got to be on their toes till the last delivery is bowled. You better be on a game like this. It's so tight. One important piece of fielding at this stage of the day can really turn the whole contest on his head, especially if it is Asad Shafiq. I think looks like it. He's set the stall already and he's looking at tomorrow morning. That's what his target is. And by start of play, if he's there, Sindh would really look to build on that lead. If Central Punjab managed to get Asad Shafiq tonight or any time early next morning, it will be very difficult for Sindh to save this match from there on. And I like I always do, Ahmer, I'll put you on the spot. In whose camp rather you be tonight? Where would you sleep easy? Sindh or Central Punjab? Well, I would say that Central Punjab are in the driving seat with those 5 wickets and just Asad Shafiq in the way. Anything less than 200 would not be enough, I think, but you never know with Abrar and the deteriorating pitch. Anything can happen. Very, very difficult to call this game at this stage. Just 109 runs ahead with 5 down. Calls quickly. Adds another valuable run to the total, and by doing that, you'll keep the strike as well. As we'll see, the umpires will come together at the end of this over. 142 for 5. The meter is out. I think for now they have decided to continue as the ball has been thrown to the spinner. Central Punjab can really play this smartly. They bowl Ahmed Safi Abdullah from that end, and then Saad himself start bowling from the other end. Probably they will prolong that period of agony for these two batters. Falling quickly as soon as he hit the stroke. Asad Shafiq made it comfortably. I don't think Central Punjab would mind that. Hassan on strike early in his innings. He's known to push things along quickly or have a rush of blood. This is good contest here between Safi and Hassan. Slip, short leg and a short cover catching. Umpire was having a word with the skipper, and he has been informed that if the pacer continues from the other end, it would be difficult for them to continue. That sweep shot is never too far away when Hassan is at the crease. He picked this one up very, very quickly. Handy runs. And this is how Hassan is going to play. Yeah, picked up very well. Vacant area, that square leg. Good bowling this one. Good comeback.
is it just me, Shah Faisal, or why are all the wicket keepers good sweepers? And why do they play that shot so well? All of them. This is good from Ahmed Safi Abdullah, slowing it up in the air. You know, that's generally the case. If you look around, almost all the keepers you think of are very good sweepers. The reason? Very strong when it comes to their lower body strength, because they do a lot of sit-ups when they do keep with low center of gravity. Really get down on that one knee very quickly compared to all the others. That could be one of the reasons. Other one could be that all of them are quite cheeky. Very cheeky shot, that sweep, especially when played from within the wickets. Again, the light meters are out. Muhammad Ali is ready to bowl his new over, but the umpires are having a close look. And that is the close of play, with Ali getting ready to bowl. Probably that was the obvious call, because we have got up to 16 minutes past 5, which is the schedule for almost every day. And this has been another entertaining day of first-class cricket here at the State Bank Sports Complex. This has been magnificent viewing. You look at the sessions. It was action-packed, all the 3 sessions. And after 2 days of play, it's very hard to separate these two very, very good sides who are well in contention for the final. If you look at the session, sun setting in the background. Good over rates altogether, good run rates as well. And look at the wickets. Plenty. 3 in the first session, 6 in the second session, and 2 in the last session, making it a total of 11 wickets on that day too. Amber, another very, very good day's cricket. What's your final thoughts on today's play? Well, definitely both the teams are in it still. I would say Central Punjab are in a slightly better position with they have got 5 very important wickets and not a very big lead, but Asad Shafiq is still on the wicket, and let's see what he has in store. Here's the batting card so far. Khurram Manzoor 23, 32 by Umair bin Yusuf, and nothing much to talk about except for that Asad Shafiq half century, which has been brilliant. He's still on the wicket, and I would suggest that it is Sindh's last hope. He has to go on and play a big innings. 147 for 5, Sindh. Okay, this is Ehsan Ali. Look at the chaos, the misunderstanding. Ball watching by Khurram Manzoor. Ehsan paying the price. Khurram Manzoor himself succumbing to a loose stroke, but an excellent catch from Ali Shan. Another good one from Imran Dogar, as Saad Khan failed to ride the bounce and keep that fend in control. Waqas Maqsood neatly pouched Umair bin Yusuf, who looked really good. And that was the final act when Fawad Alam, the big wicket, Rizwan Hussain with once again fantastic grab in the slips. The bowling card, wickets have been shared around. Waqas Maqsood the only one without a wicket. Fahim Ashraf, Muhammad Ali, Muhammad Saad and Ahmed Safi Abdullah getting the wicket, with Ehsan Ali being run out. 115 runs lead for Sindh at the end of day 2.
This contest is on a knife edge and you just cannot take your eyes off it. Here's the match summary so far. 155 for 9 declared Sindh in the first innings. Replied by Central Punjab with 187 for 9. They also declared the innings. Abid Ali 98, brilliant knock, and Sindh in their second outing are 147 for 5 with Asad Shafiq still on the wicket with 56, and Muhammad Ali has taken a wicket. Sindh lead by 115 runs. What a day of first-class cricket we've had today here, and I'm sure you enjoyed our broadcast. We look forward to your company tomorrow for another exciting day's cricket. Until then, it's goodbye from State Bank Sports Complex in Karachi.